Assalamu alaikum and welcome to DHS Sports Club Moin Khan Academy, where it's a brand new day here in UBL Amin Karachi Table Premier League Season 3. The first match we have lined up is to be played between Malir Malangs and Clifton Populars. We are all set for the toss. I have both the captains here with me. Leading Malir Malangs is the captain Dawood Pathan. Malir Malangs is unbeaten. They played 5 and won all of them. Along with the captain for Clifton Populars is Asad Shah. And the match referee for today's match, Naeem Ahmed. Who's going to flip it? It's Dawood Pathan. Here it goes. KTPL. KTPL is the call. It is KTPL. KTPL it is. Asad Shah has won the toss. Asad, क्या करने का फैसला किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम फर्स्ट बॉलिंग करेंगे. बॉलिंग करेंगे. थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज चेंज करते आए हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन करते आए हैं. आज कोई तब्दीली की है आपने टीम में? जी बिल्कुल, आज टीम में 2 चेंजिंग की है. हनीफ अफरीदी और मंसूर नहीं खेले, उनकी जगह अरबाज और इमरान मेहरू एक बॉलर ऐड किया है. तो आज चेस पे जा रहे हैं, कोशिश करेंगे आज अच्छा खेलें इंशाल्लाह. राइट, असद शाह, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच. थैंक यू. दाऊद पठान से अभी टॉस से पहले भी हमारी बात हो रही थी. दाऊद पठान, सारे मैचेस आप जीतते आ रहे हैं. बड़े बूढ़े कहते हैं कि कोई एक आध मैच हार भी जाना चाहिए ताकि टेम्पो में ज़रा और तेज़ी आ जाए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारा छठा मैच है और इसको भी विन करें. हाँ बिल्कुल. दाऊद पठान, अब बड़ा ज़बरदस्त आपका बैलेंस बना हुआ है. हर लड़का अपना रोल प्ले कर रहा है. क्या आपके बैटर्स, क्या आपके बॉलर्स. फील्ड में भी पिछले मैच में काफ़ी अच्छा आपने हमें एक्शन दिखाया था. इसी तरह परफॉर्म करने वाले हैं. टीम मैनेजमेंट आपका साथ दे रही है, सब कुछ है माशाल्लाह. टीम मैनेजमेंट भी हमारे साथ है, बिल्कुल जेल हुई हुई है बिल्कुल, और प्लेयर भी एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह कोशिश करें आज भी ये मैच जीत कर इनको एक और गिफ्ट दें. राइट दाऊद पठान, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच. थैंक यू. All right, ladies and gentlemen, you heard it here on Geo Super. The word from the center is Clifton Populars have won the toss and decided to bowl first. We'll take a break here and we'll come back with live action.
तो दिखा दे अपना हुनर कुछ बांध कमर कोई ना हो डर शहर बॉल का जोश और जुनून जो होगा वतन में अब घर घर हर कदम पुरजोर हो तेरे नाम का ही शोर हो जादू अपना जगा कर सबको अपना बना कर दिल जीत ले चांद सीने पर सजा और सितारा दिल से लगा गेम तू अपना उठा जीत का नारा लगा हर कदम पुरजोर हो तेरे नाम का ही शोर हो जादू अपना जगा कर सबको अपना बना कर दिल जीत ले ललकार से रफ्तार से हर वार से यलगार से ललकार से रफ्तार से हर वार से यलगार से दिल जीत ले 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 ललकार से दिल जीत ले रफ्तार से दिल जीत ले हर बार से दिल जीत ले Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the DHA Sports Club Moin Khan Academy where the KTPL Season 3 is taking place and the latest match is between Clifton Popular versus Malir Malangs. These are the two sides. They are locking their horns for tonight's first game and both sides are doing a good job. There you see the two gentlemen going to officiate this match. Clifton Popular won the toss and they have decided to field first, not quite sure why. And Malir Malangs going to bat. Shahid Aslam and the Jawad Ali, the field umpires. And of course we have a gentleman at TV as well. And then of course we have match referee as well. Beautiful settings, everything is in order. And here comes the fielding side of Clifton Popular. They are taking the field. Atmosphere is absolutely lightning. Weather is ideal for the cricket and it's a very, very pleasant evening here at DHA Sports Club Moin Khan Academy. And I've got ever energetic FS Malik with me. FS, good evening. And there you see the two batters. They are making their way out in the center as well. And what do you make of the toss? Good evening, Rana, and good evening to all of the viewers wherever you are across the globe. Well, the toss, it's been an interesting decision in my opinion, Rana, because I'm always have a look at the sides in Clifton Populars. Asad Shah, the captain, Fahad Alam, Tahir Pindi, Umar Bajwa, Arfan Rana, Haq Nawaz, Karman Lefty, Daniel Shirazi, Farhad Abdali, Arbaz, Imran Mahru. And Malir Malangs consisted of DK, the captain, obviously, Mimran, Kaleem, Hamad Khan, Ubaidur Rahman, Ali Chota, Aziz Ahmed Khandro, Fazal Afridi, Majid Goli, MG, Shaji, and Misam. Well, it's been an amazing decision winning the toss and opting to bowl first. I was telling you, Rana, that I'm always a believer in runs on the board. You got to put some runs on the board and then look to defend. And obviously, when you are bowling first, it means that you have to play in the fourth innings, which is not going to be that easy.
And especially with you've got the two openers in likes of Fahad Mian Channu and Asad Shah. They are in a terrific form. Dawood Khan, the captain, going to take up the first ball. He's a very, very fine striker of the ball. And he has played a few good cameos as well in this tournament. He's a very frisky starter. He always likes to get off a flyer. Mimran, the other one, who's doing absolutely marvelous job for his team and scoring runs consistently, and he has hit heaps of sixes so far in this event. A lot of sixes, a lot of boundaries we have witnessed already in the last 10 nights. Farhad Abdali is going to be the bowler to take the attack. He's the left-arm quickie. First ball is about to be commenced, and it's Farhad Abdali who is starting the proceedings, and Dawood Khan is taking strike. Here we go. Outside that off stump, it pitched outside the off stump, then moved further away, and he started off with a wide. Yeah, loosener to start off his spell, Farhad Abdali. We haven't seen best of him as yet, Rana, because obviously we know that he's got some reputation. He plays all around the country, and he's been playing tape ball for the last 5 or 7 years. He's been one of the main bowlers in Pakistan. And straight away, Dawood Khan belted that one, but straight to the man at mid-on inside the ring, who did the fielding. We all know Dawood Khan likes to get after the bowling right from the word go. That's what he tried. So it will be very important for the Clifton Popular's perspective that he gets back into his form, is Farhad Abdali, the bowler. He has hooked it, but Filler is coming under the ball. It's going to be caught. Oh, he put it down. That's not on. That's not on. Not only you have dropped a catch, but let your entire side down as well. You're dropping a catch this early in the innings while your captain won the toss and fielded first. That's not on. I tell you what, that won't please Farhad Abdali, who's been already striving for the wickets under his belt, and that should have been taken. Oh, mine. Look at the disappointment what bowler had. And he was absolutely right as well. He almost trapped the batsman. And that would have been a big scalp for them had that catch been taken. And he hooked again. But this time around, it's going to go. It's going to go towards the fine leg boundary. And now it has gone for 6. If you drop catches, you will get whacked as well. Although Mimran is the batsman, not the DK. But they dropped the catch of Dawood Khan. Well, it was more of a toppage than the middle of the bat, but still the pace of Farhad Abdali carried the ball all the way over fine leg for the maximum. He did try to hook that one and got the sort of a top edge. You're right. And in tape ball, mostly it happens when you hook the tape ball. Very, very difficult to execute the perfect hook shot in a tape ball. He has got that one away down towards the third man, almost in the deeper gully. It has been stopped. Single to Mimran. Yeah, even if they are not middling the ball, they're making sure that they keep on rotating the strikes and keep that scoreboard ticking over from the woods go, which is always very important. Clifton Populars winning the toss and opting to bowl first. Abdali can consider himself a bit unlucky. He would have picked up the wicket of Dawood Khan.
That is not on. That is not on. He's making the cardinal sin again. He's making the cardinal mistake again. Pitching it outside the off stump. Angle was taking that one further away. That's not on. Obviously trying to stay away from the reach of DK. We all know what DK can do with the bat. So that's why as a bowler you want to stay away from his reach. Oh, he has pelted that one away. All the fielder was there at the corner, but he couldn't quite do anything about that one, and that has gone for 6. Tell you what, that wasn't that far away from that fielder, but it was a full toss. But he's timed it well enough, did DK, to get it one bounce over the boundary for 4. Yes, I think it dropped inside. The umpire called it a 6. I think now he's going for the consultation, and he will have to reverse his decision to me. Square leg umpire consultated with him. But umpire didn't change his decision. So it will go down as a 6. Now it's called 4. And this one is turned into the leg side, but straight to the fieldsman. 16 for none, and that is the end of the first over. A mixed bag. A wicket could have been taken, a drop catch, a 6 and a 4. And there you are. You can watch us from different ways, wherever you are across the globe, through Africa XP, MBC, Willow TV, Sub-Sahara, Sahara, Geo, and obviously it's Geo Super's production, which is just great on the eyes. Treat to watch. These matches are being showed throughout the world. This is excellent for these cricketers. The tape ball cricketers, they are being watched across the globe. There is a sort of honor. And this league has Javed Miyandad as president. The legendary cricketer of Pakistan scored more than 8,000 runs. 8,832 is the exact figure. Irfan is the bowler in the meanwhile. Outside that off stump, didn't make any contact. Yeah, you're right, Rana. He's made 8,832 runs in Test match cricket in 124 Test matches with an average of 52.53, if I'm not wrong. And his average never came down, never came under 50 throughout his first class in Test career. This one is driven away. That's a magnificent shot. Save your legs. You don't need to run for that. Magnificent 4. Well, that was smeared away. Have a look at that again. He has really given it a go. Along the carpet, like a rocket to the boundary in no time. How quickly that ball reached the fence. That one timed perfectly and placed precisely. This one is chipped it over mid-wicket, but there is a man back at the corner. Well, the ball before that stroked through the extra cover region, just suggesting me, Rana, that it's not only about sixes, this type ball. If you can go along the carpet with all the ability you have, you can still provide a lot of entertainment to the spectators. Yeah, you can play some Babar Azam's cover drive. You can play some Ian Bell's cover drives. Oh, but he had a real go at that one. He was trying to play a stroke like Maxwell does play. Well, we've seen a couple of KPs as well when the batters had to reach and especially taking the ball from way outside the off stump and hoiking it over mid-wicket in front of square. We have seen everything, everything in it. But we don't see any Jeffrey Bygard here in tape ball.
Maybe somewhere in the comb box. He scored 63 runs in an entire day in a test match in 3 sessions. Not out. But what a cricketer he was. Scored more than hundreds in first-class cricket. Well, if you remember, Rana, Basil Dolliver used to say that the recipe for a test match 100 is a 3 sessions 100. First session is the bowler's session. The second session is that when you come in grips with them. And in the third session, when they are tied, you just put them to the sword. But then what about Wave Richards, who scored 156 ball? What about McCallum, who scored 154 ball? And even our Misbah ul Haq, smashing 156 ball. This one is in the air, going, and has it gone all the way? Yes, it has. Well, it went all the way almost to that cinema which is next to the ground, and you were talking about the Giants. Here is a gigantic hit. Justifying those names with the big heave is a DK. Absolutely enormous hit that one was. And then he tapped his bat in a sort of anger. And yeah, I have done it. 2 gone, 27 for none. This is the 11th night of the KTPL Season 3. This event going all guns blazing. We have seen some entertaining batting. We have seen some entertaining bowling. And at times we have seen magnificent catches as well. Few players are damn good. Fahad Mianchanu is the leading run getter so far individually. He has 374 against his name so far in this tournament. He is representing the Clifton Popular. Imran has been brought onto the bowling attack. Yeah, even in the opposition, Rana, somebody like DK and Mimran are in the top 5 run getters in this tournament. So it's going to be a very good contest between both of these sides. Absolutely spot on. And actually Malir Malangs haven't lost any game. Imran Mehru is the bowler, taking a very short run up to the wicket. And he's going to bowl to Mimran, who's not out at 12. Wicketkeeper mobilized his troops who are patrolling it in the countrysides. Now a fielding side can have 4 fielders outside the 30 yards ring. Down the leg side she goes. Wide cold, couple of important runs. I wonder if we are having a spinner in for this tournament, first time ever. Oh, and he bowled well. He bowled well. He kept it just a bit outside the off stump, but he's not bowling. His pace is a bit gentle, medium. Tell you what, how does he look like? Give me a little bit of glimpses of Ajinta Mendes. Correct me here. Good delivery. Very good delivery. Again, bamboozled him. Batsman going down on his knee to have a whack towards the mid-wicket. Didn't make the contact. That one pitched and then moved away. So he bowled a leg break, one should say. Yeah, Mendes was a great off-spinners. One of the great off-spinners Sri Lanka have ever produced. He did wonders in 2008 Asia Cup in Pakistan. Oh, another good delivery. That one Kukun as well. Fastened through the pitch. And wicketkeeper again doing the rest. Good bowling. He's definitely letting the ball do the talking, which is very good to see. Spin is on here, and it's on with some magic. That's good to see. Well, talking about Ajinta Mendes, tell you what, he was not read as off-spinner initially in his career. Had a very different sort of action. So has this guy. And he's been very effective. And so was Mendes.
taking 6 or 7 wickets in that final of the Asia Cup 2008 and won Sri Lanka that Asia Cup. Down he comes, missed it altogether. Imran is almost toying with Mimran. That's a terrific bowling. Good to see that. I wonder if there is a little bit of battle going on. Shahid Afridi trying to take on Shane Warne. And so far, Imran, or the Shane Warne as you called him, winning the battle. He did try to heave him, missed it, and it did come down the pitch, didn't make contact. Wicketkeeper is well up. This time, he goes downtown and goes magnificently well. That's a terrific shot. Here comes the reply from Imran. Well, he's powerfully built his Mimran, and he has really given it a whack. That's out of here. That sounded good, and maximum is the result. It will do a lot of good for him, the Mimran. Again, he bashes that away into the offside. Fielder covered a lot of territory, but it did well to cut this one off. Couple of runs to finish the over. 3 overs have been thinned down. It's 37 for none. And now it's time to have a change in the voices. Zishan and Farooq. Rana Shwak and Falak Sher. It's 37 for none. 3 overs had been bowled, and what an interesting over we just saw. Imran, the finger spinner. For the first time we have seen any finger spinner in this competition, UBL KTPL Season 3, and he was extremely impressive. Although he conceded 1-6, but overall he really kept the batsman quiet, especially Imran was really struggling. Yes, indeed, this was a very good over until the last 2 balls, but we were able to journey. We haven't seen finger spinner or any other spinner so far in this UBL KTPL Season 3, but that can be a very good option as well, especially when the batters are looking to slog everything down the leg side. It's a pickup shot. It's up in the air. There is no fielder down there. It's going to run away for 4. Not a good start this from Irfan, once again straying into the pads and paying the price. Well, due to the quiet over from Imran, the previous one, now some pressure is on DK. He had to go after the bowlers. It wasn't a clean connection, but placement was really good. It was pretty much off the inside part of the bat, but he went for it. Wrist work comes into play as well. Into the 40s now, Malangs. Well, if we talk about the toss, it was Clifton Popular who won the toss and decided to bowl first. Irfan once again. This time it has been picked over mid-wicket. He has absolutely tonked that, DK. A 4 followed by a maximum. Well, he nailed it. Absolutely nailed it. Just a fraction short length ball, and it was in his range. DK was deep in the crease and the good swing of the bat. He is a strong cricketer, and it's evidence how well he can hit the ball. That is sailed over. Yeah, since he was standing very much deep inside the crease, that's why he made it into a good length delivery and hit it comfortably over mid-wicket. If he would have been standing at the crease, it would have been an over-pitch delivery and would have found it difficult to hit that ball in that region. It was Clifton Popular who won the toss and decided to bowl first tonight against Malir Malangs. What do you reckon of that decision, Farooq? Low full toss. Couldn't time the ball well enough. Will still get a single towards short third. Low full toss, much better length from Irfan. The low full toss is a kind of delivery that can stop the flow of runs somehow, but always the margin of error is so minimum against TK. Now Imran, who consumed quite a few dot balls the previous over, despite the good start, you can see his strike rate is still on the good side, but he has to
compensate for what he did in the previous over. He certainly will be feeling far more comfortable against a faster bowler. A full toss once again missed out. And the pressure that was building on him in the previous over has now shown in that. It was there to be hit. It was a full toss, a juicy full toss. He could have easily hit that on the leg side. Instead, he missed that. That was a gift, absolutely gift from Imran. He lacks that length, but I think a little bit surprised with extra height of the full toss. That was just below the waist, and I think Irfan got away with that. It was quite close to be called a no ball. Now DK is back on a strike. In the slot once again, that has been nailed. How lucky he is, the bowler, that there was a fielder position perfectly at deep mid wicket. A little left or to his right, and that would have run away for 4. Such a good shot, but straight to the fielder. Just one conceded. It was struck so hard. Ball got to the fielder like in a tracer bullet. There's 2 members of the club. They have stopped and watching this contest, and now they have resumed their running. Or maybe they're changing their position. And they're watching themselves on the giant screen. Slower delivery. Nailed that over long off and just over his head. Well, tell you what, his heart must have been in his mouth, because that was very close to that fielder at long off. Even the bowler realizes that. He struck really hard and flat, and smashed it just high enough. Valiant effort, but he wasn't able to stop it. 6 to finish the over. Look at that. Good swing of the bat, stand and deliver stuff here. The fielder had to move to his right, but certainly he wasn't tall enough. Good strike though. Full marks to Mimran. Breathing a sigh of relief, Mimran there, you see, he was so watchful when he tonked that, but still got a desired result to his name. It's 56 for none after 4. .56 for none. It's a decent opening partnership, but the problem is the current run rate is not at the higher side as far as the standard of these 2 batsmen is concerned. Mainly the finger spinner Imran made the difference, and he hasn't been given a ball. I think he will be used for the 6th over. It will be a real surprise if he doesn't get the 2nd over. Just get the feeling the captain realizes that they need to pick up a wicket here. Imran bowled well, got hit away for just 10 runs in that previous over, but you could clearly see Imran was struggling against him, because he was looking to slog everything down the leg side, and Imran has this carom ball up his sleeve, which was turning away from the right-hander. As a finger spinner, if you can find the length perfectly, it becomes difficult for the batters to get underneath the pitch of the ball. That's why he struggled for the first 4 balls, Imran, and as soon as he saw the ball pitched up, he hit them away for runs. Good ball, might be given as a wide. But once again, you could see the batter was deep inside the crease, and he had no idea where the ball is going to be turning. It turned a long way, Dishan. I think the bowler was just a touch unlucky. He exposed his leg stump. I think the ball turned much more than he thought. And the wicketkeeper is also sharing a piece of advice, just to maybe pitch way outside the off stump, because he's getting a lot of turn. As a spinner, they always have a weapon of bowling a faster one, which the batter is not expecting. Just like that. Still somehow DK has managed to hit it behind square. They'll be looking to come back for the couple. The throw is not a good one, and DK is going to pick up 2. Just a quicker one. Flatter trajectory as a quicker one from Imran, and DK somehow put some bat on that. The placement was decent, and that is why he came back for 2, and throw wasn't good enough. So he has to mix his deliveries here. Imran, they should not be predictable here, because the DK is the kind of player, once he gets the ball in his slot, he can hit you a long way. Yeah, he was clearly dominating Mimran in the previous over. It's going to be really interesting to see how DK operates. Pitched up, swept away on the leg side, and see you later, he says to the ball. This might not work against someone like DK, who had so much variety in his shots. Genuine sweep shot, genuine slog sweep. We've normally seen the professional cricket and hardball cricket, but for the first time I saw in tape ball cricket, he bent his knees, and look at that, beautifully struck right over the deep square leg fielder. Lovely shot and lovely sight for the batsman himself, and the cameraman, I think he did well to save himself.
Just get the feeling he picked the ball from the arm of the bowler. It was a wrong gun which he played with the turn. DK. Better start to the over this. 10 runs already. 4 balls still to go. One thing is for sure, it's going to be a high runs encounter. It's short. Once again, that has been nailed over deep mid-wicket. This definitely not working against DK. So Campbell hasn't paid off in the second over for Imran. He dropped the ball just short, and DK is far more effective. And he picked up the length really well and absolutely hammered it. So it wasn't an easy shot to play. Rock back off the back foot, and look at that. Plenty of elevation, plenty of length he got. Beautiful batting. Even if you look at DK, he's strongly built up, so even a miss hit sometimes can carry all the way for 6. So far, he has been middling almost everything in this over. Carom ball. A horizontal bat stroke which clearly did not work in the favour of DK. The bowler was appealing for caught behind, I believe. Just a soft appeal. He just tracked the length a little bit more, and so blind heave from DK. Nobody was interested in appeal. So DK may try towards offside something, but he's a strong onside player. Normally he plays against a faster bowler, so he may heave again towards the onside. A rare dot ball in the innings. Once again heaved away on the leg side. This time it has got the height and the distance as well. Third maximum in the over to DK. And with that he moves into the 40s. Once again, battle won by DK, pitched up on this occasion. The previous one was quite better, and stayed in the crease, waited for the ball, and look at that, great swing of the bat. He was anticipating something like that in the hitting zone, and Imran once again got the dose. 3 sixes he has conceded. DK on fire. Another one. This time it has gone miles up in the air. There is a fielder who is trying to get underneath that. And he has put it down. Or has he? In fact, that has been taken in the second attempt. It's Farman, I think, who was diving forwards while the ball ricocheted of one of the fielders. And he looks pretty confident. Yes, he's celebrating already. It's hard to pick how they caught it. 4 men were converging. Maybe the one of the fielders dropped it initially. So first miss hit, went for the 4-6 and got plenty of height. Leading edge. It was really a tough one. Ball got disappeared in the dark skies. And that is how he missed it. Huck and Farhad Abdali, I think, who completed the catch. So good tag team work. Good awareness. Really good cricket. So DK is gone. That's the breaking news. The captain walks back after scoring a 17 ball 43. It's 78 for 1. Tell you what, Farooq, it was a really good catch. And Farhad Abdali making full use of his height and acrobatic stuff while diving forward to complete that catch, because we have seen it in the past as well. Even when there are 2 or 3 fielders nearby, they could not complete the catch. Kaleem, meanwhile, is the new batter in at number 3. And that is where it is important. Communication it has to be spot on. If the ball pops out of the hand from the one fielder, then other fielder should be absolutely ready to grab it. So if the both fielders are colliding and coming towards each other, then none of them in the end are able to complete the catch. So the second fielder was a little bit away, and he had time, he had the space to dive to his right. Now Tahir Pindi is a batting all-rounder and normally bats up the order and bowls 1 or 2 overs. So he's a gentle medium. Yeah, he's bowling for the first time in this inning, so he must be feeling very fresh. The idea would be to not concede more than 15 runs. If they can manage to do that, if they can manage to just concede 93 in the first 6 innings of Malir Malangs, they will still believe that the job has been done. Because talking about Clifton Popular, they lost their previous game against Gulshan Gohar when they lost it pretty comprehensively. I mean, Gulshan Gohar managed to chase down the target of 90 or by 10 wickets. So that is the reason why they might have decided to bowl first, because they know they've got a very strong batting lineup. Even if they are given a target of somewhere between 110, 120, they can chase that down, especially with the form
Fahad Mia Chunu and their captain Asad Shah is in. That's quite right. And Tahir Pindi has got a ball. You rightly mentioned anything around 15 or below 15. He will be very pleased. Dawood Khan, the skipper, played beautifully for his side. Yeah, he has been a really influential captain for Malir Malangs, not only with the bat but with the field as well. He has taken some outstanding catches throughout the tournament. Starts off with a good delivery. It was pitched up, it was wide outside the off stump, and once again Mimran, without using his feet much, was just looking to pick up on the leg side. He could have struck it straight down the ground. It was pretty much on the slot, but he tried to heave it, played across the line. He also cleared his front leg a little bit, and I think that was the opportunity he wasted. So Tahir Pindi starts with the dot ball here. Well, a much better option to a delivery that is bowled that wide outside the off stump is to get down on one knee and try to sweep that. But it's a tape ball, it's not that hard a ball, which is difficult to sweep. A low full toss, once again hitting it all across the turf. Will just get a run. In fact, there is a misfield. There is confusion between the two batters, but they will still stay content with that one run. Quite rightly, Kaleem refused Mimran. It was a risky second one. As Kaleem has got a fresh pair of legs, he should swing his bat for good effect, because not many balls are left, and Malir Malangs are likely to finish below 100. You can see Ali Chota warming up. He knows he'll have the responsibility to bowl two crucial over in the innings. As we see the members of DHA Sports Club Moin Khan Academy not only busy with their jogging but also enjoying this live action between Malir Malangs and Clifton Popular. Kaleem is on strike for his first ball. Outside edge and taken. That's an excellent catch by Omar Bajwa, the wicket keeper. Excellent stuff from Tahir as well. First ball duck for Kaleem outside the off stump. He went for the big shot. He really had to reach for that. Not the best of deliveries. He paid the price for playing across the line. Good catch. He jumped nicely, and at the end, no mistakes. So wicket and a dot ball. Kaleem goes for note. 2 for 79. Farooq, that wicket of DK in the last ball of the previous over has tilted the momentum in the favour of Clifton Populars now. Because the set batter has gone out, and they have now faced 2 dot deliveries and just 1 run of the over, and they have lost another one. Well, I think there is no concept of tape ball cricket to just tap the ball for 1 and retain the strike and come back to attack the next bowler, Ubaid Rahman, or the next man in. So Tahir Pindi would have been a far more easy option for DK. We just saw Mimran having a word with the new partner. Must have been asking to pick up a single and let me face the next 2 balls. He decided not to do that and ended up playing a dot ball. It is turning out to be a match-defining over. Tahir Pindi, as I told, he's a batting all-rounder. Sometimes he's used for 1 over. And look at that, the figures, 1 for 1. And 2 balls to go here. And Mimran was still away from a strike. Well, they need 2 boundaries at least. Malir Malangs. Table topper so far. Yet to remain. It's going to be a wide down the leg side. Yet to be beaten. They're going to collect a bye. So add 3 to the total. The fumble by wicketkeeper. I think Mimran can make them pay for this. It was a wide down the leg side, and wicketkeeper also made a mess of it. A couple of minutes ago, he picked up a very good catch, but on that occasion, he was a little bit rusty. Yeah, it becomes slightly difficult for the wicketkeeper since the bowler is coming around the wicket, and then he gets slightly blinded by the movement of the batter whenever the ball has been pitched down the leg side. He picked it up. That's what they were waiting for. Mimran to come back on strike and send the ball out of the park. Goodness me. Mimran is the kind of player who can make them pay for the fumble made by the keeper. What a good shot that is. Just more than a short-arm jab. Pure timing, pure class. Not a full swing of the bat. Very full. Not an easy land to play. Goodness me. He is highly skillful. Lovely shot. Yeah, it was a short-arm jab, just using his hands and directing the ball over mid-wicket. And that's why you need a set batter on strike to face deliveries like that, because a new batter would have definitely found it difficult
to middle the ball, especially when it's pitched slightly wider outside the off-stump and that fuller in length. Will it be a quiet end of the over from Tahir Pindi? Well, he decided to change his angle, but still is going to come up around the wicket. It's picked up again. He has hit that flat and long for yet another half a dozen. Goodness me, how good is that? That went even further, almost a similar length. And this time Imran played a little straighter. And what a shot that is. He struggled a little bit, Imran, but what a finish. Much required maximum. 2 extremely vital sixes for Malangs. Gentle pace, pitched up, beautifully struck. It's got strong wrist and certainly, once again, he gave the evidence how skillful is this. This guy is absolutely elated. Imran, big smile on his face. Excellent finish, although they couldn't get the 100, but it's still a decent score they put on the first innings. That was turning out to be a very good over from Tahir, but just look at the fact that new batter was in. He bowled a wide delivery. They got a run on a bye, allowed DK to come back. In fact, Imran to come back on strike, and he smashed those last 2 balls over mid-wicket for maximums, which is because of the reason why Malangs have now ended up with a very respectable total 94 on the board, considering the fact that they have got a very strong bowling lineup. Majid Kohli and Ali Chota will be firing in. That's how they started their innings. That was a drop catch, something you do not see from Clifton Popular, but after that, both DK and Mimran make them pay for it. Mimran, as we all know, is so strong with his arms, with his shoulders. They struggled slightly against the carom ball of Imran, but as soon as they got the measure of the pitch and the turn, they started belting him as well. DK specifically, he has been so strong. Imran as well, striking few blows out of the park. DK was very severe against the spinner as well. Imran was struggling up against him, but finally Imran managed to win the battle. A very good juggling catch by Farhad in the second attempt. A very good catch by Umar Bajwa as well behind the stumps to get rid of the new batter. But somehow Mimran was able to dispatch the last 2 balls of the innings for a maximum and helping his side to go past 90 in their first innings, which I think is a very good score. That's a batting card, healthy batting card. 43 for Dawood Khan of just 17. And Imran, the 39 of 17. He got a couple of 6 in the last 2 balls, whereas Kaleem and Ubaid could not disturb the scorers. If we talk about the bowling lineup, 4 bowlers were used. Farhad just bowling 1, a wicket apiece to Imran and Tahir. Irfan was slightly expensive, gave away 29 runs in his 2 overs. So Clifton Popular, when they will be coming out to bat in the second innings, will be trailing by 94 in the first innings. There you see Malir Malangs are already out in the hurdle. They are the table toppers, yet to be unbeaten so far in this tournament. They got a shaky game last time around against Karachi Knights, who were almost very close to a victory against Malir Malangs, but even then they couldn't manage to finish the game. There you see the points table. Malir Malangs clearly at the top of the points table, having won all the game previously. Gulshan Gohars are at second with 4 wins in their 6th game. DH the Bungs have played 5 games where they have won 3. North Nawabs have won 3 as well. Clifton Popular, surprisingly, are at the 6th position. In fact, the 5th position with 2 wins out of 4. Lyari Legends are also in a similar position, but they have a low net run rate. And Johor Jawans and Karachi Knights, well, they are still searching for their first victory of the tournament. The fielding side is already in the position, so are the 2 on-field umpires. .94 is the first innings. Well, they'll be very content with that. Any captain will take that score any night of the week, knowing the fact that you have got a very good bowling lineup, a bowler who has already taken 5 wickets, and Ali Chota as well, who has bowled very well so far in this tournament. And they are a very good fielding side as well, Malir Malangs, if we talk about. They have got the lowest probability of drop catches so far in this UBL Amin Karachi Table Premier League Season 3. And that is the reason why they are at the top of the points table. There we see the 2 openers of Clifton Popular making their way out there. The centre, a familiar opening pair, a most destructive opening pair, Fahad Miachunu and the captain Asad Shah. Well, they'll be looking to get at least a lead of 10 or 20 runs in the first innings against
Malir Malangs. Time for a change in the voices. It's going to be Danish Anis alongside Naseem Rajput. एक तरफ क्लिफ्टन पॉपुलर्स के लिए ओपनिंग जोड़ी क्रीज पर आ रही है, तो दूसरी जानिब कॉम बॉक्स में भी एक नई जोड़ी आ चुकी है। नसीम राजपूत अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नसीम, एक और तगड़ा मैच हो रहा है। मलीर मलंग्स की क्या कारकर्दगी रही है, शानदार कारकर्दगी रही है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। 5 मैचेस खेल चुके हैं, पांचों जीते हैं, ये छठा मैच है उनका। और दाऊद पठान से हमारी बात हो रही थी, वो इस बात का इजहार कर रहे थे कि वो इसी तरह अपनी विनिंग स्ट्रीक जारी रखना चाहते हैं। बिल्कुल, दाऊद पठान अपनी विनिंग स्ट्रीक को जारी रखना चाहते होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये टीम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे दानिश इस टीम से, जो जिस टीम से ये मैच खेल रहे हैं। असद शाह टीम कैप्टन 360 कहलाते हैं ये टेप बॉल क्रिकेट में। और ये एफएमसी फहद आलम, फहद मियां चुन्नू, क्लिफ्टन पॉपुलर के बैटर, और बड़े ही डेंजरस बैटर हैं। और ख़ास तौर पे दानिश, अगर हम एक चीज़ देखें, और ये एमजी माजिद गोली, ज़बरदस्त किस्म का टाकरा होगा यहाँ फहद मियां चुन्नू वर्सेस माजिद गोली। और दोनों बिल्कुल करीब करीब रहते हैं, और बचपन से दोनों ने साथ क्रिकेट खेली है। हसन रजा टीम मेंटोर, यंगेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेटर। बिल्कुल, ये भी हसीन इत्तेफाक है कि माजिद गोली और फहद मियां चुन्नू आमने सामने हैं, वरना अमूमन हमें एक ही स्क्वाड में, एक ही टीम में नज़र आते हैं। अब चूंकि इस टूर्नामेंट की ड्राफ्टिंग हुई है, तो वो प्लेयर्स जो अमूमन एक साथ हमें नज़र आते हैं, वो अलग अलग टीमों में अब एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं। फहद मियां चुन्नू का आप जिक्र कर रहे थे, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान टेप बॉल इंडस्ट्री का। जितना बड़ा नाम तैमूर मिर्ज़ा और खुरम चकवाल का है बैटर्स में, उतना ही बड़ा नाम फहद मियां चुन्नू का भी है। जब ये अपनी करने पर आ जाएं तो किसी और की एक नहीं चलने देते नसीम राजपूत। फिर सब इनके सामने चुन्नू दिखाई देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग करते हैं फहद मियां चुन्नू, और ये दोनों बैटर की एक अच्छी चीज़ के दोनों जानिब खेलते हैं। कैसा खेलते हैं देखते हैं। बहुत ही लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, दानिश ये वाइट बॉल। बिल्कुल, माजिद गोली पिछले 2 मैच से थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आए हैं, वरना अगर देखा जाए इनके पूरे करियर को तो शानदार पोटेंशियल है माजिद गोली में भी। बड़ी ज़बरदस्त पेस के साथ बॉल करते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर हैं अपनी टीम के लिए। कल आपको याद होगा नसीम कि हम फिंगर स्पिनर की बात कर रहे थे कि अभी तक हमें फिंगर स्पिनर नजर नहीं आया। एक अरसा हो गया कि हमने फिंगर स्पिनर नहीं देखा। आज बचपन की यादें ताज़ा हुई जब हमने इमरान को देखा, क्लिफ्टन पॉपुलर के लिए फिंगर स्पिनर। तंग किया उन्होंने इमरान को। दानिश, बिल्कुल, मैं जब नीचे बैठा था सेम यही बात मुझे याद आई थी जो हम डिस्कस कर रहे थे, और इमरान ने बहुत अच्छा ओवर किया था, सिर्फ एक छक्का खाया था पहले ओवर में। एक और वाइट बॉल, इतने रन्स नहीं है माजिद गोली के, ज़्यादा एक्स्ट्राज दिए जाएं, कंट्रोल करना होगा। क्लिफ्टन पॉपुलर एक फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइनअप है और ज़बरदस्त किस्म की टीम है दोनों। गोली खतरनाक होती है, लेकिन अगर सही डायरेक्टेड हो तो, वरना आप हवाई फायरिंग करते रहें कोई फायदा नहीं उसका। अभी तक तो दोनों गोलियां जो है वो सामने वालों को फायदा पहुंचा के गई हैं। 4 रन मिल गए यहाँ पे, अब तक बोर्ड पे कोई ये गेंद भी नहीं आई है, तो ऐसी गोली का कोई फायदा नहीं। ये तो वो गोली है जो अक्सर आप मुझे देते हैं। ये 3rd कंसेक्टिव वाइट बॉल, और वाकई ये प्रेशर बढ़ाती हुई ना सिर्फ माजिद गोली पे बल्कि पूरी टीम पर। अभी तक कोई बॉल नहीं हुई है इस इनिंग्स की, और 6 रन्स ऑलरेडी बना चुकी है यहाँ पर क्लिफ्टन पॉपुलर्स की टीम, या फिर ये कहा जाए कि मलीर मलंग्स 6 रन्स गिफ्ट कर चुके हैं क्लिफ्टन पॉपुलर को, तो ये भी गलत नहीं होगा। अब खसारा 88 रन्स का हो गया है, जो इस इनिंग्स के आगाज में 94 रन्स का था। डेफिनेटली नॉट द वे टू गो। uh, 88 रन्स मजीद दरकार होंगे यहाँ क्लिफ्टन पॉपुलर को। एंड चेंज किया यहाँ माजिद गोली ने, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, क्योंकि ये पावर प्ले है, डीप कवर पे फील्डर नहीं होता, उसका पूरा फायदा उठाया, गैप में स्ट्रोक खेल के 4 रन हासिल किए असद शाह ने। बड़ी बेहतर स्ट्रैटेजी है माजिद गोली की जानिब से, ज़्यादा दिल बर्दाश्ता नहीं होना इनको। ये जो चौका पड़ा है, इट वाज अ गुड शॉट, और फहद मियां चुन्नू की यहाँ पर तारीफ बनती है, इनफैक्ट असद शाह की तारीफ बनती है कि उन्होंने इस शॉट को बनाया। ये वो लाइन है, ये वो एंगल है जो तंग करेगा, बट चेंज कर लिया एक बार फिर उन्होंने।
और इस बार ऑफ वॉली गेंद को बड़ी हिट मारने की कोशिश असद शाह की, कामयाब हुए, गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। छक्का पहला क्लिफ्टन पॉपुलर और 360 असद शाह का। अगर आप लॉन्ग ऑफ को सर्कल में रखते हैं यानी कि मिड ऑफ रखते हैं तो आप ये लेंथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते नसीम, आप इनवाइट कर रहे हैं खतरे को, बिकॉज अगर मिस हिट भी होती है असद से तो भी विकेट नहीं जाएगी उनकी। अब तक जितनी गेंदें माजिद की हुई हैं वो बैटर्स के लिए ज़्यादा मसला नहीं बना। आप देखें कि जो पहली गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर जो उन्होंने राउंड द विकेट आके की थी, खासी शॉर्ट पिच गेंद थी, पूरा टाइम मिला असद को। इस बार स्लोअर वन बिल्कुल ब्लॉक होल्ड में ऑफ वॉली बन गया। इस बार यॉर्कर लेंथ डिलीवरी सीधी एंकल्स की तरफ डायरेक्टेड थी। माजिद कोहली अभी भी अपनी लाइन को सही तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बट इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे ग्राफिक्स नजर आ रहे हैं ये गलत नहीं चल रहे हैं, ये सही चल रहे हैं। 3 गेंदों पर 16 रन हैं क्लिफ्टन पॉपुलर के। हालांकि ये 6 गेंदों पर है क्योंकि 3 वाइड हो गई हैं और वो पहली 3 वाइड आमतौर पे ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बड़ा सरप्राइजिंग है माजिद जैसे बॉलर की जानिब से। बहुत ही अच्छी गेंद, आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर वापस आते हुए माजिद गोली, और अब गोली कुछ असर करना शुरू हुई। ये आइडियल लाइन और लेंथ है माजिद गोली के लिए, खास तौर पर जिस किस्म की फील्ड उन्होंने खड़ी की हुई है। मिड ऑन और मिड ऑफ सर्कल के अंदर हैं, एक डीप मिड विकेट के साथ बॉल कर रहे हैं। ये बेहतर लेंथ है खास तौर पे नसीम। बिल्कुल दानिश, अच्छा कमबैक जब 2 गेंदों पर 10 रन, 2 लीगल गेंदों पे 10 रन दिए और उसके बाद 6 रन आप ऑलरेडी वाइड की सूरत में दे चुके थे, तो 2 अच्छी डॉट बॉल्स। इस बार बड़ी हिट मारने जरूर गए थे असद शाह और गेंद को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। बड़ी हिट मारने जाते हैं तो बाहर ही पहुंचाते हैं वैसे। 360 बिल्कुल टॉप एज लगा था यहाँ पर, उसके बावजूद पावर इतनी है असद शाह में कि उसके बावजूद बॉल बाउंड्री लाइन के उस पार गई। सब चकरा गए एक लम्हे के लिए कि बॉल आखिर गया कहाँ है। तो इसमें कैमरामैन को आप ज्यादा दोष दे नहीं सकते, हम भी ढूंढते रह गए बॉल। हम भी ग्राउंड में ही ढूंढ रहे थे कि शायद एज लगा है तो ग्राउंड में ही होगी गेंद। और इस बार असद शाह का परफेक्ट कनेक्शन, ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज से टाइम किया गेंद को और एक और छक्का हासिल किया। 360 कैप्टन ऑफ क्लिफ्टन पॉपुलर असद शाह इन फुल फ्लो। बिल्कुल मार्जिन ऑफ एरर्स की हम बात करते हैं, बहुत ही मिनिमल मार्जिन ऑफ एरर होता है टेप बॉल क्रिकेट में। खास तौर पे जरा सी बॉल लेग स्टंप की जानिब गई तो वो अपने बल्लेबाज को पूरा मौका मिलता है अपने हाथ खोलकर इस किस्म का शॉट खेलने का। बेहतरीन स्ट्रोक असद शाह की जानिब से, भरपूर फायदा उठाया लैक ऑफ डायरेक्शन का। एक ओवर के बाद क्लिफ्टन पॉपुलर्स 28 बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर में माजिद अपनी टीम को गोली दे गए, 28 रन बन गए और इतने ज़्यादा बोर्ड पे रन दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन माजिद ने इस इवेंट में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। अगर मलीर मलंग्स की हम मुसलसल 5 फतुआत देख रहे हैं तो उसमें बड़ा हिस्सा रहा इनकी बॉलिंग का। AK-48 द ब्रांड ऑफ क्वालिटी MNP इनकी टीम भी है यहाँ पर। डेल टेक्नोलॉजी की टॉप लिंक, सिन टीवी, State Life Insurance Corporation of Pakistan and Badar Expo Solution, the patron body of this UBL Amin Karachi Tape Ball Premier League, Zishan Salim Zaki Group, और ये SSU सिंध पुलिस का डिपार्टमेंट के जिनकी अपनी टीम यहाँ खेल रही है। पहला मौका था राजा मुख्तियार अहमद जो उनकी टीम ऑनर है, बहुत डिटरमिन दिखाई दी है। और फजल आए गेंद करने के लिए, फजल आफरीदी। टॉस से पहले हमारी दाऊद पठान से भी बात हो रही थी, हमने कहा कि ज़बरदस्त आपकी विनिंग स्ट्रीक लगी हुई है, 5 में से 5 आप जीत गए हैं। ऐसा ना हो कि आपका भी भारत वाला हाल हो जाए, पूरे टूर्नामेंट में अनबीटन रहे और फाइनल जाके हार गए। थोड़ा सा डर गए थे वो भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा जी हम जीतने की नीयत से आए हैं और हम हर मैच तगड़ा खेलेंगे। लेट्स होप ऐसा ही हो। वैसे इतना बुरा आइडिया होता नहीं है कि अगर आप लीग स्टेजेस में एक आध मैच हार भी जाएं, थोड़ा सा वेकअप कॉल मिल जाती है आपको।
मेरे ख्याल है ये ज़्यादा अच्छा होता है कि आपको एक वेकअप कॉल मिल जाए। आपको याद होगा जो 2021 में वर्ल्ड T20 था, पाकिस्तान सारे मैच जीत कर गया, दैन सेमीफाइनल में हम कोलैप्स कर गए थे। इसी तरीके की सूरत हाल हो जाती है जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हाई हो जाए। अगर एक वेकअप कॉल आ जाए, आज तक सिर्फ 2003 वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया 11 मैच मुसलसल जीता, कोई टीम नहीं जीती। ओह लकी रहे FMC फहद मियां चुन्नू। लेकिन क्या शानदार एफर्ट था यहाँ पर दाऊद पठान की जानिब से, जो कि लॉन्ग ऑन पे खड़े हुए थे, डाइव मारकर बॉल को कैच करने की कोशिश की, नाकाम रहे, थोड़ा सा उनसे आगे गिरी। फिर देखें इतना अच्छा कनेक्शन मिला नहीं था फहद मियां चुन्नू को, वरना अगर पूरा कनेक्ट करते हैं तो बॉल ग्राउंड के अंदर नजर नहीं आती, आपको ग्राउंड से बाहर जाती है। 1999 का भी वर्ल्ड कप मुझे याद है, पाकिस्तान की बड़ी तगड़ी टीम थी और फाइनल में जाकर जो हाल हुआ था ऑस्ट्रेलिया के हाथों, वन साइडेड मैच पाकिस्तान हारा था। लेकिन दानिश वहाँ बांग्लादेश से भी मैच हार गए थे उस वर्ल्ड कप में। मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा बहुत कम हुआ है कि टीमें सारे मैचेस जीत के इवेंट जीत गई हैं। एक कोलैप्स हो जाता है और कभी कभी वो नॉकआउट मैच में हो जाता है, लेकिन इस बार फहद मियां चुन्नू को कहीं न कहीं लाइफ मिली और दाऊद पठान ने जो कैप्टन है जबरदस्त ट्राई की और बोल्ड कर दिया। यहाँ फजल अफरीदी, असद शाह आउट। क्या शानदार डिलीवरी थी इस बार फजल की जानिब से, बेहतरीन लेंथ। आप देखें एक एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी में बॉल की थी ये फजल ने। असद शाह समझ नहीं पाए कि इनको बैकफुट पर जाना है या आगे रहना है, थोड़ा सा नीचे भी रही बॉल को, जब ही शायद डिसीव हुए, थोड़ा अंदर की तरफ भी आई, भरपूर कंप्लीट डिलीवरी थी। असद शाह 360, 22 on 7 balls with the strike rate of 314.29, 3 sixes, 1 4. ये चैनल है नसीम, बस सवाल ये है कि क्या फजल 6 में से 6 गेंदें यहां पर कर सकते हैं? यहीं पर करेंगे तो बैट्समैन के लिए एक डरावना ख्वाब बन सकते हैं। बैटिंग इतनी डोमिनेट करती है दानिश इस क्रिकेट में कि इसी चैनल के ऊपर 2 छक्के खा लेंगे वो। ये इस क्रिकेट का खास है, बैटर अपने आप को एडजस्ट कर जाते हैं फौरन, इसी वजह से इतने हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। बट काफी सारी चीजें थी जो इस पर्टिकुलर बॉल में बड़ी जबरदस्त एग्जीक्यूट हुई। एक तो परफेक्ट लेंथ थी, एक वेरी गुड, यस बिल्कुल। जियो सुपर की प्रोडक्शन आप देख रहे हैं नेट सेट की कोलैबोरेशन के साथ, जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इस प्रोडक्शन के लिए। साथ साथ फजल बहुत माइन्यूटली बॉल को अंदर भी लेके आए थे। आप देखें थोड़ा सा अपना उंगलियों और रिस्ट के साथ खेल भी रहे हैं वो, थोड़ा सा डबल माइंडेड करते हैं बैटर्स को। हक नवाज बैटिंग के लिए आए। से खासी बाहर गेंद, एक जगह पे गेंद करना भी बड़ा मुश्किल होता है दानिश। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर एक जगह पे गेंद करना मुश्किल है, आपने अब खुद को कहीं ना कहीं कुछ डायरेक्शंस चेंज करनी है अपनी बॉलिंग की, कुछ इम्प्रोवाइजेशन लेकर आनी है जो बहुत ज़रूरी है। कुछ स्लोअर वन करना है, वो एक जगह पे बड़ा डिफिकल्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप नसीम, लेकिन ये आइडिया अच्छा था फजल का। आप देखें इससे पहले वाला जो गेंद था वो कुछ इसी किस्म के चैनल से बॉल को अंदर लेके आए थे, इस बार वो अपने हाथ के शेप से बॉल को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो आई लाइक द आइडिया। अच्छी बॉलिंग यहाँ पर, खासकर जो आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही दानिश के लेंथ इनकी, तीनों गेंदों पर उनकी लेंथ ऐसी थी कि जहाँ हिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बैट्समैन आगे जाए या पीछे आए, कन्फ्यूजन रहती है। तो ये अब तक लेंथ बहुत अच्छी रखी है, ना बहुत आगे गेंद रखी ना बहुत पीछे रखी। टेप बॉल के बैटर्स की खासियत ये होती है कि वो किसी भी फुल डिलीवरी को, बल्ले के नीचे अगर बॉल आए तो बिल्कुल नहीं बख्शते, इवन यॉर्कर लेंथ को जड़ में से निकाल लेते हैं। इस बार लेंथ अच्छी नहीं थी, फुल टॉस गेंद कर गए यॉर्कर करने के चक्कर में। यहाँ फजल अफरीदी और लॉन्ग ऑन की जानिब हक नवाज का, हक नवाज स्ट्रोक, शानदार छक्का। हक से शॉट लगाया है इस बार उन्होंने, और फजल थोड़ा सा ओवरडू कर गए, यॉर्कर लेंथ सर्च कर रहे थे। अगेन बहुत बहुत मिनिमल मार्जिन ऑफ एरर है यहाँ पर, जरा सा आप चूके रन्स पड़ेंगे।
इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रन हासिल किए हक नवाज ने, आते ही जबरदस्त इंपैक्ट डाला क्लिफ्टन पॉपुलर के लिए। हक नवाज अच्छे मैच्योर बैटर लग रहे हैं मुझे, बिकॉज आप देखिए इंतजार कर रहे हैं, जांच रहे हैं बॉल कहां आ रहा है, पहले से सोच के नहीं खड़े हुए कि मैंने यहां शॉट खेलना है, इसीलिए बॉल की मेरिट पर स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। इससे पहली वाली बॉल फुल टॉस थी, उसको सीधा खेला, ये थोड़ी बाहर की तरफ निकाल रहे थे फजल, तो उसको कवर के ऊपर से खेला। अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा रहे हैं यहां पर हक नवाज। ओ, अगर LBW की होती तो फिर शायद वापस जाना पड़ता हक नवाज को। यहाँ अच्छा डॉट बॉल, यहाँ फजल आफरीदी का अच्छा कम बैक। 2 ओवर मुकम्मल, 41 फॉर 1 क्लिफ्टन पॉपुलर। क्या लगता है वैसे लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं क्लिफ्टन पॉपुलर, कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? जो ये डग आउट दिखाई दे रहा है, टेंशन है। थोड़ा सा डिसिप्लिन की कमी नजर आई है हमें मलीर मलंग्स की बॉलिंग अटैक में। थोड़ी सी वेवर्ड बॉलिंग भी हमने देखी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रास के रन्स कंसीड किए हैं। अगर इस चीज़ को थोड़ा सा संभाल लें, कंट्रोल ले आए अपनी बॉलिंग में, तो कहना मुश्किल है कि ये खसारा पूरा होगा या नहीं होगा। पर जब तक फहद मियां चुन्नू खड़े हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पर एटलीस्ट 15-20 रन की लीड लगेगी क्लिफ्टन पॉपुलर की। हाँ, अगर फहद मियां चुन्नू की विकेट मिल जाए तो ज़रूर प्रेशर महसूस करेगी क्लिफ्टन पॉपुलर की टीम। क्रिकेट फैन, क्रिकेट देखनी है, बस एंजॉय करना है खेल को, ये पैशन है इस कौम का, और सभी लोग आते हैं और भरपूर अंदाज से एंजॉय करते हैं। माजिद गोली अपना दूसरा ओवर करने के लिए पर तोल रहे हैं। इस बार शॉट मारने की कोशिश, आउट होने का खतरा है यहाँ, और उम्दा कैच यहाँ पर। फहद मियां चुन्नू FMC आउट हो गए। बड़ी विकेट यहाँ मलीर मलंग्स के लिए। अच्छा कैच था ये कलीमुल्लाह का, बड़े फुर्ती के साथ भागते हुए आए, अपने आप को स्टेबल किया बॉल के नीचे और सेफली इस कैच को पकड़ा। बिल्कुल प्रेशर में नजर नहीं आया, इवन दो फहद मियां चुन्नू की बड़ी विकेट थी। अब देखें कितना स्टेबल थे, इवन दो बॉल थोड़ा सा डेविएट भी किया था आखिरी वक्त में, अपनी बॉडी से दूर पकड़ा उन्होंने। फहद मियां चुन्नू 1 रन बनाकर आउट। क्लिफ्टन पॉपुलर 41 पे 2। और ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया अब, क्योंकि फहद मियां चन्नू ऐसे स्ट्राइकर थे कि जो काफ़ी हद तक दूर ले जा सकते थे मलीर मलंग से इस मैच को, लेकिन टाइम पर माजिद गोली जिन्होंने पहले ओवर में 28 रन दिए थे। दानिश, ये क्रिकेट है, लक किसी जानिब कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और FMC की विकेट पहली गेंद पे हासिल की। एक बात तो माननी पड़ेगी नसीम राजपूत के मलीर मलंग्स की ये टीम लड़ना जानती है। अगर मैच में डाउन एंड आउट भी हो और सिचुएशन इनके खिलाफ भी हो, इनके अगेंस्ट भी हो, उसके बावजूद लड़ते ज़रूर हैं, फंसाते ज़रूर हैं मैच को। ये वजह है कि जीतते आ रहे हैं। जफर अब्बास भाई ज़बरदस्त किस्म की टीम लेके चल रहे हैं। पिछले साल वो मसरूफ़ थे, डिज़ास्टर की वजह से वो यहाँ आ नहीं सके थे JDC के रूह रवा, और इस बार वो जिस खूबसूरती से अपनी टीम को लेके चल रहे हैं, प्रॉपर टाइम देते हैं, एक एक खिलाड़ी उनके साथ जल दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके के इनामात ताहिरी पिंडी खेलने के लिए आए, और ये ताहिर पिंडी तो ये इनका नाम है, लेकिन ये ताहिरी पिंडी कहलाते हैं। बिल्कुल, और बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये रोहिल नज़ीर के भाई हैं। ताहिर नज़ीर नाम है इनका, ताहिरी पिंडी इनको टेप बॉल में प्यार से कहते हैं। वेरी वेल बोल्ड माजिद गोली का स्ट्रॉन्ग कमबैक। पहले ओवर में 28 रन माजिद गोली के बने थे, पहली 3 गेंदें वाइड की थी, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर फहद मियां चुन्नू को आउट किया, और सेकंड डॉट बॉल, स्ट्रॉन्ग कमबैक मलंग्स का। ताहिरी पिंडी आते ही इस बॉल को तारा बनाना चाहते थे, बट माजिद गोली की पेस में उनको तारे नजर आ गए होंगे। थोड़ा सा संभलना होगा। माजिद गोली अपने शोल्डर को थोड़ा सा इस वक्त मसाज कर रहे थे, शायद तकलीफ में नजर आ रहे हैं।
बहुत ही अच्छी गेंद को हिट किया है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक ताहिरी पिंडी का। ये गेंद इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज से फ्रॉम द टोज फ्लिक किया इस गेंद को, जबरदस्त छक्का ताहिरी पिंडी का। और जिसे कहते हैं ना, चढ़ के फ्लिक किया है, ऊपर आकर फ्लिक किया है, पूरा लाइन में आकर फ्लिक किया है। जबरदस्त कलाइयों का इस्तेमाल यहाँ पर। अच्छी क्रिकेट खेली है ताहिरी पिंडी ने भी अपने करियर में, और इसमें हार्ड बॉल क्रिकेट भी शामिल है। नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर आकर इस पूरे टूर्नामेंट को एंजॉय भी कर रहे हैं। इस बार मिस टाइम कर गए हैं फील्डर गेंद के नीचे, और कैच लेने में कामयाब। इस तरीके से ये अनफॉर्चुनेट रहा कि थोड़ा सा शॉट उनका मिस टाइम हो गया, वरना जिस जगह उन्हें गेंद मिली थी ये उनका बहुत ही मजबूत जोन है। यही होता है कि जब बुरा वक्त हो तो फिर आउट हो ही जाते हैं। दानिश, आप नोट करेंगे थोड़ी सी ज्यादा लेग स्टंप की जानिब थी, अपना बल्ला जल्दी क्लोज कर गए ताहिरी पिंडी। यही वजह है कि टॉप एज लगा और सीधा बाउंड्री लाइन तक गया। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद कैरी कर जाएगा। ये बहुत ही जोर से लगाते हैं ये फ्लिक ताहिरी पिंडी। 6 रन हासिल किए, लेकिन इस बार फ्लिक टॉप एज लगने की वजह से बजाय स्क्वायर लेग पे जाने के लॉन्ग ऑन पे चला गया, और वहां भी बाउंड्री पे कैच आउट हुए। 47 for 3 क्लिफ्टन पॉपुलर। ये सारे हमारे वॉलंटियर्स जो काम कर रहे हैं इस यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त काम। और इसके साथ अभी हमने देखा था कि जियो सुपर और नेट सेट ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्शन कर रहे हैं। रेहान सिद्दीकी, फ़रूख सुलेमान, सईद भाई, ये सब लोग ज़बरदस्त। साथ साथ केटीपीएल के मैनेजर में मैंने एक चीज़ देखी है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब एंजॉय करके काम कर रहे हैं। ये भी टेप चढ़ा रहे थे भाई, और ऐसा नहीं है कि एक आध दो बॉलों पे टेप चढ़ाना है, दर्जनों बॉल्स हैं जिन पर टेप चढ़ाना है, और आप देखिए कितना एंजॉय करके वो टेप चढ़ा रहे थे। उमर बाजवा बैटिंग के लिए आए, और इस बार फिर टॉप एज लगा है। फील्डर गेंद के नीचे हैं, देखना होगा। और कंफ्यूजन, कॉलिंग मिस्टेक दिखाई दी। इमरान वहां पहुंच गए थे, शायद माजिद गोली बिल्कुल खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये तीसरी कामयाबी इस ओवर में दिलाते हो। कॉलिंग का फुकदान तो हमें इस पूरे टूर्नामेंट में नजर आया है, और शायद ये एक ऐसा टेक्निकल एस्पेक्ट है जो कि हार्ड बॉल क्रिकेट से आपके अंदर इन्फ्यूज किया जाता है। नसीम, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, डाइव किस तरह मारनी है, बॉल के नीचे आप आ रहे हैं तो कॉल करना है, इट्स माइन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं। ये उवैस लोधी डायरेक्टर हैं बदर एक्सपो सॉल्यूशंस में, और बड़ी मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इनको थोड़ी चाय ज्यादा पीनी पड़ती है, कंट्रोल करना है। माजिद गोली ने अच्छा कमबैक किया है यहाँ पर। पहले ओवर में 28 दिए थे, इस ओवर में 2 विकेटें भी हासिल कर चुके हैं। इस बार अच्छा कनेक्शन, स्लोअर वन किया था जिसे अच्छे अंदाज से पिक करने में कामयाब हुए उमर बाजवा। गेंद को पहुंचाया मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। एक और छक्का है यहाँ पर माजिद का। अच्छा ओवर, जो कैच ड्रॉप होता है तो उसके बाद आप देखें दानिश, एकदम से इक्वेशन भी चेंज हुई। बिल्कुल इक्वेशन भी चेंज होती नजर आ रही है, साथ साथ कॉम बॉक्स में भी तब्दीली आएगी, और नसीम राजपूत और मेरी जगह आपको ज्वाइन करेंगे फलक शेर और तुम्हारा नवली कायनात इम्तियाज। Thank you so much to Danish and East for getting me my energy back with that announcement in the com box. But at the moment, energy is with the bowling side as they've picked up 3 important wickets. Asad, Shah and Fahad Miachenu are removed. And it's looking good for Malangs as we see Ali Chota has been given the ball to bowl the 4th over of the innings. Good evening, Kainat. Good evening, Falak. And good evening, all the viewers around the globe watching this interesting game of cricket. Here is Ali Chota. Balls that outside the off stump. We'll have to re-ball that. A loosener to start.
He's been in very good bowling form, is Ali Chota. He's been amongst wickets every time he's walked into bowl. And he's looked pretty resilient. He's bowled with venom. Has a typical way of celebrating when he picks up wickets. So he's been at the batter all the time. But a very long run-up for a tape ball cricket match. I mean, how is he playing in any gully? Well, you're taking care of the run-up of the ball. Because I get the feeling that it's a little bit of wastage of time, having said that we are playing in tape ball. Well, he has a huge run-up. I think it's around, what? I mean, 20, 25 steps. And it's good to have that rhythm when you're bowling, but it's quite big. I mean, I can't even see him from here. But I can see him, and I can tell you, it's just reminding me of great Shoaib Akhtar and Brett Lees with that run-up. Such a long run-up for a tape ball bowler. But it's good to see for a youngster. Gets a little tickle, and that will run away for 4. So the pace, the quickly it comes, quickly it ricochets as well. So this time, it's going against the favor of the bowler. Wrong line. Well, surely it was. And a good flick in the end towards leg side. Towards the fine leg. And if we talk about the run-up, I'm always very interested to talk about run-ups because I also have a good run-up and it's quite stable. So it's interesting that he has a lot of big strides and he should, get that momentum rather than having those all big strides only. Well, let me ask you a question. How many steps you have in your run-up, Kainat? Well, I have just 15 steps, but they're reasonable. They start with that momentum, slow momentum, and then gain the pace when you're reaching that bowling crease line. That's spanked, and that's spanked handsomely. Clears wideish long on for the maximum, does Haq Nawaz. That was a huge hit. Surely it was. It was not a really bad delivery, a little short of length, but rightly picked by Haq Nawaz. And in the end, a great shot. Well, the bowler Ali Chota was expecting it to be a catch, maybe, but seems disappointed. Well, talking about those run-ups, just talk us through this because it will be good for the viewers, for the youngsters who are watching it. How many steps are going to be reasonable for a fast bowler? As that has been lofted and lofted miles in the air, and eventually it sails over the advertising hoardings for yet another maximum. Second one of the over. Abdul Haq's looking good. Well, Abdul Haq seems in a good form and a good place to target. It was completely a little bit of straight delivery and hit it with on the merit of the ball. This is what they need, and to play on the merit. As we were talking about the run-up, so it's like whenever you feel completely ready and you have all that control, exactly those are the run-up. Those are the run-ups that you need. The steps, yes, the steps that you need. It can be 17, it can be 20, whenever you feel your highest rhythm. Full toss. He got down on one knee and hooked it. Oh my word, that's the simplest of the chances. And the fielder has put it down. That was a dolly. Should have been taken. Ali Chota must be so disappointed as the team has to take these kind of opportunities to get the batter out. He was not in that shape and form to hit that shot. But again, managed somehow, and Ali Chota is very disappointed. Yeah, simple as they come, simple as they go down. You don't expect that to go down. He's got the nick, and he's got the wicket he wanted. Ali comes back with a beauty. That was a snowter. And have a look at that, a bit of send-off to the batter as well. That's good to see, a bit of contest here.
Well, a good ball by him, a little bit of deviation from the ball, and the batter completely missed the line. And Ali Chota is actually very angry because of the last catch dropped. And this is the aggression the fast bowlers bring. Umar Bajwa goes for 8. There's 74 for 4. Well, after 4 overs, 4 wickets are down for Clifton Populars, but one thing is for sure, they've got closer to that first innings total of 94, which was managed by Malir Malangs. Again, I just want to ask you that you can just talk us through that debate which was going on about the run-ups. For the youngsters who are watching, how would you advise them? I mean, is it going to be better to have the steps in even or in odd numbers? What will be your take on it? What will be your suggestion for the youngsters? But I've always felt like it should always be in odd numbers. I don't know why. If earlier my run-up was 17 steps and now it's 15 steps. So my rhythm, it completely depends on your stepping. If you're getting it on the 20th step, then it will be 20th. If not, then whatever it can be. Another one in the air and another one goes back. He has come and gone and Ali is on fire with the ball. 2 of 2 for him. Or is it Ubaid? Ubaid is the bowler. Yeah, Ubaid is the bowler and he's got the wicket of his very first delivery. Have a look at that. Well, indeed, a good catch by the keeper in the end. Good hand-eye coordination. And Haq Nawaz went for 27 for 10, 74 for 5. Right then, it's been a very good start to his bowling spell. Ubaid making sure that his side gets back into it, and they're now back in it big time because they've removed the dangerous Haq Nawaz, who was middling the ball quite nicely. Half of the side back in the dugout. Clifton Populars need to make sure that they get those 20 runs they're trailing by at the moment. Daniel Shirazi is the new coming batter. Oh, look at that. Big swing. No connection there. So he's bowling with some zeal, which is good to see. Also, if you see it, they have some good pace to offer. And they have the follow-through that brings on all the pace and energy. It's remarkable. See, again, he has a small run-up, but again, the pace and the follow-through that follows is good. Talking about the run-ups, it just reminds me as he has to re-bowl. They're not happy with the decision, but it's wide. Come on, son, you got to re-bowl that. Reminds me of the great Wasim Akram. Just only few steps, just hurrying towards the wicket and bowling 90 miles per hour. Always was incredible to watch, and how tough it would be for the batters. Don't want to be a batter if somebody is bowling in that particular way. Well, as I said, run-ups are only to make yourself comfortable and just get that rhythm. It can also come in very few steps. That can only be 10 steps and you'll get the highest rhythm possible. So yes, he was one of the greatest and he has shown by his run-up and everything, swing. Down the ground he goes. Umpire had to get away from there. Does well. Single taken. So Daniel gets off the mark with that single. Yeah, Pakistan have definitely produced the greats of the game. There's no question about that. And talking about great Wasim Akram, he too started his career by playing tape ball. The same game which we are witnessing here in this UBL Amin presents KTPL Season 3.
from Moin Khan Cricket Academy, Karachi, live on Geo Super. It's been very, very amazing sort of contest, what we are witnessing. And in the last 10 nights, actually, we've seen some great matches. Very competitive cricket we've seen. This time he's got hold of that. Goodbye ball. That's the 6 over long on. Kamran is in form. First delivery he faces and it's a 6. And towards the mid-on fielder. Long on, towards the long on. And again, they need to complete all that 11 runs and then get the lead. And Clifton Popular has that team that can lead from here on. Full toss, gets the connection, but it will be stopped inside the boundary. Another couple added to the total. Looking good is Kamran, the left-hander. 9 away from that first innings total, which is good for Clifton Populars. The last over will be really important for Clifton Populars as they are a good side, and especially when they have 5 of their batters already back to the dugout. The main batters who are in form. This time he's gone leg side and one couple of bounces to the fielder there. Ali Chota is the fieldsman. A little bit of fumble allows the batters to come for the second run. And umpire is signaling for a short run. So they ran short, so only 1 run will be added to the total. Now he's claiming that he's grounded his bat inside the popping crease, but umpire knows better. 5 overs done, it's 86 for 5. There is quite a bit of contrast in the performances of the two sides. If we look at Malir Malangs, they are topping the table with 10 points against their name, whereas Clifton Populars have managed only 4 points in their 4 games that they've played before this. They will definitely want to have an impact in this game and would love to finish on the winning note, on the winning side. Will Populars, just to, remain confident in the competition. There you see Hassan Raza, the mentor of Clifton Populars on your screen. Well, that is true, but what I've seen so far, Malir Malang had that capability to bounce back in the last inning mostly. So their last inning has been spectacular to watch, as even if they're batting or they're bowling, they come back somehow and get that momentum from the other team back in their side. So it's interesting to see that from the start, they don't, dominate any game, but in the end, the results comes in their favor. Now, time will tell what happens, but at the moment, they're going good. Clifton Populars. Ali Chota will continue. Went for 19, but he has taken an important wicket in the last over. Bowled him. Inside edge onto the stumps. Ali is unstoppable. And have a look at that typical celebration of his. He's enjoying himself. He was already ready to flick it towards the mid-wicket region. And ball just went to the stumps. At first, Ali had no idea that it's bowled, but it is. And Daniel Shirazi went for 1. 86 for 6.
Still 8 runs behind of that first innings total, Clifton Papillars. It's been very even Stevens in this first innings. It will be very important how they take the initiative for both of the sides when they will play. These are the sponsors. Yubil Amin presents KTPL, PTBF, Maza. Yubil Amin title sponsors, of course. We are thankful to all the sponsors to make this event possible. Arbaz is the new coming batter. He plays one down to mid-wicket and takes a single to get off the mark. A good start, but I'm expecting more of the sixes from Clifton Papillars in the last over to get that lead. Left-hander seemed to be very good when he hit 1-6 over mid-on. Needs to finish things off on a good note for his side. Still trailed by 7 runs, and they've got 4 deliveries to go past those 7 runs. People have turned up in numbers tonight as well, as usually. Was trying to go leg side. Will take a leg by. So it's been good bowling, I would say. The length has been very important, especially in this over. He's been trying those Yorkers. You got to have a big heart to go for those Yorkers because the margin for error is very small here. If you miss your length a bit, you're going to end up on the banks, and the bowlers know that thing as well. Having all those things in the back of your mind to execute perfectly is a good achievement, in my opinion. On screen, we have Zafar Abbas, the owner of Malir Malangs. This time he's been tonked, and he's been tonked over the boundary for the maximum. This is the hit they were looking for, Clifton Papillars, and they got one. And this is Arbaz to provide them with that blow. Well, every shot counts, and it was not miles, but yes, still a 6. Again, coming in that line and extending the arms on the back foot. A good shot by Arbaz. Very difficult shot to execute, but he's done well and hit it on the full for the maximum. And these are the runs which will give them lead. One of them. They are trying their best, and no doubt they will get a lead in the next ball, or maybe not. I mean, they already have 1-run lead, so it's a good thing that at least they're not going with the trail on them. Well, have a look at that run out attempted at the striker's end, or at the non-striker's end. Safely home was the batter. So 2 runs because of that poor stuff in the field have been taken, and now they lead by 2 runs, Clifton Papillars. Goes down the ground, drills it hard, but protection is always there. So it will be only 1 run to finish the innings. So they lead by 3 runs, Clifton Papillars. Pre-even Stevens, it's been a very good competition so far, what we have witnessed. But they will feel pretty happy and confident winning the toss and bowling first and ending up with first innings as lead of 3 runs against their name, always going to give them a bit of confidence. Well, definitely, and it's actually very even right now, and we cannot predict any winners right at this moment. And I would have liked to appreciate Ali Chota for the bowling he did, because it was completely as he wanted to bowl, and those Yorkers were really effective. And when you're bowling the second over and the last one especially, it matters. Here are the highlights. Fahad Mian Chennu and Asad Shah started the proceedings in the merry way they do normally. There was a tough
chance put down of Fahad, and he was knocked over was Asad. Fahad continued drilling them towards extra cover. Miscued one. And he was caught at mid-off boundary. Then a leading edge by Tahir Pindi, and he too was taken in the deep. Good bit of hitting we have witnessed in between. Some good strokes, and that was a miscued, which was put down by the fielder. And eventually Ali Chota got his man at the lost lob. Another wicket went when Ubaid came to bowling. Left-hander hit a 6. Ali Chota knocking over another batter. He was pick of the bowlers for me. And then a 6 just towards the end of the innings by Arbaz. Here's the batting card, 22 to Asad. Fahad was just not in good touch tonight. Haq Nawaz was good for his 27. And Arbaz towards the end made 10 important runs to go them past that first innings total and get a lead of 3 runs. Here's the bowling effort. Majid Goli was expensive, but he's picked up 2 wickets. All the bowlers were amongst wickets. Fazal, Ubaid 1 apiece, and Ali Chota picked up 2 wickets. We'll take a short break and we'll come back with the run chase with the next innings.
Welcome back from DHA Sports Club Moin Khan Academy for this another game between Clifton Popular and Malir Malangs of UBL KTPL Season 3. And what an interesting competition this is turning out to be between these two very strong sides. We saw Clifton Popular getting just a 3-run lead in the first innings over Malir Malangs. There you see the two on-field umpires are already making their way out there at the centre. It was a tough competition between the bat and ball in the previous innings. Clifton Popular, it was the first time they were curtailed under 100. That too when they lost 6 wickets, something that they weren't expecting when they won the toss and decided to bowl first. But hats off to the way Majid Goli and Ali Chota once again bowled, were amongst the wickets and also curtailed the flow of runs. What do you reckon about that score, Farooq Riaz? I think it's an even Steven situation at the moment, and I think they have to play one more inning match. I think it's 97 runs, 94 to Malir Malangs, so it's a 3 runs lead. It's not a huge difference. So I might say it's another match, 6 over side game here. There's a 3 runs difference, as you can see. That's the equation. So Dawood Khan and Mimran played beautifully. Apart from the one mystery over, overall they played well, and Mimran came back really strongly in the last over when he smashed a couple of sixes to finish the first innings. Well, it's very important for all these sides that are playing their game against Malir Malang. They cannot afford to let Malir Malang stay in the game, because last time around against Karachi Knights, they scored 120 and Karachi Knights got very closer to their first innings score. But the Malir Malangs made a comeback in the second innings, scored 100 more runs once again in the second innings and did not allow the opposition to chase down the target. Dawood Khan Pathan once again is going to be opening the batting. He has been really influential as the skipper, as the opener, as well as the fielder for Malir Malangs. And if we talk about his partner at the other end, one of the leading run scorer in this Karachi Table Premier League Season 3 is Mimran. Interestingly, Malir Malang haven't lost any game. They had 10 points as a result of 5 wins, whereas Clifton Popular played 4, won 2, lost 2. But the overall net run rate, Clifton Popular is way on top. Farhad Abdali, the left armour, will start the proceedings in the third innings. Yeah, I remember in one of the games, especially against, I think it was against DHA, the Bungs, when they conceded a lead of 40 runs, but they still managed to bounce back in the second innings and won that game. That must have given them a huge boost in confidence. But now it's important for Clifton Popular to not leak away many runs in the second innings. It's not going to be easy for them to chase down in the next innings, considering the fact it's going to be Majid Goli and Ali Chota once again steaming in during their run chase. Yeah, they kind of have Clifton Popular as quite favourite for the last 4. First ball. Went for the pull shot. Catched it as a cry. Taken, dropped. Oh, finally it's a drop catch. That was quite catchable. Straight in and straight out. Dawood Khan survives. Look at the reaction there from the bowler. Farhad Abdali, he's absolutely livid with that effort. Yes, it was hit hard, it was hit flat, but it went straight to the fielder at long on. Would have been a big wicket. Because this is DK we are talking about. He got there, juggled in, but just couldn't complete that catch. It was Umar Bajwa, I think, who was standing there at long on. Previously, he was keeping the wickets in the first innings. And second time, Farhad Abdali is furious with the result, with the reaction of the fielder. It was a drop catch, remember, in the first innings. The catch was dropped at a square leg. And Farhad Abdali was a bowler. The second time we saw the similar reaction. He is absolutely livid. You cannot afford to give away chances to a batter of the caliber of a DK, especially when you do not have a lead, a healthy lead that is. Yes, they are still leading by 3, but that's not a big lead. Went for the pull shot. Mimran joins the party and smash for 4 runs along the carpet. Complete control in Mimran. It was an effortless stroke in the end from Mimran, once again making full use of that length. Using his hands, hitting it way in front of square. There was a fielder at deep mid-wicket. At just a meter to cover, but still couldn't get to the ball. Such a good shot there is the first ball. A real confidence booster outside the off stump. A little bit extra height, but Mimran managed it really well. And importantly, he kept the ball along the ground. He was in total control on that occasion. Goes straight, goes high. Is there a chance? Is there a chance? Who wants it? Gone. No mistake whatsoever. And Mimran has to walk back. Finally, elation for Abdali. Well, he deserved that wicket, Farhad Abdali. He has bowled so well throughout this game. 2 lives were given to the batters previously in this game. This time,
Mimran just hitting it in the air, not getting the distance behind that. The fielder at long on had all the time in the world to get underneath that and taking that catch very easily in the end. Redemption for Umar Bajwa. He dropped it earlier in this over, finally managed to take one. Mimran, the man in form, walks back after just scoring 4. It's 5 for 1. Five for 1 on the board. Mimran has just walked back to the pavilion. That is why this format is so interesting. Mimran was really lucky when he got dropped. And in second innings, he wasn't got dropped at the score of 4. He got out. Well, he finished the previous innings with 2 back-to-back maximums, got a boundary at the very first ball, then lost his wicket. Kaleem, meanwhile, is the new batter in at number 3. It's the first time, in fact, not many times Malir Malangs have lost a wicket that early in their innings. Went for the big shot. Fumbled by the keeper, but not punished. He tried to heave it straight away. And talking about Farhad Abdali, well, he has bowled his heart out in this game. He brings in so much to the table with his left arm seamers. He's tall, he makes full use of his height. We have seen few catches being put down of his bowling, but he finally managed to pick up that big wicket of Imran, and that must have been a setback for Malir Malangs. Good shot. Has he found the gap? Not quite. Contact was good, but failed to get the placement right. Now TK has got the strike back. As soon as it went in the air, there was a shout from the bowler to take that catch, but Umar Baja was sitting back. If he would have charged towards the ball, who knows, he might have ended up picking up another catch, but they will take a single nevertheless. But now it's the captain on strike. Farhad Abdali versus TK for the last ball of the over. Out inside edge, drop, put down here. And also run conceded. That was less than half a chance, but should have been taken here. Farhad Abdali is, once again, is not a happy man. He is so furious for Farhad Abdali. He's been congratulated by his captain, but could have been another wicket. I don't think it carried to the wicket keeper. Yeah, it just bounced in front of him. It went past his hands. He was already celebrating, and there you see the frustration on his face. What a big wicket that would have been. It would have carried, but you cannot blame the wicketkeeper on that occasion. It's 7 for 1 after the first over. What an eventful over from Farhad Abdali. He created 3 opportunities, and on the, 2 of them were dropped. And Mimran, the man who got out, it was a high catch, no mistake on that occasion. But overall, Farhad Abdali was not having a real luck here. Now TK is a dangerous customer. This has been an eventful game so far between Clifton Popular and Malir Malangs. Way down the leg side. Luckily, there is a protection behind the keeper. I was really hoping to see Imran, who bowled as a spinner in the previous innings, to have come on to bowl at this stage of the innings for Clifton Popular, because you've got Kaleem, who is a new batter on strike. Irfan Nana, meanwhile, is bowling the second over, another left-arm seamer. As a spinner, he could have troubled the new batter who hasn't faced him previously, but they kept on with the left-arm seamer to the bowl the second over as well. Along the carpet, they didn't get the elevation. Not punish Irfan. So far, he has to be accurate against the TK. Zeba Shanaz, the iconic, legendary actress for Pakistan, alongside Harun Rashid Saab and Sadiq Muhammad. Smashed away through the offside. It found the gap. It found the fence as well. He struck really hard. It was in there for a while, but right in the gap. That was just blazed away past extra cover by TK. Onto the steep. In fact, the extra cover fielder was positioned perfectly for that sort of a stroke, but we did not see a dive. We haven't seen that many dives in this tournament so far from the fielders, but if he would have gone for it, might have even taken it. Not very often we see the offside fielder
get the opportunity to move either right or left, because normally we see batsmen dominate to the onside. It wasn't far away, but also no reaction from the fielder. Low full toss, goes straight, goes high, goes long. Gigantic. A low full toss, making full use of that, DK. It's almost like a bread and butter stroke for someone who is as powerful as himself. Making full use of the length, hitting it straight as an arrow over the bowler's head. And no bowler likes being hit straight back over his head, but look at how comfortably he has cleared the fence. It's a real challenge for Clifton Popular to keep DK quiet. He's a kind of player who has been so devastating. If he stays for the next few overs, he certainly can put aside on a winning note here. And for the pull shot here, horizontal bat has come into play. Is there a wide? Wide not given. It just went on with the angle. DK was once again looking to force that ball on the leg side, but still complaining from the on-field umpire. But a good change up this from the left arm seamer. That's what you need to do against someone like DK. You need to regularly change your plans, because if you're going to bowl at the same blend, you're going to become predictable. And for the pull shot, hasn't got the timing right. He's got runs, just one in fact. He's tried to come back. Irfan. A good effort from Farhad Abdali, standing there at short, fine leg, just turning it into a single. Most importantly, it's Kaleem on strike, and they will take that as a fielding side. If you can manage to keep DK off strike and the new batter on, it's good. It is turning out to be an exciting contest. Plenty of support for both sides. He goes offside. Kaleem couldn't pierce the gap. This time we saw the dive towards his left, and that's what it does. Saved few runs, otherwise that would have run away for 4. 14 runs of that over. It's 21 for 1 after 2. They are just 18 runs ahead. Remember, Clifton was got a lead of just 3 runs, and then some football is out there, so he's going to play it. Maybe cricketers use football as a drill for the fitness. Yes, this is a guy who owns it. Yeah, that's the beauty of this facility, DHA Sports Club Moin Khan Academy, as we have a look at the sponsors who have sponsored this Karachi Table Premier League Season 3. Califord, Diwan International. Some leading brands have joined hands in support of this Karachi Table Premier League, which is a good thing to see. Absolutely, prominent names have come forward to promote table cricket, and now we are watching for the last 3 years massive coverage of table cricket, not only on JioSaver but also on social media. Kaleem again missed it. Full toss on the knee height, and that should have been put away. He got away with that, Farhad. Well, he was clearly late onto that stroke, Kaleem. Yes, it was a full toss, could have been hit away, but that was a pacey delivery from Farhad. The owner of Malir Malangs, Mr. Zafar Abbas, is out there to enjoy all this live action. Well, he has been present in almost every game for Malir Malangs, and he has been the lucky charm for them as well. Missed it again. Low full toss. Missed by Kaleem. What is he doing? He's really struggling here, and 2 of 5 to his name. There was clearly a sound, might have been an inside edge, but there wasn't much deflection. He's rubbing the area of the pitch where his front foot lands. Might be slipping. He's creating a rough patch here because his front foot lands here. To avoid any kind of injury, any kind of discomfort, he's doing it with the permission of umpire, of course. Now Kaleem has to find the middle of the bat. On both occasions he missed a full toss. He was trying to play across the line, whereas TK is waiting. This is more frustrating for the player like TK. And for the onside,
not more than one. DK certainly won't come back for two. Just get the feeling Kaleem wasn't expecting to come out to bat that early in the innings. Such has been the dominance which has been shown by Mimran and DK at the top of the order for Malir Malangs. Probably this is the first time Mimran lost his wicket in the very first over. Otherwise, he has been simply brilliant in the previous 5 games at the top of the order. Yes, just because of Farhad, he bowled really well. As I mentioned before, he created 3 opportunities, and one delivery he caught a wicket. Otherwise, 2 catches were dropped. Went for the big shot. There is a protection. It is turning out to be a good over again from Farhad. He's doing a superb job. And you can clearly see the difference in the approach of DK as well, because he was complementing very well along with his opening partner Mimran. Both were very destructive at top of the order, but now since he has lost his partner, obviously he doesn't have that better understanding with Kaleem, and Kaleem obviously is struggling at the other end, so it's creating more pressure on the captain. The length was quite full there, but I think the pace was a little bit higher, and that really surprised DK. That is why he wasn't able to connect it properly. And the man on screen, Kaleem, also. This time he is connected, low full toss, and he smacked it for maximum. Much relief for Kaleem. First maximum to his name. Well, he missed out on 2 occasions earlier in this over. Wasn't going to miss out on that. Farhad once again was hoping that he can bowl a dot ball, but this time Kaleem was waiting for that length. Wasn't much movement inside the crease. Just went full on with that stroke and got the desired result in his name. Once again, low full toss on outside the off stump, but on that occasion Kaleem was absolutely ready. He read the pace well. Swing and a miss again. Dot ball again. What an over. Just 8 of it. Top job by Farhad. It's 3 gone. Malir Malangs 1 for 29. Just gave 15 runs in his 2 overs. Farhad, that can well and truly turn out to be the match-changing spell as well for Clifton Popular. But to find out more, we'll have to ask Rana Ashfaq alongside Asif Bukhari to describe the remaining 3 overs of this innings in the commentary box. बहुत शुक्रिया ज़िशान और फ़र्रुख. ये KTPL सीज़न 3 की कवरेज जो कि पूरी दुनिया में जा रही है. 84 से ज़्यादा चैनल्स जो हैं वो हमें ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और ये प्रोडक्शन है जियो सुपर की, और बेहतरीन अंदाज में फ़र्रुख, रेहान और उनकी पूरी टीम, जो कैमरा क्रू है, हमारा टेक्निकल स्टाफ है, कमेंट्री टीम है, उनकी बड़ी ज़बरदस्त ये मेहनत है. और ये पॉइंट्स टेबल पे मलीर मलंग्स 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पे हैं, 8 पॉइंट्स पे हैं. गौहर 6 पॉइंट्स हैं. दबंग्स एंड नवाब्स के 4 पॉइंट्स हैं. क्लिफ्टन और लेजेंड्स के, जबकि जवान्स और नाइट्स को अभी अपना अकाउंट खोलना है पॉइंट टेबल पे. फरहाद जिन्होंने 15 रन देकर एक खिलाड़ी आउट किया है, 3 ओवर्स के बाद 29 रन, 26 रन का जिसे कहना चाहिए एक तरह से स्कोर है. और अभी भी 3 ओवर्स बाकी हैं, क्योंकि 3 रन की बर्तरी इनके खिलाफ हुई थी पॉपुलर्स को. डीके और कलीम विकेट पे मौजूद हैं, और आसिफ बुखारी मेरे साथ मौजूद हैं. खुश आमदीद. थैंक यू सो वेरी मच. और बिल्कुल जनाब, कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का 3रा सीज़न जो है अपने तमाम रंग रनाइयों के साथ यहाँ पर 11वीं रात में दाखिल हो चुका है. और इरफान नोना सरकर्दा गेंदबाजों में शुमार होता है. शॉर्टर बॉल था और बाहर की जानिब गेंद को निकालने में कामयाब. दाऊद ने बॉल को छोड़ा और अंपायर की जानिब से वाइड बॉल का इशारा दिया गया है. ये गेंद काफ़ी आउटसाइड दी ऑप्शन थी और उठती हुई विकेट कीपर के पास गई. मार्जिन ऑफ एरर या जिसे कहना चाहिए चूकने के इम्कानात बहुत ही कम हैं. जब भी आप ज़रा सा अपनी लाइन और लेंथ से भटकते हैं तो वाइड बॉल करार दी जाती है. ये खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की वनडे, टेस्ट और T20s में इन्होंने यहाँ मौजूद हैं, और इस गेंद को खेलने में कामयाब तो हो गए हैं. गो के बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि पुरएतमाद या इत्मीनान से भरा स्ट्रोक नहीं था. 1 रन मिला फिर भी फाइन लेग की जानिब. बिल्कुल मलीर मलंग्स को ये एडवांटेज हासिल है कि टॉप स्कोरर जो हैं टॉप 5 में, वहाँ पर दाऊद पठान मौजूद हैं और सादिक मोहम्मद, लेजेंडरी ओपनर पाकिस्तान के फॉर्मर, हारून रशीद जो कि पाकिस्तान के लिए खेले 79 में. बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि इकदाम है या कदम है ज़ोहिर नसीर साहब का और KTPL की इंतज़ामिया का. एक और अच्छी गेंद, इस मरतबा गेंद गई विकेट कीपर के पास
और बैट्समैन को वापस आना पड़ेगा क्योंकि गेंद विकेट कीपर के पास आई है उनके बैट को छूकर और इस तरह क्लीन आउट हो गए हैं और एक और नुकसान हो गया है यहाँ पर मलीर मलंग्स को। बिल्कुल यहाँ पर जो है उठाकर खेलना चाहते थे, इससे पहले भी फुल टॉस बॉल था, नहीं खेल पाए थे ठीक तरीके से और यहाँ पर कलीम मुल्तानी जो है इस मैच में नाकाम रहे हैं। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी की गई है उनकी जानिब से। मैं ये बात बताना चाह रहा था कि इमरान खान जो है वाहिद खिलाड़ी हैं KTPL में इस सीज़न में जिन्होंने 400 से ज़्यादा रन्स बनाए हैं और यही लग रहा था कि जिस दिन वो आउट होंगे तो मलीर मलंग्स जो है उसको ज़रूर टेस्टिंग टाइम होगा और ऐसा ही कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। चौथा ओवर चल रहा है और बोर्ड पर रन्स बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, 32 पे 2। तमाशाई बड़ी अच्छी तादाद में अब आने लगे हैं DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में। अच्छा आसिफ, ओवर द ईयर्स आप कवर करते आ रहे हैं ट्रेप बॉल क्रिकेट को, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पिछले 10-15 साल में कौन से ऐसे बॉलर्स देखे हैं जिन्हें आप कैटेगराइज करना चाहेंगे नंबर 1, नंबर 2, 3 एंड 4 पे? देखें, जब बॉलिंग की बात की जाएगी तो ज़हीर कालिया जो है उन्होंने डोमिनेट कर रखा है। अभी तक इस सीज़न में वो आए नहीं हैं और इस गेंद के बाद जो है हम बात जारी रखते हैं। अबैदुर रहमान ने अपनी पहली गेंद को खेल दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 1 रन मिलेगा। सबसे पहले तो ज़हीर कालिया जो है वो आते हैं और इरफान ओना जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये पिछले 2 साल में ये सामने आए हैं। फरहाद खान अब्दाली 2017-18 में उन्होंने जो है वो डेब्यू किया मेन पेज पर जो है। आसिफ खान जो है वो एक गेंदबाज जो है यहाँ पर कर रहे हैं। 2017 में पीफा मेहरान का एक टूर्नामेंट उन्होंने वहाँ पर जो है वो डेब्यू किया। एनीवेज बॉलर जो है वो कुछ सीज़न के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, लेकिन ज़हीर कालिया जो है वो ऐसे एक शानदार गेंदबाज हैं जिन्होंने सल्तनत कायम कर रखी है। इस गेंद को ऊंचा खेले और गेंद वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर गिरी, खूबसूरत छक्का इस मर्तबा दाऊद खान का। हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात जो है वो लेंथ से चूक गए थे और एक ऑफर किया गया था बॉल और कोई गलती नहीं की गई वहाँ पर कप्तान की जानिब से और बुलंदोबाला जो है वो छक्का हासिल करने में कामयाब और इसकी ज़रूरत थी क्योंकि रन्स आना बिल्कुल भी रुक चुके थे। आसमान को छूता हुआ बिल्कुल बाउंड्री के पार। इस मर्तबा भी गेंद को उठा दिया बड़े जोरदार अंदाज में, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, दूसरा मुसलसल छक्का। हाँ जी बिल्कुल, इस तरह की ही बल्लेबाजी जो है वो की गई है दाऊद पठान की जानिब से, जो कि पहले भी मैंने बताया है कि टॉप 5 में। और ये देखें कितनी खूबसूरत टाइमिंग जो है यहाँ पर की गई है और अब की बार एक दफ़ा फिर इन्होंने ने गलती की है और ये लोअर फुल टॉस था, बिल्कुल पनिश किया गया है दाऊद पठान की जानिब से। 45 पे 2, चौथे ओवर का खेल जारी है। दाऊद पठान अब बड़े अच्छे अंदाज में 27 के इनफरादी स्कोर पर पहुंच गए हैं। लेग स्टंप से बाहर रन्स मिलेंगे। इस ओवर में रन्स बड़ी तेजी के साथ आ रहे हैं और स्ट्रेंथन होती हुई पोजीशन कहीं ना कहीं यहाँ पर मलीर मलंग्स की, क्योंकि अभी भी 44 रन हुए हैं उनके इफेक्टिवली, 13 गेंदें बाकी हैं, तो अभी भी इनके पास मौका है कि इस टारगेट को जो है वो 90 के करीब, इवन 95 के करीब भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल राना साहब, मैं ये समझता हूँ कि 5 आउट ऑफ 5 मैचेस जो है वो मलीर मलंग्स ने जीत रखे हैं, लेकिन अगर ये मैच लूज़ भी कर जाते हैं क्योंकि उनकी पोजीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, यहाँ पर मुस्तहकम नहीं है, लेकिन ये मैच हारने की एक वेकअप कॉल ज़रूर हो सकती है। सो जो मलीर मलंग्स स्पेक्टेटर्स तो ऐसा नहीं चाहेंगे। इस गेंद को हवा में उठा दिया, क्या गेंद अंदर रहेगी या बाहर जाएगी? लेट्स सी, फील्डर के हाथों में, और कोई गलती नहीं की यहाँ पर फहद मियां चन्नू ने, कैच करने में कामयाब हुए। इस तरह दाऊद खान 2 छक्के लगाकर इस ओवर में, इस ओवर की आखिरी गेंद पर अपनी विकेट गंवा बैठे। हाँ जी बिल्कुल, जब रन्स आ रहे थे और यहाँ पर एक और छक्का लगाना चाहते थे, सो यहाँ पर फहद मियां चन्नू की जानिब से पिछले इनिंग्स में भी आपने देखा था कि एक कैच ड्रॉप हो गया था, लेकिन उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल बॉल को जाकर नीचे से रोका और कैच लिया। यहाँ पर भी फहद मियां चन्नू ने एक और ज़बरदस्त जो है वो कैच लिया है और इस तरह खूबसूरत अंदाज इरफान नोना का, कप्तान को जाना होगा 12 गेंदों में 27 रन बनाने के बाद। जी हाँ, इनको देखकर कॉट्रेल याद आते हैं वेस्ट इंडीज़ के, जो सल्यूट करते हैं विकेट लेने के बाद। इनका भी कुछ ऐसा अंदाज है। और एक और बड़े ज़बरदस्त बॉलर ट्रेप बॉल क्रिकेट के शाहजहां को हम देख सकते हैं कि दरमियान में मौजूद हैं और इस टूर्नामेंट का हिस्सा भी हैं। इन्होंने भी ओवर द ईयर्स बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रखी है मुख्तलिफ जगहों पर, हर मैदान में बल्कि कहना चाहिए। अच्छा, अभी फहद ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा और एक जो इस टूर्नामेंट में महसूस किया, मैंने नोटिस किया कि कैचिंग कोई बहुत अच्छी
नहीं है फील्डर्स की। तो आपको अगर मैं टॉप के 4-5 फील्डर्स हमारे देखने वालों को आप बताएं, आपसे मैं इस्तिफादा इसलिए कर रहा हूं कि आपका बहुत तजर्बा है इन मैदान में, तो क्या कहते हैं कौन ऐसे 4-5 फील्डर्स हैं? देखिए ये अनफॉर्चुनेटली हकीकत है जो आप बात कर रहे हैं कि टेबल क्रिकेट में जो खिलाड़ी हैं वो कैचेस लेने में कुछ ज़्यादा अच्छी शोहरत नहीं रखते हैं। और अजीज़ अहमद कांदरो जिनको झूमर माना जाता है सिंध टेबल क्रिकेट का, और पिछले 2 साल में ये क्रिकेट से ऑफ रहे हैं और दोबारा से वो ट्रैक पर आए हैं, वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अरसलान अच्छी बट जो कि नेशनल बेसबॉल के खिलाड़ी भी हैं, तो वो नंबर 1 जो है वो फील्डर माने जाते हैं। और मज़ीद डिटेल जो है वो इस बॉल के बाद ताहिर पिंडी को बुलाया गया है। ताहिर पिंडी हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से गेंद करेंगे। तीसरे पावर प्ले का अंपायर ने सिग्नल दिया। अब 5 खिलाड़ी सर्कल से बाहर अलाउड हैं, यानी 5 कंट्री साइडर्स या बाउंड्री राइडर्स आप कह सकते हैं। 4 फील्डर सर्कल के अंदर अब भी रहना ज़रूरी। बड़ी अच्छी गेंद फाइन लेग पे फील्ड हो गई, कोई रन नहीं बन सकेगा। बिल्कुल ये बॉल जो है आगे खिलाया हुआ था और स्विंग भी हुआ है, सो यहाँ पर कोई भी मौका नहीं था बल्लेबाज के लिए, ऐसी बॉल की तवक्को नहीं कर रहे थे। और फील्डर की बात की जा रही है तो अरसलान अच्छी बट बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और कैचेस पकड़ कर वो ये समझते हैं, रन्स रोक कर वो समझते हैं कि टीम को जितवाने में बड़ा किरदार अदा रहता है, और वो करते भी रहते हैं कुछ ऐसा। एक बार फिर बैट थ्रो किया, थोड़ी सी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और उनके बैट को छोड़कर विकेट कीपर के पास गई। और इसके अलावा फ़ख्र एशिया के नाम से मशहूर खुरम चकवाल की बल्लेबाजी के तो चर्चे हैं ही, लेकिन जब वो फील्डिंग में होते हैं तो बहुत ज़बरदस्त फील्डर माने जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करके बॉल तक पहुंचने की कोशिश कामयाब रहती है उनकी। सो दूसरे नंबर पर जो है वो मैं खुरम चकवाल का नाम लेना चाहूँगा। और इसके अलावा बहादुर लेफ्टी बड़े ज़बरदस्त जो है वो फील्डर माने जाते हैं। KPK से जो फील्डर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे कैचेस पकड़ लेते हैं। ऑफ स्टंप से बाहर फिर बैट थ्रो किया। ताहिर की बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, 6 ओवर के फॉर्मेट में टेप बॉल में 3 डॉट्स मुसलसल करना यकीनन एक तरह से सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट है। पिछली इनिंग्स में आपने देखा था कि इमरान जब बॉलिंग कर रहे थे और लेग स्पिन सामने जो है वो लीडिंग रन मेकर इमरान खान थे, तो उन्होंने भी 4 गेंदें जो है वो ऊपर तले डॉट ज़रूर की थी और उसी बुनियाद पर उनको दूसरा ओवर दिया गया जो कि काफ़ी महंगा रहा था। सो ताहिर पिंडी अभी तक शानदार गेंदबाजी करते हुए। अंपायर ने इस दौरान कुछ सिग्नल किया, शायद कुछ मूवमेंट थी बैक एंड ऑफ द ग्राउंड। 47 रन, 3 खिलाड़ी आउट। इस वक्त मजमूई स्कोर 44 इस वक्त जो है वो इफ़ेक्टिव स्कोर है मलीर मलंग्स का, जो अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं इस इवेंट में। दूसरी जानिब 2 फतुहात हैं यहाँ पर अब तक पॉपुलर्स की, वो अपनी तीसरी फतह की तलाश में हैं और अब तक इस मैच में उन्होंने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है अगर मुआवजना करें। आइए नीचे हम डाउन स्टेयर्स चलते हैं, वहाँ पर हमारी साथी हिना मौजूद हैं, देखते हैं कि उनके साथ कौन है। थैंक यू सो मच। वेल, क्लिफ्टन पॉपुलर और मलीर मलंग्स के दरमियान एक ज़बरदस्त मैच जारी है, लेकिन इस वक्त ऑन द साइड लाइन्स विद मी इज़ पाकिस्तान प्रोमिनेंट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की फेस जो है वो मिस ज़ेबा शहनाज। मैडम थैंक यू सो मच आपने मेरा नाम फॉर जॉइनिंग अस। मैम वो दूसरी ज़ेबा भी है ना, उनका नाम मेरे मुंह में आ रहा था। वेल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मैम। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी क्रिकेट को बहुत पसंद करती है। एग्जैक्टली, बहुत हम लोग पसंद करते हैं। बल्कि मैं आपसे कहूँगी कि इस वक्त जो पाकिस्तान में ये जो KTPL ने शुरू किया ये तो अमेजिंग है, इतना ज़बरदस्त काम है। मैं उनको सलाम करती हूँ। मैं अपनी जो मलीर मलंगा वाले हैं उनको सपोर्ट करने आई हुई थी। ओके, मलीर मलंग्स की फैन है आप? बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त, क्योंकि इसमें जो बच्चे आए हुए हैं ना वो पूरे पाकिस्तान से बच्चे लिए गए और उनकी क्या ख्वाहिशें थी। और ये जो टेप बॉल वाला काम है ना, मैं तुम्हें मज़े की बात बताऊँ, मैं स्टूडेंट लाइफ में क्रिकेट खेली हूँ। अरे वाह, अमेजिंग। और पाकिस्तान में ये है कि टेप बॉल जो है वो हर जगह, हर तरह टेप बॉल, और उनको रास्ते नहीं मिलते थे। तो माशाल्लाह ये ज़हीर भाई ने, जो ज़हीर नसीर है, उन्होंने और इन लोगों ने सब ने मिल के, सादिक भाई हैं, जावेद हैं, हारून रशीद हैं, तो आई नो दैट एवरीथिंग अबाउट दिस। क्या बात है, तुम सवाल ही नहीं करोगी, मैं खुद ही तुम्हें जवाब दे रही। बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसी गेस्ट चाहिए जो खुद से एक्सप्रेस कर सके। और
मली मलंग की परफॉर्मेंस वैसे कैसी लग रही है? जबरदस्त जबरदस्त, ये लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। हाँ, और देखिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के लोग हैं, लेकिन उनके दिमाग कितने मिलते हैं, सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो मेहनत कर रहे हैं। और हमेशा ज़िंदगी में अल्लाह का वादा है ना कि आप मेहनत करोगे तो आपको ज़रूर उसका सिला मिलेगा। तो ये लोग मुख्तलिफ शहरों के ये बच्चे हैं और इनको जो सपोर्ट मिली है और इनको मजबूत किया गया है, तो वो अपनी जी जान लड़ा के खेल रहे हैं। ये तो पाकिस्तानी कौम की बात है ना कि अगर इसको जी जान पे लड़ा दो तो फिर सब लग जाते हैं, जहाज पे भेज दो कर लेंगे। बिल्कुल मैम, ऑल्सो यहाँ के अरेंजमेंट्स को देखकर बाकी जो फैंस घर पे बैठ के टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे कि आके यहाँ पर एंजॉय करें मोइन खान मेरा अकेडमी बच्चा, ये जो जगह बनाई है ना मोइन भाई ने, अल्लाह रब्बे करीम पाकिस्तान में ऐसे बेटे बनाए जो मुख्तलिफ जगहों में इस तरह का अवेयरनेस और इस तरह की जगह दे। अल्लाह करे पाकिस्तान के कई बेटे जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको चाहिए वो इस तरह की जगह बनाएं जहाँ लेडीज़ हो जेंट्स हो, बिल्कुल घर जैसा माहौल है, आए खेलें भी, खेल देखें भी, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में शिरकत करें। ये बहुत बड़ा काम मोइन ने किया है। और मोइन ही जैसे मैं उम्मीद रखती हूँ कि हमारे क्रिकेट ही के लोग हैं जिनको अवेलेबिलिटी है, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ऐसे ग्राउंड बनाएं जाके वहाँ लड़कियों और अच्छा, अभी मैं तुम्हें एक और खुशखबरी सुनाऊँ कि बहुत जल्द खवातीन की टीम का काम शुरू होने वाला है। क्या बात है, मेरे ख्याल से लास्ट डे एग्जीबिशन मैच भी होगा। और मैं जेलस हो रही हूँ, पूछो क्यों? आप टीम में नहीं है? नहीं यार, मैं इतनी मैं बड़ी क्यों हो गई? मैं रुकी रहती बन सकती है ना? नहीं, मैं रुकी रहती। उसमें क्या होता कि आज मैं उस टीम में होती, क्योंकि जब हम खेलते थे हम भी टेप बॉल खेलते थे, लेकिन उसमें क्या होता था कि हमारे घरों से बड़ी मुश्किलात होती थी। हमारे अम्मी अब्बा रोक रहे होते थे, नहीं भाई गली में नहीं खेल सकते, लड़के हैं ये। अब आप देखें आज की लड़कियों की खुशनसीबी जो टीम आ रही है, उसके लिए इन लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी जगहें, यानी उनके माँ बाप को चाहिए बेटियों में अगर है ना क्रिकेट खेलना तो खेलने दें, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी सेफ्टी का इंतज़ाम है, उनके लिए सिक्योरिटी इतनी अच्छी है। ये खुशनसीबी है हमारी बेटियों की, जो आज की बेटियां, उनको हर जगह, जैसे अभी आप आज खड़ी हो, हम लोग इस तरह नहीं खड़े हो सकते थे, हर जगह। और अब ये जो क्रिकेट में आएंगी लड़कियां, जाहिर है क्रिकेट के लिए तो फिर गलियों में खेलना पड़ता है और टेप बॉल है, लेकिन ये सारी जो फैसिलिटीज़ KTPL कर रहा है माशाल्लाह ज़बरदस्त। हम लोग के जैसे क्रिकेटर थोड़ा खार भी खाएंगे लेकिन शरीक हो जाएंगे आपके साथ, कोई बात नहीं। और लड़कियों को मैं कहूँगी आप जी जान से खेलें, और उनके माँ बाप से कहूँगी कि देखें बेटियों पे एतमाद करें। बेटी जिस शोबे में जाना चाहती है, अगर बैंकर बनना चाहती है बैंकर बनने दें, एक्टर बनना चाहती है बनने दें, इसी तरह खेलना चाहती हैं तो आप प्लीज़ उनको खेलने दें। जब इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, ऐसी फैसिलिटीज़ तो बाहर के ममालिक में नहीं होती जो KTPL ने की है। माशाल्लाह ज़बरदस्त KTPL, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। और लड़कियों के वालिदैन को स्पेशली कहूँगी कि खाला मामू चाचा की बातों में नहीं आना, है तुम्हारी बेटी क्या करी, ना बिल्कुल नहीं आना। आपने अपनी बेटी को मजबूत करना और मजबूत बनने देना है। इतनी बेटी मजबूत हो जाए कि बेटों से आगे जाए माशाल्लाह। तो फिर आप लोग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल। क्या फायदा तुम खड़ी हुई, मैंने खुद ही बहुत अच्छा लगा मैम आपकी बातें सुनकर। अब चले कॉम बॉक्स में जाने वापस चलते हैं। चलो आओ। बहुत शुक्रिया हिना। और इस दौरान बड़ा खूबसूरत शॉट उबैद का, और गेंद बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए एक छक्का इससे पहले अजीज़ ने भी लगाया। हाँ जी बिल्कुल, अजीज़ कांद्रो एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग जो है वो रखते हैं और लोग उनको देखना चाहते हैं। सो छक्का लगाया गया है यहाँ पर उनकी जानिब से। इस गेंद को हिट करने में कामयाब हुए हैं। गेंद पहुंची बाउंड्री पे, फील्डर वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने बॉल करने के अंदाज में थ्रो किया और 1 रन का इजाफा और हुआ। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो मलीर मलंग्स की जानिब से जो लीड है वो 57 तक पहुँची है। सो बिल्कुल भी ज़्यादा ये रन्स जो है वो नहीं कहे जा सकते। जो एक रेपुटेशन बिल्ड की गई थी 5 आउट ऑफ 5 मैचेस जीत कर, और इस छक्के के साथ जो है वो 64 तक सफ़र पहुँचा है। सो कांद्रो यहाँ पर वाइड बॉल का इशारा है। इमरान बिल्कुल भी कतई नाखुश हैं और बड़े अच्छे ये गेंदबाज हैं, लंबा कद है इनका और मुश्किल गेंदबाजों में इनका शुमार होता है। चकवाल से ताल्लुक़ है। सो कांद्रो एक दफ़ा फिर सामना करने के लिए तैयार हैं और बिल्कुल अब रूम बना कर खेलना चाहते थे, लेकिन अब ऑफ साइड पर एक और वाइड बॉल। जी आखिरी बॉल जो है वो काफ़ी वक्त ले रही है लीगली होने में। 2 वाइड्स मुसलसल की हैं, 4 रन्स कंसीड कर दिए हैं। अजीज़ कांदड़ो एक छक्का लगाकर 8 रन पर नॉट आउट हैं। 11 रन पे उबैद हैं और इस गेंद को ऑफ साइड में हिट आउट किया। अच्छा जारहाना स्ट्रोक और गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर्स बाउंड्री से बाहर, छक्का।
आखिरी गेंद पे कुल मिलाकर 10 रन बने और 77 रन 3 खिलाड़ी आउट पे मलीर मलंग्स ने अपनी इनिंग्स को ख़त्म किया है। इस तरह 75 रन का हदफ दिया है पॉपुलर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, अब की बार जो है वो तेज़ बॉल उन्होंने फेंका था, लेकिन इसी ताक में लगे हुए थे और तैयार थे। सो उसी जगह पर बॉल, ये ख़राब बॉल मैं कहूँगा इसको, और पनिश किया गया। इसको 11 नंबर शर्ट पहन रखी है अजीज़ कांद्रो, काफ़ी मसरूर नज़र आते हैं क्योंकि वापस ट्रैक पर आ रहे हैं एक लंबे अरसे के बाद। सो ये मलीर मलंग्स के लिए भी एक अच्छी बात है। सो यहाँ पर 74 रन की लीड है और 75 रन बनाने हैं। मध्य मुकाबिल टीम देखते हैं कि यहाँ पर अपना तीसरा मैच जीतने में कामयाब रहती है या फिर मलीर मलंग्स जो है एक और फतह अपने नाम करके 6 आउट ऑफ 6 करती है। जी हाँ, अपने फतूहात के सिलसिले को मुसलसल जारी रखना चाहेंगे और तवील करना चाहेंगे मलीर मलंग्स के कैप्टन और उनके क्रिकेटर्स, जबकि पॉपुलर्स चाहेगी कि वो अपना तीसरा मुकाबला जीतें क्योंकि अब तक उन्होंने 4 में से 2 मुकाबले हारे और 2 जीते। ये हाइलाइट्स हैं इस इनिंग्स की, जहाँ कैच गिर गया था फील्डर से, फ्रंट ऑफ मिड विकेट बड़ा ज़ोरदार शॉट था। ये लॉन्ग ऑन की जानिब उठाकर खेले थे बैट्समैन और गेंद गई थी फील्डर के हाथ में। बहुत उम्दा कैच विकेट कीपर की जानिब से। देन ऑफ साइड में एक बड़ा ही खूबसूरत शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। ये एक और कैच जो विकेट कीपर के पास गया फुल टॉस गेंद पर। कुछ अच्छे स्ट्रोक्स, कुछ अच्छी गेंदें, कुछ अच्छी कैचिंग, तमाम तर इस इनिंग्स का हिस्सा रहा। ये एक और कैच, ये डाउन द पिच आकर गेंद की पिच पे पहुंचकर स्लोवर वन को पिक करके खूबसूरत छक्का अजीज कांदड़ो ने मारा था। और ये ऑफ साइड में आखिरी बॉल पे एक बहुत ही खूबसूरत शॉट जो अब आप देख रहे हैं। स्कोर कार्ड में नुमाया है 27 रन के साथ दाऊद खान, 14 रन पे अजीज रहे और 11 पे नॉट आउट रहे। उबैद 6 ओवर्स में 77 बनाए 3 विकेट के नुकसान पे। पिक ऑफ द बॉलर्स इरफान 2 विकेटों के साथ और 1 विकेट फरहाद को मिली। ताहिर और इमरान विकेटलेस। इस तरह 75 रन का टारगेट है इस मुकाबले को जीतने के लिए। Welcome back. It's going to be Asad, Shah and Fahad Miachanu to open the innings with their big bats in their hands. Clifton Populars need to chase down 75 runs in 6 overs, and a lot will depend on 2 boys on your screen. With me is Zishan. Zishan, what do you make of it? 75 to get in 6 with some big guns to fire. Well, Malir Malangs will be hoping that they can get both these out very cheaply, just like the way they did in the first innings. But I still believe the winning streak can be broken tonight. Clifton Popular have the batting arsenal in their batting lineup, especially these 2 gentlemen, the captain Asad Shah, who is known as Mr. 360 as well. And we have seen the range of shots that he brings in with tape ball cricket. And his partner at the other end, Fahad Miachanu, needs no introduction. He has been simply outstanding in this tournament. He has been one of the tall batters who have taken full use of that reach, and there is no bowler which he hasn't targeted so far. Yeah, and he went very cheaply in the first innings, and this is exactly the start Malangs will be looking for. As we see, Majid Gholi will pick up the bowling, and he has been ever so impressive in this competition, has been Majid Gholi. There you go, start of the run chase.
He's lofted it. It's a skyer. It's high. And it's been accepted. This is the start Malangs were looking for, and it's the captain who is removed very early in the piece of the very first delivery. Well, it's a drama already. If there is any opposition that can curtail the flow of runs in this run chase, it's Malir Malangs with the bowling lineup they have got. It was a nothing shot in the end. It was pitched up. Could have easily tried to muscle it down the ground. Instead, it just picked it up. When you've got the fielders like Mimran and DK out there at the boundary ropes, it's almost impossible to get that away. A golden duck to the captain, Asad. Well, he'll be really disappointed. He needed to fire, which he couldn't. It's not for one. So then 1 wicket down are Clifton Papillars. A nothing shot in the end by the captain. A check drive. Lofted it in the air and caught on the boundary. That brings the new coming batter at number 3. Will be interesting to see who is going to be the new batter. Yeah, rightly pointed out, it was a nothing shot in the end, just a chip in the air, knowing that every fielding side usually keeps that fielder at long on at the start of the innings, because predominantly the batters look to play on the leg side. Could have easily gone with that short over long off, but instead he just decided to chip and ended up losing his wicket. Umar Bajwa, meanwhile, is the new batter in, and he's having a very silent time in this tournament. Can he fire tonight? Well, he too has a very good reputation when it comes to playing tape ball, has Umar Bajwa. Hasn't fired yet. And he wasn't playing in the first couple of encounters as well, was Umar Bajwa. But goalie, all focus is going to be on goalie. He is the main bowler for Malangs. And he's got the wicket of the very first ball. And another one. Oh my word, I thought another one. Would you believe it's been put down? That was a sitter. There you see the disappointment at his face, Majid Goli. That should have been another one. It was a thickish outside edge. There you see big deflection of the bat. I think he jumped a little too early there, the wicket keeper. And then the fielder at short did have the opportunity of taking it in the rebound, which he couldn't. Umar Bajwa, what was he thinking? Majid Goli was rightly so frustrated out there. Could have been his second wicket of second ball. Well, I tell you what, that was a regulation catch. Not accepted by the keeper. Unbelievable. Could have been 2 of 2. What magical bowling by Majid Goli. He's been unstoppable. Drama already in this run chase. Majid Goli, who has been the leading wicket taker in this tournament, has picked up a 5-er as well. Deserved that second wicket. Down the leg side, misfiring it. It went down the leg side, and time for us to go downstairs as well towards Hina Didar, who is out there on the sidelines. Thank you, Zishan. Right now, I have been joined by Test cricketer Khurram Shehzad on the sidelines. Khurram Manzoor, thank you so much for the correction. कैसे हैं आप? ठीक-ठाक इस तरह enjoy कर रहे हैं KTPL को? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। दूसरी बात ये है कि सर ये बता चलूँ कि जिस टीम को मैं सपोर्ट करने आया हूँ, इस इलाके से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, मलीर से, और मलीर मलंग की टीम खेल रही है और इनको सपोर्ट करने आए। और टेप बॉल एक ऐसी क्रिकेट है जिससे हर क्रिकेटर शुरू करता है, तो मैं भी कहा जाए कि मैं भी टेप बॉल की ही पैदाइश हूँ क्रिकेट में। तो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, मेगा इवेंट हो रहा है, और समझ लें टेप बॉल लेवल पे रिवाइव हो रही है क्रिकेट। तो हमें बढ़ चढ़ के सपोर्ट करनी है, और कोई भी टीम हो, ये टीम हो, दूसरी टीम हो, या दीगर इसके अलावा जो 5-6 टीम है, वो सारी टीमें भी अपनी है, सबको सपोर्ट करनी है, बेसिकली क्रिकेट को सपोर्ट करनी है। तो कोशिश कर रहे हैं कि
तो थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि जो भी लड़का आ रहा हो या जो भी अच्छा इवेंट हो रहा हो उसमें जाएं, बढ़ चढ़ के चलें, क्रिकेट को प्रमोट करें ताकि पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाए। खुर्रम, जिस तरह आपने कहा कि मैं आपकी भी मेमोरीज रिवाइव हो रही हैं स्टेट बॉल क्रिकेट लीग में आकर, लेकिन टैलेंट के हवाले से क्या कहेंगे? किस तरह का टैलेंट नज़र आ रहा है मुख्तलिफ टीम्स में? और टेप बॉल वैसे तो बड़े पैमाने पर खेली जाती है, हर स्ट्रीट पर खेली जाती है, टैलेंट को लेकर क्या कहें? और बड़े बड़े नाम हैं, जिस तरह हार्ड बॉल के अंदर बड़े बड़े नाम हैं हमारे पाकिस्तान के लिए, इस तरह पाकिस्तान के भी टेप बॉल के बहुत बड़े बड़े नाम हैं और पूरे पाकिस्तान से यहाँ खेलने के लिए आए हुए हैं, और जिनमें से एक आध को तो मैं भी जानता हूँ और उनकी मैंने बैटिंग वीडियोस वगैरह देखी हैं। तैमूर मिर्ज़ा हो गया, फिर जिस तरह एक है वो फास्ट बॉलर जिनका आपस में इनका बड़ा लगता है। तो 2-3 ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिनकी पूरे पाकिस्तान के अलावा भी डिमांड है। मैं US ओपन खेलने गया था, हमारी टीम है किंग्समैन, तो वहाँ पे एक पार्टिसिपेट करी थी, तो वो बड़े इंटरेस्टेड थे कि हम तैमूर मिर्ज़ा को बुलाएं। तो ये बहुत ऑनर की बात है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को टेप बॉल को वहाँ इनवाइट किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली शायद उसका वीज़ा नहीं लगा तो वो जा नहीं पाया। तो ये खुशी होती है कि पाकिस्तान का नाम कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पे, देखें ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लाइव मैचेस आ रहे हैं और जिस तरह देखी जा रही है टेप बॉल, और टेप बॉल के बहुत अच्छे मेगा इवेंट होते हैं, ये उनमें से एक है। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट को बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है, तो खुशी होती है। अच्छा, टेप बॉल में लोग जो क्रिकेटर्स जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर का अंदाज़ा नहीं होता है कि क्योंकि टैलेंट तो भरपूर है, हर कोई, बहुत से ऐसे अगर आप दिखले तो अच्छे टेप बॉल क्रिकेटर दिखेंगे, लेकिन बहुत कम है जो रिकग्नाइज्ड हो जाते हैं। तो कोई स्ट्रक्चर बनाने में कोई सजेशन देना चाहेंगे कि जो हार्ड बॉल की तरफ नहीं आ सकते हैं, एटलीस्ट कोई ऐसा पाथवे हो कि टेप बॉल में लोग अपना करियर बना सकें? नहीं, देखिए टेप बॉल के अंदर ये होता है, जब आप खेल रहे होते हैं, जब जिस भी टीम में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो छोटी हो बड़ी हो, बेसिकली आपका पर्सनल इंटरेस्ट होता है जो आपने बिहाइंड द कैमरा आपने परफॉर्म की प्रैक्टिस की भी होती है। सेम मेथड हार्ड बॉल का है। तो तैमूर मिर्ज़ा हो गया, ये और भी दीगर बड़े बड़े नाम हैं, कराची के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने भी यही मेथड पकड़ा है। अगर अपना मार्केट बनानी है, बेसिकली मार्केटिंग है, तो आपको ब्रांड को मारना पड़ेगा। अगर आप ब्रांड बनना चाहते हो तो ब्रांड को मारोगे तो ब्रांड बनेगा, ये क्रिकेट की बेसिक है। अगर आप, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप मिचेल जॉनसन को फेस करते हो और आप उसके अगेंस्ट अच्छा स्कोर करते हो तो आपका नाम बनना पड़ेगा। तो इसी तरह टेप बॉल में भी है। तो इसमें वही वाली बात है कि आपने इस टूर्नामेंट से पहले या जो भी टूर्नामेंट खेलते हैं उससे पहले आपने प्रैक्टिस किस लेवल की हुई है, और हर लेवल पे मेहनत पे बैक करती है। तो उम्मीद करता हूँ इनमें से भी नए नए स्टार निकलेंगे जिस तरह ये लोग हैं। Thank you so much for joining us on the sidelines. Now time to go back to Cop Box. While you were having a chat with Khurram Manzoor, we saw a magnificent hit by Fahad Mia Chunnu down towards long off for a maximum. It's 13 for 1 for Clifton Popular. It's still needing 62 more runs to win. Well, Khurram Manzoor was part of Karachi Whites, who won the National T20 Championship last night at National Bank Stadium. So huge congratulations to Khurram Manzoor and his teammates. Fazal Afridi is going to be the bowler. Left arm quickie. And he's got a job to do because they've removed Asad Shah. But still they have to deal with Umar and Fahad. Yes, indeed. 62 is not a big ask in the 5 overs that are remaining in the innings of Clifton Popular. But still, it all depends on how well the bowlers are going to operate from here on. Once again, they have brought in change in tactics. Fazal is bowling the second over instead of Ali Chota. Gets the nick and off the second attempt, takes the catch, does keeper, and it's another one who goes. The wickets are tumbling. It's second one for 13 just. And the misery continues for Umar Bajwa. He cannot believe his luck. Twice he has edged the ball. The first time he was put down, this time getting an inside edge. Another juggle. Mimran taking it in this second attempt. He's having a tournament to forget so far, Umar Bajwa. Once again, couldn't trouble the scorers. In fact, has gone for just one. It's 13 for 2. It's time to go downstairs once again and see this time around who is with Hina. Thank you so much. Well, this time I have been joined by another guest who is Arman Amir Arabi.
CEO Boost Lifestyle. Thank you so much, Arman, for joining us on the sidelines. Enjoying the night, enjoying the match. Everything is going good, alhamdulillah. Everything is going good. So basically, welcome to KTPL. Your thoughts on about this league? It's really well managed. बहुत अच्छा जा रहा है tournament. I think it's a great opportunity to find gems of future cricket, because tape ball, it's the basics of cricket. So yeah. Achha. So I think it's a very well managed. Everything is going pretty good, and I think tape ball, it's the basics of cricket. So it's a great opportunity to find gems like Ashraf. We found him from tape cricket, so it's a good opportunity. Okay, ये बताएं कि मलीर मलंग्स और क्लिफ्टन पॉपुलर्स का मैच हो रहा है, आप किसे सपोर्ट कर रही हैं? I think आज क्लिफ्टन जीतेगा because the target is low, but yeah, they will win, I think. टेप बॉल क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं? वैसे कौन सा आपका फेवरेट प्लेयर है? I don't follow a lot of tape ball cricket, to be very honest, but I've heard a lot about Taimur Mirza. That's the only tape ball cricketer I've heard of, apart from Ashraf. डेफिनेटली तैमूर मिर्ज़ा का सुना है, लेकिन ऐसे बहुत से और दूसरे दीगर फेमस नाम भी हैं यहाँ पर. आप खुद भी खेलते हैं क्रिकेट? Sometimes, occasionally, with family, friends, sometimes, once a month maybe. Thank you so much, Arman, for joining us on the sidelines. Back to Combox. Thank you so much, Hina. Well, there is pretty obvious that whoever knows cricket knows Shahid Afridi, and whoever knows tape ball knows Taimur Mirza. A lot of fan following for that bloke. Goes down the ground, and he goes massive this time. This is a good connection. It's a maximum. It's a very good shot in the end. Once again, playing on the merit. It was pitched up outside the off stump. Look at how low he went and how far that ball went. Well, they need a maximum like that because Fazal was creating that pressure in this over. Well, he got away for a 6, but not only Fazal bowls like Mitchell Stark, but he's also getting the results and rewards in his favor. That delivery in which he got that wicket of Umar Baja was a very good one. Oh, have a look at that. That is off the back of the bat. Down to gully for a single. Wasn't entirely in control of that stroke. And brings Fahad, the big fellow, on strike now. There you see Mr. Ghazanfar as well. One of the managing members in this DHA Sports Club Moin Khan Academy. A very down-to-earth person. And you were talking about Taimur Mirza. Yeah, he's not just a player, he's a brand of tape ball cricket. And it was good to hear from Khurram Manzoor that not only he's had a fan following in Pakistan, but even in US, people want him to draft him in their squad. Incredible. And he richly deserves that. Take a look at his services for the last 10 years or so in tape ball. Just phenomenal. And so is this guy who's been put down at mid-off. What is happening there? We've seen sixes, we've seen wickets going down, and we have seen some simplest of the chances going down. This was Majid Gholi, not happy with himself. Yeah, it wasn't that far away from him, but it was struck brutally by Fahad Mia Chinnu. It was pitched up, just using in hand. It went flat and hard. In fact, he did not even have a chance of taking it in the second attempt because ball deflected off his right hand and went further away from him. But Fahad Mia Chinnu is living dangerously right now. That ball was definitely travelling. Majid Gholi did well to get a hand to that, but it will still go as a drop chance. It's Arbaz who gets the connection, and it's gone many miles. Reliving the memories of what Fakhar Zaman did to Mitchell Stark 2 years ago. Fazal once again bending down, getting closer to the pitch of the ball and dismissing the ball out of his sights. It's the second maximum for the right-hander in this over. And what a way to finish off the over. It's 27 for 2 after 2. Right then, 27 for 2 after 2. Still, they need 48 of 4 overs, which means that run rate of 12 runs per over is not going to be a big ask for these players, especially if Fahad stays
very deep towards this innings. Still no signs of Ali Chota. And I still believe if you need to win the game with not that many runs on the board, you need to bring on your wicket-taking, your ace bowlers as early as possible. Because you never know, if you can get someone like Fahad Mia Chunnu out at this stage, you are right back in the game. Because 48 to get 4 overs remaining, it's not a big ask for a team of the caliber of Clifton Popular. Well, from this end, they are going with the same tactics as they know that Majid Gholi has to finish his stint. Down the leg side, we'll have to re-bowl that. It's time to go to Hina once again on the sidelines. Thank you so much. Well, on the sidelines, I have both the owners of team Clifton Popular and Malir Malangs. Well, on my right standing is Imran Ali Roshan, owner of Clifton Popular, and on my left is Zafar Abbas, owner of Malir Malangs. Let's start from the owner of Clifton Popular. क्या लग रहा है, धक धक वाली सिचुएशन है, लास्ट डिफीट के बाद आप काफ़ी मायूस नज़र आ रहे थे अपने प्लेयर्स के साथ, आज की क्या फीलिंग्स हैं? इंशाल्लाह आज उम्मीद तो अच्छी है और देखें माशाल्लाह एक छक्का लग गया है, उम्मीद अच्छी है अल्लाह ताला की ज़ात से कि आज जो है ये मैच हम ही जो है लेके जाएंगे इंशाल्लाह। 4 ओवर्स बाकी है, कुछ 46 के अराउंड स्कोर करना है, क्या लगता है? 40 रन रहते हैं। यस। और इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये मैच हमारा है। डेफिनेटली। वेल, मलीर मलंग्स अब तक अनबीटन है, क्या आज भी मैच अपने हाथ में ही होगा? इमरान भाई से हमारे 30 साल पुराने ताल्लुकात हैं, 20 साल पुराने, और ये माजा जूस में होते हैं, मैं माजा इंटरनेशनल में होता था, इनसे पुराना रिलेशन है। अगर ये आज का मैच हारेंगे सीरीज से बाहर आ जाएंगे, इसलिए हम चाहते हैं ये जीतें और इस सीरीज का हिस्सा रहें। ऐसे ओनर कहाँ मिलेंगे? अच्छा जी, चले जी, इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जी बिल्कुल इंटरेस्टेड होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा जो है होता रहा है। जफर भाई वैसे अच्छा इंसान है और लेकिन आज मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको हराए। चले, वो वैसे इतने अच्छे ओनर है, वो चाहते हैं कि आप लोगों की टीम जीते आज। कोई शक नहीं, मोहब्बत है। कौन से बैटर से ज्यादा उम्मीद है आज आपको कि मैच जितवाएंगे? बस ये हमारा जो लम्बू है मियां चन्नू, अल्लाह ताला के बाद इसी उम्मीद है कि बस ये इंशाल्लाह खड़ा रहे तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उम्मीद बरकरार रहेगी। ठीक है जफर, आपकी टीम की ऐसी क्या खास बात है कि आज तक मैच जीतते हुए आ रही है और आज कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही है? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। देखें, आज का मैच हमने अपने तमाम प्लेयर्स को, जो नीचे प्लेयर्स थे, उनको ऊपर लेकर आए क्योंकि हम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और इनसे वाक़ईन हमारे पुराने ताल्लुकात हम चाहते हैं आए, तो इसलिए आज हम खुद से 1-2 स्टेप पीछे चल रहे हैं। Thank you so much for joining us on the sidelines. Well, both the owners are very positive for their win, but let's go back to the com box. Thank you, Hina. Both the owners look positive, and in the middle, the boys are looking positive too. It's Gholi this time who deceives the batter. Well, he's not happy, Majid Gholi. You can see that on his face as well. While Hina was having an interview, another live was given to Fahad Mia Chunnu by the wicket-keeper. It has been a strange sort of an innings, strange sort of a trenches this for Clifton Popular. It's 36 for 2, they still need 39. There you see the sketch of Mr. Zafar Abbas. It has been drawn by Umaima. She's a fan of Mr. Zafar Abbas, and not only she, well, he's got so many fans around the city. And what about that stroke? It's miles in the air, and it's been dropped. Would you believe how many catches are going to go down? Probably this is the first time in the tournament we are seeing Malir Malangs dropping that many chances. Bright smile on the face of the mentor of Karachi Popular, Mr. Hassan Raza. But clearly, it's a disappointing effort in the field from Malir Malangs. It's the second opportunity that has been given to the batters in this over alone. First it was Fahad Mia Chunnu, now it's Raza. Once again, two fielders trying to converge, not calling, and ending up putting down a sitter. Well, he should have held that. Just couldn't grab it. Got to his hands, but couldn't control it. Fahad is going to be on strike. Here goes Majid Gholi. Nicely bowled. Yorker. Will only be a single to covers. Singles are not going to do many damage to the bowling side, so it is good by the bowling perspective that Majid Gholi is getting it right, even after not, accepting those chances as fielders, which have been provided, which have been exerted by him. So it's good for him.
Yorkers are always a go-to delivery for any fast bowler, but I think Majid Goli's Yorker has been so hard to put away. Whenever he has tried to deliver them, he has usually reaped the rewards. He was very unlucky that the 2 catches were put down in this over, but he can make an immense, he can make a comeback by picking up a wicket in this last ball. But last ball has been tonked. And powerfully enough, over mid-off for yet another maximum. What a way to finish the over. Arbaz. Commentator's curse, once again trying to attempt a Yorker, this time just missing his length. And look at that bat swing, look at that hands power from Arbaz. Just clearing the fielder at long off. It's the 3rd maximum for the youngster. And he knew straight away that he's got enough bat onto it as well. Look at the confidence on the youngster's face. Perfect way to end the over. It's 44 for 2 after 3. And it's time to have a change in the voices. To take you through to the end of this innings, it's going to be Yahya Hussaini alongside Kainat Imtiaz. हमारे पास भी है ना पता कोई नहीं वाकई कंडीशन इधर और एक बेहतरीन शॉट फाहद की जानिब से और ये बहुत ही दूर जाके छक्का गया है, बहुत दूर छक्का गया है। बिल्कुल रेडी थे या ये इस बॉल के लिए। बिल्कुल ठीक कहा कायनात आपने, और वो तो आपने सुना ही होगा, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे और ख़ुद को भी कुछ मरने का शौक़ था। तो मलंग जो है उनका बिल्कुल भी आज मूड नहीं है मैच जीतने का, और उनके ओनर जफ़र अब्बास थोड़ी देर पहले हिना को कह रहे थे साइड लाइन पे कि कोई चांस नहीं है गुलशन पॉपुलर का। वो 3 लगातार मैच हारे हैं और अगर आज भी हारे तो यहाँ से वो सीधा घर जाएंगे। तो उनकी ख्वाहिश है कि आज गुलशन पॉपुलर जो है वो जीते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं मलीर मलंग वाले। क्लिफ्टन पॉपुलर, चले कोई भी बात है, पॉपुलर तो है ना। जी बिल्कुल, लेकिन मलीर मलंग की स्पेशलिटी रही है पूरे टूर्नामेंट में कि वो आखिरी इनिंग में बाउंस बैक करते हैं। बिल्कुल बाउंस बैक कर सकते थे, लेकिन इतने कैच छोड़ेंगे और झोली भर के छोड़ेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। और एक और छक्का इसी दौरान। बिल्कुल यही बात है, और 18 रन रह गए हैं सिर्फ क्लिफ्टन पॉपुलर को जीतने के लिए। दोबारा बैकफुट पे जाके पूरे तरीके से इस शॉट को पुल किया था। एंड इट्स टाइम कि हम देखें हिना दीदार किसके साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच कायनात। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है क्लिफ्टन पॉपुलर के कैप्टन असद शाह, और इस वक्त क्लिफ्टन पॉपुलर के डगआउट पे बड़ा जश्न मनाया जा रहा है और मैच जो है वो काफ़ी सेंसेशनल हो गया। 18 रन रिक्वायर्ड है, तो कैप्टन से पूछते हैं आप कितना प्रेशर फील कर रहे हैं टीम के लिए। 18 रन रिक्वायर्ड हैं और 3.3 ओवर्स हो चुके हैं। जी बिल्कुल, अभी तो माशाल्लाह से सूरत बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, तकरीबन जीत के करीब ही है। थोड़ा चेसिंग करना इस ग्राउंड में मुश्किल है। हमने आज ये फैसला किया था कि चेस में जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह इस वक्त पोजीशन अच्छी जा रही है, तो इंशाल्लाह जीत के करीब है। फहद और अरबाज क्रीज पर है, कितना कॉन्फिडेंस है उन पर? जी माशाल्लाह, फहद भाई लीडिंग रन स्कोरर है सीमेंट को, और अरबाज माशाल्लाह दोनों आउट क्लास खेल रहे हैं। इंशाल्लाह बस कुछ रन चाहिए, इंशाल्लाह जीत के करीब है। इंशाल्लाह जीत के करीब है। थैंक यू सो मच असद ज्वाइन करने का। वेल इट्स टाइम टू गो बैक टू कॉम बॉक्स। असद जो कि क्लिफ्टन पॉपुलर के कप्तान थे माशाल्लाह, और इंशाल्लाह के साथ इस मैच में जीत की तरफ गामजन है, और इसके लिए उनको मुकम्मल तौर पर शुक्रगुजार होना होगा आज मलीर मलंग के मलंग फील्डर्स का, जिन्होंने झोली भर भर के आज इनके कैच छोड़े हैं। आपने वैसे कभी कोई ऐसा मैच खेला जिसमें बहुत ज़्यादा कैच ड्रॉप हुआ? हमने एक मैच खेला था साउथ अफ्रीका में, जिस गेम में हमारे बहुत इजी कैचेस ड्रॉप हुए थे। तकरीबन 5 कैचेस एक ही मैच में ड्रॉप हुए थे एंड अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका से और कैचेस ड्रॉप होना, फिर कुछ बचता नहीं है मेरा ख्याल है। बिल्कुल ऐसा ही था और वो मैच हम हार गए थे अनफॉर्चुनेटली।
तो 4 ओवर का खेल अपने अख्ताम को पहुंचा और सिर्फ 14 रन की ज़रूरत है 12 गेंदों पर। इक्वेशन बहुत सिंपल है कायनात, और यहाँ से कोई जादू ही होगा जो कि क्लिफ्टन पॉपुलर की जीत का रास्ता रोके, अदरवाइज तो ये केक वॉक है। बिल्कुल इसी तरह से है, और अरबाज ने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया है अब तक क्लिफ्टन पॉपुलर्स के लिए। असद इस गेम में नहीं उस तरह इफेक्टिव रहे, लेकिन उनकी जगह अरबाज को थोड़ा आप भी टेप बॉल से क्रिकेट खेली होंगी, लेकिन ये जो बैट आपने देखे हैं, आपको लगा कुछ डिफरेंट है ये बैट? हाँ जी, डेफिनेटली ये डिफरेंट हैं, क्योंकि थोड़े से कर्व्ड हैं, थोड़े से विथ वाइज बड़े हैं, तो मुझे तो ज़्यादा टाइम मिल जाता है। काफी बड़ा है इनका ब्लेड भी, बैट्स का जी बिल्कुल, उसी के बारे में बात कर रही थी कि ब्लेड उनका थोड़ा वाइड है और थोड़ा सा लंबा भी है। उसके अलावा लॉन्ग हैंडल बैट्स होते हैं इनके, क्योंकि इन्हें नीचे से बॉल को ज़्यादा लिफ्ट करना होता है। सो डेफिनेटली चेंज तो है बैट में बहुत ज़्यादा। पतले भी होते हैं, वेट भी इनका काफ़ी कम होता है। मैंने सुना कि कोकोनट की ये बैट लेकर आए हैं आप। टेप बॉल में बहुत ज़्यादा कोकोनट बैट का जो है वो इस्तेमाल है, उससे बॉल का जो बाउंस है वो और आगे जाता है जब बैट से टकराता है बॉल। मैंने भी इसी तरह से सुना है कि पावरफुल स्ट्रोक्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा इस कोकोनट की जो बैट्स हैं, कोकोनट बैट्स जो। अली छोटा नए ओवर के साथ, इनकी ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, और अंपायर डेफिनेटली इस गेंद को वाइड का इशारा देंगे। तो 14 रन बाकी हैं और यहाँ पर अली छोटा ने वाइड कर दिया है। इन्होंने और इक्वेशन को मजीद सिंपल कर दिया है। अली छोटा का यहाँ पे एक डिस्ट्रक्टिव ओवर की ज़रूरत है इस वक्त मलीर मलंग को, जिससे वो 12 रन से अगर मैच जिता सकें तो इस वक्त हीरो बन जाएंगे मलीर मलंग्स के लिए। 63 for 2। तो कायनात में बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि कोई बहुत ही कुछ आउटस्टैंडिंग हो जाए, डबल हैट्रिक हो जाए, अदरवाइज तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि क्लिफ्टन पॉपुलर के रास्ते में कुछ हर्डल हो। अली छोटा एक मर्तबा फिर तैयार हुए और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद, जिसको उठा दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर पर छक्के के लिए। जब इतने कम रन हो तो डेफिनेटली बैटर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इन्होंने पूरा फ्रंट फुट अपना यूज़ करके और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शॉट खेला है। बहुत ही मुश्किल शॉट है ये क्रिकेट का, और बहुत ही इजीली इस वजह से, क्योंकि बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप थी कम्प्लीटली। पूरा वेट उन्होंने अपना शिफ्ट किया इस शॉट को खेलने के लिए, और घुटने के बल बैठे और शॉट को मुकम्मल किया, और इस बार ऑन साइड पर बैक टू बैक बाउंड्री एंड दैट्स इट। यूं ये मैच मलीर मलंग की नाकामी के साथ अपने अंजाम को पहुंचा। क्लिफ्टन पॉपुलर 1 by 8 विकेट्स। ग्रेट इनिंग्स बाय क्लिफ्टन पॉपुलर। इनके पास भी वह कैपेबिलिटीज़ हैं जो एक जीतने वाली साइड में मौजूद होनी चाहिए, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग बाउंस बैक है ये क्लिफ्टन पॉपुलर्स की तरफ से। मलीर मलंग्स को अगले मैच के लिए और ज़्यादा सोच के आना होगा, क्योंकि इस मैच में थोड़ी लैप्सेस थी, और ये देखें कितना खूबसूरत फ्लिक किया है इन्होंने। एलिवेशन की बहुत दाद देनी होगी कि एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल। बिल्कुल कायनात ने ठीक कहा, इस फ्लिक को करने में उनकी मजबूत कलाइयों ने भरपूर किरदार अदा किया। और ये मैदान का मंजर जहां क्लिफ्टन पॉपुलर की इस जीत के ऊपर जो चाहने वाले हैं क्लिफ्टन पॉपुलर के, वो इस वक्त दीवानावार मैदान में दाखिल हो गए हैं, रक्स कर रहे हैं। अपनी टीम के खिलाड़ियों को उन्होंने कंधों पर उठा लिया है, और इस जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्लिफ्टन पॉपुलर की टीम को, क्योंकि वो मुसलसल 3 मैच हार गए थे, और इस मैच को हारने की सूरत में उनके लिए टूर्नामेंट क्लोज हो जाता, दरवाजे बंद हो जाते। लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीदों को आज की जीत के साथ रोशन रखा है। बिल्कुल स्टिल एन ओपन कॉन्टेस्ट, और सारी टीम्स के लिए ये अभी भी कॉन्टेस्ट ओपन है। कोई भी टीम फाइनल में जा सकती है, जो 16 को खेला जाएगा। और देख सकते हैं कितने सारे सपोर्टर्स आए थे क्लिफ्टन पॉपुलर्स के, जो आज जीत गई है टीम, और अगले राउंड में जाने के लिए अभी भी ये हैं कॉन्टेस्ट में। और आज टॉस जीते क्लिफ्टन पॉपुलर के कप्तान, और उन्होंने पहले मलीर मलंग को बैटिंग की दावत दी, जिन्होंने पहली इनिंग में 94 किए 2 विकेटों के नुकसान पर, और डीके दाऊद खान 43 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जवाब में क्लिफ्टन पॉपुलर की जो टीम थी उसने
97 रन स्कोर करके 3 रन की बढ़तरी हासिल की पहली इनिंग में। और ये हाईलाइट और एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो सेकेंड इनिंग में क्लिफ्टन पॉपुलर की फील्डिंग थी, जिन्होंने कई यकीनी कैच ये ड्रॉप किए। हाथों में से ये कैच होना चाहिए था यहां पर, और ये दूसरा कैच आसान कैच उन्होंने ड्रॉप किए। और क्लिफ्टन पॉपुलर की टीम को जो है ये एक ऐसा कैच जो होना चाहिए था वो भी ड्रॉप हुआ। और ये एक और कैच, वो आपने सुना होगा कायनात के कैचेस विन मैचेस, कैच आप छोड़ेंगे तो फिर जीत से कैसे करीब जाएंगे। बहुत ही डोमिनेटिंग शॉट्स खेले क्लिफ्टन पॉपुलर ने थ्रू आउट, और इसी वजह से ये टीम जो है इस वक्त ये गेम मैच जीत चुकी है। बैटिंग कार्ड में फहद 0 पे गए, असद 0 पे गए और फहद ने 36 बनाए। उमर ने 1 रन और अरबाज ने 30 रन बना के अपनी टीम को जीत दिलाई। बॉलिंग में एमजी ने 1 विकेट ली, फजल ने 1 विकेट ली, अली अपना पूरा ओवर कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन अब बाकी बॉलर्स को चांस नहीं मिला क्योंकि 1 ओवर अभी भी बाकी था मलीर मलंग। मलीर मलंग ने पहले इनिंग्स में 6 ओवर में 94 रन बनाए, क्लिफ्टन पॉपुलर्स ने 97। उनको 3 रन की जो लीड मिली वहां से मलीर मलंग ने अगले गेम में सिर्फ 77 रन बनाने में कामयाब हुए और क्लिफ्टन पॉपुलर्स आखिरी में 75 रन बनाकर ये गेम बहुत इजीली जीत चुके हैं। एंड वी थ्रो टू हिना नाउ। Thank you, Kainat. Well, at the ground, team Clifton Popular and their fans are celebrating their victory against Malir Malangs, and that's a well-deserved victory. But in the meantime, I've been joined by a guest who is Brigadier Retired Arfan Akhtar, CEO ASF Foundation. Sir, thank you so much for joining us on the sideline. Well, हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे. Let's have a quick chat. By the way, आप किसे सपोर्ट कर रहे थे? जी मैं तो लियारी को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह सबसे पहले तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू बदर एक्सपो, जिन्होंने इतना बड़ा ये पिछले 3 साल से ये KTPL करा रहे हैं। और आई थिंक जो आइडिया है इसके पीछे कि टेप बॉल से हमने क्रिकेट खेलनी है, तो हम सब ने बचपन में जो खेली है क्रिकेट वो टेप बॉल से खेली है या कपड़े के बने हुए बालों से खेली है। और आई थिंक कोई भी इंसान जब कोई स्टार्ट करता है कोई भी गेम, तो उसके अंदर एक हेजिटेशन होती है कि मैं क्या करूँ, किस तरह स्टार्ट करूँ। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इनटू एनी गेम। और ये जो आइडिया था बदर एक्सपो का, ज़ुहैर साहब का, कि हमने टेप बॉल से टूर्नामेंट कराना है और लीग करानी है, आई थिंक दिस इज़ ए वंडरफुल आइडिया। और इसने पिछले 3 सालों में इतनी ज़्यादा इसके अंदर अट्रैक्शन आ गई है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा वो पॉपुलैरिटी आ गई है, तो आलमोस्ट ये 82 कंट्रीज़ में लाइव देखा जा रहा है। तो जो हम टैलेंट हंट करना चाह रहे हैं, या इसके साथ साथ जो पोटेंशियल्स हमारे मुल्क में जो 22 करोड़ के जवान हैं उसके अंदर हैं, तो वो माशाल्लाह इसी से निकलेंगी। और इससे बढ़कर जो यहाँ पे इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यहाँ पे अमन है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी के इन्वायरमेंट्स को ख़राब नहीं है, और लोग जो है ना फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं। और मैंने हारून साहब को देखा है, तौसीफ भाई को देखा है, तो माशाल्लाह आई थिंक दिस इज़ ए कलेक्टिव एफर्ट बाय बदर एक्सपो। कराची के लोग इसमें शामिल हैं, पूरे पाकिस्तान के अवाम इसमें शामिल हैं, और पूरे रीजन और पूरी दुनिया के लोग इसमें शामिल हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट इट, दिस इज़ ए हेल्दी साइन। और आई थिंक पाकिस्तान को आजकल के जो माहौल में इस तरह के इवेंट्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। वेरी वेल डन बदर एक्सपो, एंड वेरी वेल डन कराची के जो लोग हैं और कराची के जो हमारे जो है ना वो सारे टैलेंट हंटेड। Thank you so much, sir, for being on the sidelines. Well, now it's time to take a break, and we'll be back with post-match presentation ceremony.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी से पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर यूबीएल अमीन केटीपीएल सीजन 3 टेप बॉल क्रिकेट लीग के इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आपको खुशामदीद कहेंगे, जहां मैच नंबर 21 और आज मुकाबला था मलीर मलंग बनाम क्लिफ्टन पॉपुलर। और बड़ा पॉपुलर ये मैच इस एतबार से था कि इस मैच में मलीर मलंग को हारना था और क्लिफ्टन पॉपुलर को जीतना था। अदरवाइज़ ये टूर्नामेंट डोर क्लोज हो जाते क्लिफ्टन पॉपुलर के लिए, लेकिन मलीर मलंग जो कि इस टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त टीम थी, ये टीम आज मैच हारी और क्लिफ्टन पॉपुलर ने 8 विकेट से ही इस मैच में कामयाबी हासिल करके अपने टूर्नामेंट में रहने की उम्मीदों के चिरागों को रोशन रखा है। तो तालियां होनी चाहिए क्लिफ्टन पॉपुलर की आखिरकार कामयाबी के हवाले से। और मैच नंबर 21 यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 2023 के मैच नंबर 21 की इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जो ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ आज लाइनअप हैं, ब्रिगेडियर रिटायर अरफान अख्तर जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ एएसएफ फाउंडेशन, आपको खुश आमदीद कहेंगे। अरमान बूस्ट अप योर लाइफ स्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, मोहतरमा ज़ेबा शहनाज साहिबा, आपको हम खुश आमदीद कहेंगे। उसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मलीर मलंग के मलंग ऑनर जेडीसी के सरबरा ज़फ़र अब्बास साहब, आपको हम खुश आमदीद कहेंगे। और बड़ी अजीब सी बात है कि आज इन्होंने नेक ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम आज हार जाए, क्योंकि अगर क्लिफ्टन पॉपुलर हार जाएगी तो फिर उनके लिए टूर्नामेंट ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे दोस्त होने चाहिए। और क्लिफ्टन पॉपुलर के जो रिप्रेजेंटेटिव आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी अपने इस प्लेटफॉर्म पर हम खुश आमदीद कहेंगे। ज़फ़र अब्बास साहब के साथ रोशन साहब को, रोशन साहब आपको खुश आमदीद कहेंगे। और सबसे पहले कुछ इनामात हैं, लेकिन इनामात से पहले कुछ सोवेनियर्स हैं जो कि केटीपीएल कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की इंतज़ामिया मैनेजमेंट कमेटी के लिए हैं। और ये है बूस्ट अप योर लाइफ स्टाइल की जानिब से अरमान साहब ने ख़ास तौर पर इन सोवेनियर्स का एहतमाम किया है। मैं 1 बाय 1 ऐलान करूंगा और अरमान साहब से या कि बूस्ट अप योर लाइफ स्टाइल के सोवेनियर लेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ज़ुहैर नसीर साहब से, जो रोहे रवा हैं कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के, कि वो आएँ और अपना सोवेनियर रिसीव करें। ज़ुहैर नसीर साहब, ज़ुहैर नसीर। उसके अलावा इस मैनेजमेंट कमेटी में शामिल हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबरा हारून रशीद साहब, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आइए और अपना सोवेनियर रिसीव कीजिए। उसके अलावा सादिक मोहम्मद साहब, मोहम्मद फैमिली के चश्मो चिराग हैं और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, इस मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा हैं। उसके अलावा यहाँ पर मौजूद हैं हसन रियाज साहब जो कि इस मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा हैं। हारून रशीद, सादिक मोहम्मद साहब, हसन रियाज साहब, पाकिस्तान जूनियर सिलेक्शन कमेटी के रुकन, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब, मैनेजमेंट कमेटी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग वक्कार हसन साहब, वक्कार हसन, वक्कारुल हसन साहब। और अब केटीपीएल की जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूं, खासे मुतहर्रिक हैं और आपकी तालियां बजाएंगी कि वो कितने मुतहर्रिक हैं। आपकी भरपूर तालियों में नसीम राजपूत। गोल्ड की घड़ी भी ले जाइएगा आप ज़फ़र अब्बास साहब से। और अब आगे बढ़ते हैं मजीद
और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के प्लेयर ऑफ द मैच की। और जो परफॉर्मेंसेज आज यहाँ पर हमारे सामने थी, मलीर मलंग के लिए डीके ने फर्स्ट इनिंग में 43 रन स्कोर किए 17 बॉल्स पर। सेकंड इनिंग में डीके, जिनको दाऊद खान कहते हैं, उन्होंने 27 रन स्कोर किए 10 गेंदों पर। इरफान नाना ने क्लिफ्टन पॉपुलर के लिए 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मिमरान ने 39 रन स्कोर किए। बट केटीपीएल की ज्यूरी ने जिस खिलाड़ी को मैच के बेहतरीन खिलाड़ी के लिए मुंतखब किया, उसने फर्स्ट इनिंग में क्लिफ्टन पॉपुलर के लिए 4 गेंदों पर 1 छक्के के साथ 10 रन स्कोर किए और 11 गेंदों पर दूसरी इनिंग में 30 रन बनाए, 1 चौका 4 छक्के। आज के प्लेयर ऑफ द मैच अरबाज आएंगे और उनको ये शील्ड देंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड अरफान अख्तर, सीईओ एएसएफ फाउंडेशन। और अब पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम जो कि आज हमारी इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं, मोहतरमा ज़ेबा शनाज साहब, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो आज के प्लेयर ऑफ द मैच अरबाज को 5000 रुपए का चेक पेश करें। यही रहेंगे आप। और ज़ेबा शनाज साहबा, इनके लिए एक सोवेनियर भी है, एक गिफ्ट हैम्पर है। जी जनाब, ये गिफ्ट हैम्पर है बूस्ट अप योर लाइफ स्टाइल की तरफ से। आइए अरबाज साहब। अरबाज, बहुत मेहरबानी की आज मलीर मलंग ने आप लोगों के साथ, और कई कैचेस ड्रॉप हुए, बट कितना इंपॉर्टेंट था आज का ये मैच, क्योंकि आप लोगों को जीतना ज़रूरी था। जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि 2 लॉस किए हुए थे और 2 विन थे, तो ये काफ़ी क्रूशल मैच था। तो यही था मैनेजमेंट की तरफ से, ये मैच लाजमी हमने विन करना है। अच्छा, सेकेंड इनिंग में आप लोगों को 75 रन मिले, इतना मुश्किल टारगेट था नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि आपकी टीम जो है वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन जीत आपने ज़रूर हासिल की। 8 विकेटों से आप जीते, लेकिन बिल्कुल कन्विंसिंगली जीतना चाहिए था, उस तरह आप लोग जीते नहीं। जी, हम लोग सारे मैच खेले हैं जितने भी वो नाइट उसमें खेले सेकंड हाफ में, ये फर्स्ट उसमें था तो थोड़ा मुश्किल हो रही थी, लेकिन वन साइडेड जैसे हमारी बैटिंग चल रही थी उस तरह नहीं चली, तो कैप्टन ने मुझे किया कि 1 डाउन आपने जाना है, तो मैंने मैच जितवाया। काफ़ी चले अरबाज, आप यहीं मौजूद रहेंगे क्योंकि आपके जो ओनर हैं इमरान अली रोशान साहब क्लिफ्टन पॉपुलर की, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उन्होंने 25,000 का अवार्ड अनाउंस किया है अरबाज और फहद के लिए। आइए फहद। 25,000 रुपए अरबाज और फहद के लिए, इमरान अली रोशान जो कि क्लिफ्टन पॉपुलर के ओनर हैं। और इसके अलावा इमरान अली रोशन की तरफ से पूरी टीम के लिए 10,000 रुपए का अलग इनाम है। थैंक यू वेरी मच इमरान जी, ईच प्लेयर। बहुत शुक्रिया फहद और बहुत शुक्रिया आपका अरबाज। और अब कैच ऑफ द मैच की बारी है, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यहाँ पर एक बार फिर मोहतरमा ज़ेबा शनाज साहिबा से कि ओसाका LED लाइट्स का ये गिफ्ट हैम्पर आप पेश करेंगी, और ये दाऊद खान मलीर मलंग के कैप्टन को जाता है आज के बेहतरीन कैच का अवार्ड। दाऊद खान ने ना सिर्फ एक अच्छा कैच लिया, बल्कि फर्स्ट इनिंग में 43 किए थे, सेकंड इनिंग में 27 किए। वेल डन दाऊद। और अब डॉक्टर कदीर, तैयार है आप? बाइक स्टार्ट कर लीजिए अपनी, क्योंकि अब आप बैट लेकर आ रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इमरान अली रोशन क्लिफ्टन पॉपुलर और जफर अब्बास साहब मलीर मलंग के ओनर, ये बैट पेश करेंगे आज के फैन ऑफ द मैच के लिए। और 2 फैन ऑफ द मैच हैं, जायान और मलामिक। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मलीर मलंग के लूजिंग कैप्टन दाऊद खान से कि वो आए और कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें। दाऊद खान डीके। दाऊद, अब तक इस टूर्नामेंट में आप लोग हारे नहीं थे और पहली मर्तबा हारे हैं, लेकिन टूर्नामेंट में आप लोग जो हैं वो फाइनल 4 में जा चुके हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे भी सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा, क्योंकि हार का मज़ा भी चखना होता है। तो उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली तो वो जीते। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम आगे जो हमारे मैचेस हैं सेमीफाइनल में, इससे कुछ सीखें और आगे इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करें। अच्छा दाऊद, आपके लिए ये बात कितनी हौसला अफजा है कि इस टूर्नामेंट में जो टेप बॉल क्रिकेट के बड़े नाम हैं वो इतनी अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे, बट आप पाकिस्तान में टेप बॉल क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, डीके के नाम से जाने जाते हैं, आपके बल्ले पर बॉल भी आ रहा है और आप अच्छी फॉर्म में भी हैं, तो ये टीम के लिए कितनी अच्छी बात है? बस कोशिश होती है कि अच्छा खेल परफॉर्म करें, और जो जितने भी बड़े नाम हैं तो उनको ये थोड़ी मुश्किलात होती है कि कराची में थोड़ी सी हवा जो है ना वो ज़्यादा चलती है, तो इसलिए यहाँ पर उनको थोड़ी मुश्किलात होती है। जी बिल्कुल। जफर भाई ये कह रहे हैं हवा बहुत तेज चल रही है कराची में। जी बहुत शुक्रिया। डीके आज के लूजिंग कैप्टन मलीर मलंग के, और अब क्लिफ्टन पॉपुलर के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा असद से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। असद। असद पहले क्यों हार रहे थे यार? इतनी तालियां बज रही हैं, इतने इनामात मिल रहे हैं। पार्ट ऑफ गेम है, थोड़ा सा जो मैचेस हारे उसमें थोड़ी सी गलतियां हुई थी, तो आज उसको अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया और आज का मैच जीते अल्हम्दुलिल्लाह। चले मुबारक हो असद आपको, लेकिन वो कहते हैं कि अच्छी टीमें वही होती हैं जो अपनी कामयाबियों में गलतियों को तलाश करती हैं, तो आपको लगा कि बहुत सारी अभी कमी रह गई है मलीर मलंग से जीतने के बावजूद क्लिफ्टन पॉपुलर के लिए, जो आने वाले मैचों में आपको रिकवर करनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमेशा 100% कोई भी नहीं देता, गलतियां होती हैं। इस मैचेस में भी हमसे कुछ गलतियां कोशिश करेंगे नेक्स्ट मैचेस में ना करें, और आगे के अच्छे मैचेस हैं तो कोशिश करेंगे उसमें अच्छा खेलें इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच असद, वेल डन। और यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 2023 की ये प्रेजेंटेशन सेरेमनी मैच नंबर 21। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से। आपसे चाहेंगे इजाजत।
Welcome back once again, ladies and gentlemen, to Moin Khan Cricket Academy, DHS Sports Club. Now we are here enjoying all the matches from UBL Amin Karachi Tape Ball Premier League Season 3. Match number 2 tonight is to be played between Lyari Legends and North Nawabs. We have both the captains here already for the toss. Leading Lyari Legends is the captain Ashraf Pathan. Leading North Nawabs is the captain Shafi Agha, along with match referee Naeem Ahmed. I believe it's Ashraf Pathan who has the coin, even though he has it behind his back. Ashraf Pathan, Bismillah kare. KTPL. KTPL is the call. Badar Expo. Badar Expo. Ashraf Pathan has won the toss. He's a happy chappy. Ashraf Pathan, क्या करने का फैसला किया आपने? हम फर्स्ट बैटिंग करेंगे। बैटिंग करेंगे, टोटल सेट करेंगे, प्रेशर में डालेंगे नॉर्थ नवाब्स को। वैसे पिछले 2-3 मैचेस से बड़ा तगड़ा खेले हैं, ये भी तो आप भी तैयारी करके आए होंगे। भाई बिल्कुल हमें पता है कि ये 2 मैच हारने के बाद 3 मैच जीते और हम 2 हारे हैं 2 जीते हैं। तो आज हम भी कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा भी कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना है, तो हम बीट करने की कोशिश करेंगे। तब्दीली की आज आपने? हाँ, आज एक चेंज है, एक बॉलर खिलाया है शाहजहां, जो सीनियर बॉलर है हमारा, वो पिछले मैच में नहीं था, तो आज उसके साथ जाएंगे हम। उस्ताद शाहजहां आज टीम में शामिल है लियारी लेजेंड्स की। शफी आगा पहले बैटिंग कर रहे हैं लियारी लेजेंड्स, अब इससे कोई प्रेशर तो नहीं फील होता आपको? नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, बाद में भी बैटिंग करनी होती है, पहले भी बैटिंग करनी होती है। टॉस अगर हम जीत जाते तो हम पहले बैटिंग करते, हमारा भी यही था। अब लेकिन टेम्पो बन गया है आपका और आई एम श्योर मजा आना शुरू हो गया होगा। जी बिल्कुल, अभी तो हम टॉस हारे, तो अब जाहिर सी बात है वो बैटिंग करे तो हम बॉलिंग ही करेंगे। ठीक है, कुछ तब्दीलें की हैं आपने टीम में? जी, एक चेंज किया हुआ है, मुरसलीन को ड्रॉप किया हुआ है, उसकी जगह जोएब रहमान को खिलाया। Right, Shafi Agha, best of luck for the match. Thank you. All right, ladies and gentlemen, the word from the center is Lyari Legends have won the toss and decided to bat first. We'll take a break here and we'll come back with live action.
welcome back once again. As we see that match 21st is just about getting underway, where North Nawabs are taking on Lyari Legends. And news from the center is that Lyari Legends have won the toss and opted to bat first. It's going to be a very good contest, as we are witnessing that Lyari Legends with 4 points against their name, whereas North Nawabs with 6 points under their belt. Two of the umpires making their way to the middle, and with me is Farooq. Hello, Farooq. Good evening, Falak. Good evening, everyone, wherever you are. The second contest of the day is coming up. It's Lyari Legends will take on North Nawab here. Two umpires have made their appearance, and now the fielders of North Nawab are making their appearance. So after an exciting first match, the Clifton Popular won it, and they beat Malir Malangs, and Clifton Popular picked up their third victory, whereas Malir Malangs, first time they got beaten in this competition. So both batsmen, as Qari Hamidullah and Nizar Lefty, both are very good players. Both are in very good form as well, and they are making their appearance to make an impact. Especially just tonight, the right-hander Qari Hamidullah, we witnessed he was going all guns blazing, and he was hitting sixes at will. But he will be up against, there are the two sides, Lyari Legends, Nizar Ali the left-hander, Qari Hamidullah, Rana Mohsin, Sohail Lefty, Ashraf Pathan, Said Bilal, Shaban Setu, Abdul Salam, Dawood Suleiman, Shah Jahan Mirjat back into the side, very experienced campaigner with the ball, Zohair Nasir, obviously the chairman of the KTPL and part of the Lyari Legends, whereas North Nawabs have Shafi, Agha, Saifullah, Hafiz Pola, A.B. Paro, Zain Pathan, Irshad Afridi, Asad Pathan, Yahya Khan, Sehram, Zohaibur Rahman, and Hanif Azad. Two of the very competitive sides in the middle. Qari Hamidullah need to start well, and he's in very good form. Absolutely, he is in very good form. He has shown what he's capable of. He takes his time, and then he can certainly hit the ball a long way. Nizar Ali, the lefty, and he is also a very capable player. So right and left in combination will take on the bowlers of North Nawab here. Asad Pathan has got a ball in his hands. He's been very effective in this competition, and he has really taken some big players out. There you go. The umpire's ready, players are ready, and it's time to play then. Let's play. Goes massive, goes flat, and goes all the way. What a way to start the proceedings. 6, Hamidullah just starting from the very left yesternight. What a start that is. Devastating batsman Qari Hamidullah, straight away he got the ball in his slot. And there's the boundary check. I think the ball has landed just beyond the rope here. The fielder down there, deep mid-wicket. He can help the umpire as well. He cleared the front leg, Qari Hamidullah, and heaved away straight away. The official confirmation by the umpire. It's gone all the way for the maximum. Lyari Legends winning the toss, opting to bat first, and got to after a rollicking start. Hamidullah hitting a 6 over mid-wicket. Asad Pathan. Down the leg side. Did that brush anything in the way through? Umpire doesn't agree with the bowler, and it's a wide. They will have to re-bowl. Well, wicketkeeper heard something. Maybe off the trouser, maybe they were just trying to apply the pressure. So umpire was absolutely confident, and straight away he extended his arms. No real evidence is there any contact with the trouser or not. So nevertheless, it's a first extra to the total. 2 extra runs added to the total. Oh,
Oh, nicely bowled, surprised him, and they're gone for the appeal. Umpire's not interested, but it was a good surprise delivery, shortening his length there. I think that is off the face of the batsman, maybe just brushed the air. He was trying to pull it. He gave himself a little bit room. An extra bounce, an extra pace, really surprised Qahir Hamidullah. He's trying to make a comeback after conceding a maximum, Asif. He goes hard again. This one hit like a rocket. Fielder can't do anything about that. It was not very far away, just 10 to 15 yards to his left, and he could do nothing about that. How hard he can hit this ball. Absolutely, it got to the boundary like a tracer bullet. That's his favorite zone. He smashed over really hard. The mid-wicket fielder just inside the circle. He had no chance whatsoever, whereas the boundary rider was also not quick enough to make any sort of contact with the ball. Boundary and a 6 in the very first over. Qahir Hamidullah on a roll here. Full toss, gets the connection of his liking. No, he hasn't. He's been caught now, one too many for Hamidullah. He's been removed, and this is Asif, we all know. When you hit him, he will definitely come back. He can't believe it. Qahir Hamidullah, with a low full toss, tried to smash it. He tried to launch it over long on. He gave full face of the bat, but not the best of timing. Certainly, a couple of yards short. The fielder made no mistake whatsoever. He was safe as a house. So interesting over, eventful one, 10 of 4 for Qahir Hamidullah, 1 for 12 on the board. Osaka cricket tapes being taped on these beautiful tennis balls to make them tape balls. White cherries being prepared, and they're in numbers, not only one. Has a job to do, that fellow was taping the ball. Well, this brand new white cherries always look fascinating and attractive. And dozens of balls are ready because balls get lost here because of number of big sixes. Ashraf Pathan, the next man, the skipper. Full toss. Has he got enough of it? No, he hasn't. And he's a goner too. 2 of 2 for Asif. He's on a roll here. He can do nothing wrong. Almost identical to the first one. Full toss outside the off stump. That was a little wider. And Ashraf Pathan launched it towards long on the fielder this time. He had to run forward. He kept his eye on the ball. Tougher catch. A really good take in the end. No mistake whatsoever. So challenge accepted. So he just came and went. Ashraf Pathan's a huge wicket, 2 for 12. Well, it's been a very good combination between that long-on fielder and Asad Pathan, the bowler. Twice they got rid of the batters in the same fashion. Dawood has been brought into the bowling crease with a job to do. I think bowler Asif is just a touch lucky here because on both occasions he bowled the low full tosses and on both occasions he struck for his side. This time shortening his length and good fielding at short fine. So single to end the over. It's 13 for 2 after first over. It's time to go downstairs with Hina. Thank you so much. Well, with me on the sidelines is Mr. Abid Abbasi, who is Deputy CEO NetSet. Thank you so much for joining us on the sidelines. Thank you. NetSet की बात करें तो जियो सुपर पे जो आप ये शानदार लीग देख रहे हैं उसके पीछे टेक्निकल टीम जो है उनका बहुत बड़ा रोल है सर अपनी टीम के हवाले से और कितनी एफर्ट्स लगा रही है इस लीग को बहुत खूबसूरत अंदाज में दिखाने के लिए जी बिल्कुल ये it's a pride for us that we are into this business for since last 2 decades और जियो से हमारा ताल्लुक बहुत पुराना है और हम 2008 से जियो के साथ काम कर रहे हैं और हमने जो कमेंस किया था ये
फुटबॉल्स के साथ किया था। उसके अलावा जो अभी रिसेंट जो इवेंट हुआ है जियो के साथ, वो हमने जो नेशनल गेम्स किए हैं, 27 इवेंट्स किए हैं। और वी आर वेरी प्राउड दैट फ्रॉम दी नेटसेट वी आर सपोर्टिंग दी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑल ओवर पाकिस्तान। और इसमें जो है आपके सारे बिजनेस आपके स्पोर्ट्स सेगमेंट्स हैं, जिसमें A to Z, इसमें बॉक्सिंग, याचिंग, आपका फुटबॉल, हॉकी एंड मेनली क्रिकेट जो भी हो है। और हम उसको पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको हर तरह से कवर करें, सपोर्ट करें, इनकरेज करें नए लोगों को, नई टीम्स को जियो के साथ पार्ट बने। और उसके अलावा दूसरी भी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें हम इस पर स्ट्रेंथन करें और हम अपना एक पॉजिटिव और एक पार्ट प्ले करें। Also, what do you have to say about the entire team of KTPL? They are putting the efforts in organizing such leagues. जी अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स वेरी गुड। मतलब इसमें आपको देख के अंदाज़ा नहीं होता कि आप कोई लोकल और डोमेस्टिक इवेंट्स को देख रहे हैं। इसमें जो एक इंगेजमेंट है, एक कोऑर्डिनेशन है और एक जो सेटअप है, दैट इज़ अप टू द मार्क एंड दैट इज़ वेरी ऑसम, आई बिलीव। दूसरी एक चीज़ ये कि इस वक्त हमारे, अगर मैं नर्सट के हवाले से बताऊं, कोई 16+ कैमराज हमारे यहाँ हैं। हमारी फुल टीम है जो कि डेडिकेटेडली इस पूरे इवेंट के बिफोर स्टार्ट एंड आफ्टर द एंड इसको सपोर्ट करती है। और उसके साथ साथ नेटसेट का मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ कि नेटसेट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कंपनी विच हैज़ गॉट 5-6 बिजनेस सेगमेंट्स इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्ट मीडिया। We have got a dedicated data center which is going to be Tier 3 certified। उसके अलावा हमारा कॉल सेंटर, हमारे साथ उसका रेडियो कनेक्टिविटी का हमारा बिज़नेस, सेटेलाइट का बिज़नेस है और उसके साथ हमारा सोलर का बिज़नेस है। तो वी आर ऑल ओवर और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि हम ये अपने ब्रॉडकास्ट सेगमेंट को हम इंटरनेशनल लेवल पे लाएं। और हमने इवन ये है कि हमने बहुत से इंटरनेशनल इवेंट्स PTV के साथ और जो है जियो के साथ और जितने मतलब उसमें हमारी जितनी कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट है, तो बैक एंड पे जो है जो आपको नज़र आता है वो सारी नेटसेट की टीम काम कर रही होती है। तो ये हमारा एक बड़ा प्राइड है और उसमें आप लोगों की बड़ी कोऑर्डिनेशन एंड वी आर थैंक यू फॉर दैट। Well, I must say that your team is doing a great job and thank you so much for being with us on the sidelines. नहीं, it's okay. It's always a pleasure and we used to visit on daily basis on and off and we are still the part of this activity, this positive activity. Yes, and now it's time to go back to Combox. Thank you very much. Thank you, Hina. It's going to be the left-hander on strike for the first time. Oh, have a look at that for a shot. He has just picked that away and the fielder is helping the umpire out that it's gone all the way for the maximum. What a shot by the left-hander. Lovely pickup shot. It was just a fraction short and picked it up from middle stump. Nicely lifted. And he knew there was nobody out there. And the ball landed just beyond the boundary here. So if any fielder would have been there, there was a certain chance, but the placement was really good. Although the ball landed just up beyond the boundary, the mid-wicket fielder was a touch far away here. On the pads, gets away with that line. Should have been put away. Feel himself unlucky, Nizar lefty, not to get runs off that delivery. That was on the pads here for Nizar lefty, but he tried to flick it because he got a strong wrist. He is really good at the onside. He just got away with that. So Irshad has to get his line right. Anything outside the off stump or fourth stump can really help him. You can't rely on luck all the time. That has brought Dawood on strike. Oh, misses it altogether. A dot delivery to finish that over. 2 done. It's 31 for 2. $17 of that last over. Still, it was expensive, despite the fact that he's bowled the last ball a dot ball. There you see the bats. Thunder. Oh, what is he thinking about? He's waiting for his turn. Such a big, broad bats in table cricket, much broader than before, as far as I remember.
And the batsmen certainly have the opportunity now to give full face and make an solid contact with the ball. It's almost as big as somebody like Chris Gale's bat. It's a big stick. 3 pounds bat, 2.9 minimum. Chris Gale used to lift such a heavy bat with a big man. Though he's a right-handed, but just a bit like him is Fahad Miachan, tall fellow with a big bat in his hands. And when he goes big, there is no stopping, really. Anywhere near the middle of the bat, it's going to be a... It's going to be a that. Have a look at that. It's Nizar lefty. He goes massive, goes for another 6. What a classy shot. The shot of the highest quality. Nizar lefty picked it up from middle stump. Over pitch, beautifully played, lovely wrist work, pure timing. My word, you can watch the shot again and again. Well, that stroke reminds me of Yuvraj Singh hitting Brett Lee for 190 meter 6 with a similar kind of flick of the legs. Nicely bowled, good comeback delivery. Cramping him for space. Only single to the left-hander will bring Dawood on strike now. Like most of the players, he's not a strong offside player. He's extremely strong on his legs, and that is why it's important for the bowler to bowl something around off stump. So he's the kind of player who will not spare you if you bowl anything middle and leg stump here. But also he can change his length. Anything short of a length, extra bounce and extra pace. So any teasing length will keep the batsman quiet here. Now right-hander batsman Dawood on strike. He's got that one all right, and it's in the hands. Wow. Couldn't pick him away on that occasion. The timing was not there for Dawood, and he's a goner. Asif gets another wicket. Well, Dawood was looking good. He wasn't in complete control outside the off stump. The teasing angle, he tried to heave it. And it's turned out to be an easy catch in the end. Well, he got caught well inside the boundary. The fielder came, moved to his right, comfortably taken. Yahya as a man who was cool as an ice. Catching has been good for Nawabs. Dawood Suleiman goes for 12. 38 for 3. Right then, 3 wickets down, Lyari Legends. Good to see some brilliant catching by Nawabs. As compared to the last game, we have seen quite a few going down, but their catching, Nawabs' catching has been absolutely on the money. Shubhan Seto. Now it's time to go to Hina downstairs. Oh, just hitting his leg and will scamper through for a leg bye. Lucky enough, the bowler even didn't gather the ball cleanly. And now Hina downstairs is pretty much ready. Let's see what she has. Thank you so much. Well, I have been joined by CEO Osaka Lighting, Mr. Shamim Ahmed. Thank you so much, sir, for being on the sidelines. कैसे हैं आप? Enjoy कर रहे हैं मैच को? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत इंजॉय हो रहा है। बहुत इस वक्त जो मैचेस हैं सारे माशाल्लाह आपस में मुकाबला हो रहा है। कई टीमें सेमीफाइनल भी पहुंच गई हैं और भी टीमें पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ खिलाड़ियों में भी एक दिलचस्पी पैदा हो गई है, एक हौसला पैदा हुआ है और माशाल्लाह जो यहाँ तमाशाई हैं और इस वक्त जो पूरी वर्ल्ड में, दुनिया में जो 82 कंट्रीज़ में जो ये मैचेस देखे जा रहे हैं, हर जगह माशाल्लाह इस वक्त दिलचस्पी पैदा हो रही है कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और कौन सी टीम फाइनल में पहुंचेगी। मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है क्योंकि मैं तकरीबन काफ़ी मैचेस देख रहा हूँ, यहाँ खुद आता हूँ, देखता हूँ मैचेस। आप यकीन माने यहाँ इतना टैलेंट है और ये जो माशाल्लाह एक्सपो बदर ने जो ये जो इवेंट किया है, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है और जितना इनको दुआ दिया जाए कम है।
पाकिस्तान में इतना टैलेंट छुपा हुआ है, ये टैलेंट को लेके आ रहे हैं। पहले ये टैलेंट गलियों में छोटे छोटे मोहल्लों में खेलता था, आज इन्होंने माशाल्लाह एक मुनज़्ज़म करके इसको, बल्कि ये तीसरा इवेंट है ये इनका, तो एक ग्राउंड में लेके आए इसको, ताकि जो मुल्क के, जो हमारे मुल्क के हर शहर से माशाल्लाह यहाँ खिलाड़ी आए हुए हैं। अटक से हैं, जेलम से हैं, पेशावर से हैं, मैंगोरा से हैं, हर शहर के यहाँ माशाल्लाह खिलाड़ी यहाँ आए हैं और अपने जो है ना सलाहियतों का मुजाहरा कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा एक बहुत कामयाब इवेंट है ये पाकिस्तान के लिए बहुत कामयाबी का साबित होगा। यही हमारे खिलाड़ी, यही हमारे नौजवान कल को पाकिस्तान की टीम में आएंगे और एक पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि ये जो टेप बॉल से जो क्रिकेट खेली जा रही है, ये इनकी एक ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है जो ये ट्रेनिंग यहाँ से हासिल करके फिर हार्ड बॉल से भी खेलते हैं ये लोग, लेकिन ये एक ऐसा ट्रेन किया जा रहा है इनको जिससे ये पूरे शॉट्स खेलते हैं। इसमें यहाँ जो इस वक्त जो पूरा टूर्नामेंट हो रहा है वो ओसाका किरीको टेप से हो रहा है। ओसाका कंपनी ने ओसाका किरीको के नाम से एक टेप बनाई है जो सिर्फ क्रिकेट के लिए है। मैं तो कहूँगा हर बच्चा, हर नौजवान, हर खिलाड़ी, चाहे अपने गली मोहल्ले में खेल रहा है, चाहे ग्राउंड में खेल रहा है, इससे एक मरतबा ज़रूर खेलें। इंशाल्लाह इससे खेलेंगे उनको मज़ा आएगा और क्रिकेट बेहतर से बेहतर होगी। वो खेलते खेलते थक जाएंगे, इंशाल्लाह ये टेप नहीं फटेगी। तो मैं हर नौजवान से कहूँगा कि माशाल्लाह अपना टैलेंट इस्तेमाल करें, आएँ यहाँ पे क्रिकेट भी देखें और क्रिकेट भी खेलें। Thank you so much, sir, for sharing your thoughts with us on the sidelines. Time to go back to Combox. Thank you. Thank you so much, Hina. Meanwhile, we have seen Nizar, lefty, has struck a big hit on the leg side. Not a good start this from Saifullah, dropping it short, asking to be hit. And Nizar, lefty, has been in decent touch in this tournament, especially in the past few games for his side. Well, they've lost 3 wickets, but they still have just under 3 overs remaining to put up a significant total on the board. They must be riding high in confidence because of their victory last time around against DH at the bunks. Just trying to hit the body this time. It will be a dot ball. 5 maximums and 2 boundaries have been hit so far by Lyari legends. This innings has been nothing short of action. We have seen 3 wickets also falling down very early. What do you reckon about this performance by Lyari legends so far, Kainat? Well, they're going okay so far, and they still have to get those maximum runs possible for Lyari legends to set a good total for North Nawabs, as North Nawabs also have some very destructive players in their side. Yeah, really, Hafiz Bola and AB Paro have really been batting really well for North Nawabs. Good delivery once again, a little wide outside the off stump. He was trying to fetch that on the leg side, couldn't do so in the end. It has been a roller coaster of a journey so far by Lyari legends. They didn't start their campaign well. They lost few matches, but last time, if I'm not wrong, they won that game against DH at the bunks. That must have given them a huge boost in confidence. It's a pickup shot on the leg side. It's up in the air. There is a fielder underneath that who takes it as safe as possible. Another wicket goes down for Lyari legend. It's Shoban who has been dismissed. Well, wickets falling at intervals, regular intervals, and this is not good for Lyari legends. And again, it was not a bad shot, but again, it was easily caught by the fielder on boundary. Yeah, you could see that ball tailing in ever so slightly to the right-hander. Shoban Shetu walks back after scoring just 1. It's 47 for 4.
This is another success story, this UBL KTPL Season 3, and you can see that by the fact that it is being televised in more than 84 countries. So wherever you are around the globe, not only in Asia but even in America, Canada, UAE, even the countries in Africa are enjoying this table action happening here at DHA Sports Club Moin Khan Academy. Meanwhile, Rana Mohsen has come out to bat at number 6. Well, he'll have a job to do with the ball in his hands as well, but now he needs to focus on his batting because 2 overs are still remaining for Lyari Legends. Has not been a good performance by the batting side. They have lost 4 wickets already. Top order is back in the dugout, but the good thing is that Nizar Lefty, who came out to open the batting, is still out there. Tense faces in the dugout of Lyari Legends. It's a full toss. He missed that. He was straight away looking at the leg umpire, whether it was a no ball or not. It was termed as illegal delivery. A very good over this from Saifullah. Just 7 runs and a wicket coming off it. It's 47 for 4. It's 47 for 4. The second power play is over. Now 5 fielders are allowed to stand outside the 30-yard circle for the fielding side. Sehram is going to start his first over, the 5th over of the innings, as we can see a change in the field. There is a fielder at long off for the left-handed batter. No fielder inside the inner ring on the leg side. Both the fielders are at the boundary ropes, deep square leg and deep mid-wicket, along with the fielder at long gone. Starts off with a slower delivery that has been picked up over mid-wicket. That is going to sail into the crowd. Brilliant start this from Nizar Lefty. A 6 of the very first ball, and that brings up 50 for Lyari Legends as well. Nizar bringing in hope for Lyari Legends as they still have those 12 deliveries left to score big. And he did pick it up very low, extended his arms. It's another low full toss. Once again, he has deposited that ball in the similar region for the similar result. Back-to-back maximums to Nizar Lefty. Lyari Legends getting back on track as it is most needed at this moment. It's a low full toss delivery and just flicked it towards mid-wicket region. Well, Nawabs were in action last night against the Karachi Knights as well, and Sehram was so effective with those slower ones and Yorkers. It has been complete opposite so far. Squirted away on the offside. It's into the gap again. There was no protection out there. Really good shot selection this time by Nizar Lefty, playing the ball on its merit and getting a boundary to his name. Sometimes the batter just needs to clear the inner circle fielder, and that's what he did. One of the most difficult shots, but played with a great exception. He looks a solid player, Nizar Lefty. He has got all the shots in his books. Straight away, Sehram has been put under immense pressure. He's not holding himself back. That's over long off for a flat maximum. He has taken to cleaners in this over of Sehram. He's showing no mercy whatsoever to the left arm seamer. Sehram is not bowling as per the requirement. And again, a fuller delivery. It's easier for the batter to hit at this point. A great shot by Nizar. He's all in to hit maximums for Lyari Legends. It's such a cruel format, tape ball cricket. He was the pick of the bowler, Sehram, last night against Karachi Knights. And so far in his first door deliveries, he has been put away for 22 runs. There you see some fans of Lyari Legends enjoying this innings by the left-handed batter. They were on top of the game until the start of this over, North Nawabs. All of a sudden, Lyari Legends. It's another low full toss. Once again, hit it over extra cover. There is no protection out there. It's going to run away for yet another boundary.
Nothing is working for Sehram. Even the change of angle could not stop the flow of runs. It's about the confidence right now, as he has been. He had a lot of boundaries in this over. It's difficult for him to come back. Still one delivery left for Sehram. Let's see what Nizar has to offer. Well, they needed an over like this, Lyari Legends. They were going absolutely nowhere in the first 4 overs, but they scored just 47 and lost 4 wickets. But this will give them so much confidence. 26 of the over already with the ball remaining. Nizar lefty sitting comfortably on 47. Tries to swing it down the leg side. It has gone towards fine leg. It's not going to run away for 4, but they are going to comfortably pick up a couple. This has been a really good start by Nizar lefty. 28 runs of the over of Sehram, 5 done. Lyari Legends are now 75 for 4. The ambassador of KTPL Season 3, Dr. Dawn, sitting in the lap of Hamidullah. He's having a time of his life as well. Just 1 over now remaining in the innings for Lyari Legends, but the job is not done yet. Rana Mohsin will be on strike for the first ball of the last over of the innings. We saw Malir Malangs posting just 74 runs in the first innings in the previous game, and that did not help to their cause. They ended up losing the games against Clifton Popular, their first defeat of this tournament, and that has opened up this tournament beautifully. Now even more teams have chances of qualifying for the semi-finals. Saifullah will start the last over of the innings. He managed to pick up a wicket in the last over. Back then the score was 47 for 4. Now all of a sudden Lyari Legends are 75 for 4. He decides to go straight over long on, and he has struck it well enough as well. A maximum of the very first ball. The boundaries and maximums continues to flow for Lyari Legends. He sat down on one knee, had no hesitation in keeping the ball down. Timed it well enough and got that over long on for a 6. They will be needing more of those. They still have 5 more deliveries remaining in this innings. Lyari Legends. Oh, he missed out. Once again, the length was there to be hit, but you could see that ball tailing in ever so slightly to the right-hander. Leg by signal by the on-field umpire. That single now brings Nizar lefty on strike, who is just 1 run shy of reaching his half century. Really don't think he's going to be thinking about that personal milestone. He'll be looking to score as many runs as possible. Here you see the chairman of Karachi Table Premier League Season 3, Mr. Zuhair Nasir, who is also a part of Lyari Legends, sitting in the dugout. Coming around the wicket now, Saif. He has smashed that over extra cover. It's a flat hit over extra cover, and that has gone for 6 as well. And what a way to bring up your half century. Qari Hamidullah enjoyed that as well. 55 of just 15, but the job is not yet over. Nizar Ali 55 already and doing it for Lyari Legends. And again a great shot by Nizar. Extending his arms towards the mid-off region. Decides to change his angle. He got a thickish outside edge. The ball is running down towards third man. Once again, it's going to stop just before the boundary ropes, but not before Nizar lefty completes his second run. It's looking much more respectable now for Lyari Legends with 90 runs on the board. In last 10 deliveries, they have managed to score 43 runs without losing any wicket. A great comeback for Lyari Legends, I would say.
We were not expecting them to score this much. Slower one picked up. See you later, Nizar Ali says to the ball, and that was goal into the second tier. Unarguably the biggest hit of the night so far. Well, indeed, this was the biggest hit of the night. And yes, Nizar is doing it for Lyari Legends. What a show he's putting up tonight for Lyari Legends. Nizar lefty single-handedly. He has managed to give his side a very respectable total with the ball still remaining. Drills it towards long off. Won't get to a boundary. They will be looking to come back for the second run. The throw is at the bowler's end. They pick up a couple. They might get another one on the overthrow, and they do. Brilliant running between the wickets. Not so good fielding effort by North Nawabs. Lyari Legends managed to steal 3 runs in the last ball of the innings, and they are going to finish at 99 for the loss of 4 wickets. Herculean effort being shown here by the opener Nizar lefty. Wickets were falling at the other end, but how well and composed he was, scoring 66 of just 18, making sure that Lyari Legends ending up with a strong total on the board. The star for Lyari Legends is Nizar, as he scored 66 on only 18 deliveries and making that total of 99 for Lyari Legends. They have a good chance to bowl them out now, and a good total set by Lyari Legends. Yeah, that's what a victory does. They got a victory in the last game against DHA, the Monks, who are one of the favorites to lift the tournament. But now, even they lost wickets very early in this innings when they were at one stage 47 for 4, and they have managed to score big. Hari Hamidullah came out to open the batting alongside Nizar lefty, struck few blows towards the start of the innings before he lost his wicket. Even the captain couldn't join the party, lost his wicket very early as well. It was at this stage, it was looking like Lyari Legends won't be able to score many runs on the board, but they managed to just keep on. Nizar lefty building his innings. He was a little slow towards the start of the innings, but made sure that he stayed there till the end. At one stage, Lyari Legends were 47 for 4, but he just kept on slogging and getting those maximums in his name. That's how they lost their 4th wicket. Safiullah picking up his first, and after that it was all about Nizar lefty. He was severe against Sehram, where he managed to pick up 28 runs in that particular over, the 5th over of the innings. That gave them a huge confidence. Rana Mawson also got an opportunity to hit big, which he did. And after that, it was all about Lyari Legends. They put up a magnificent show with the bat. Hamidullah lost his wicket early, scored just 10. Ashraf lost his wicket on the very first ball. Dawood Suleiman scored 12. Nizar lefty being the leading run scorer of the innings with 66 of just 18. As far as the bowling is concerned, once again just 4 bowlers were used. Asad was the pick of the bowler, picking up 3 wickets for 22. Safiullah picking up a wicket, went for 30. Sehram was clearly expensive, gave away 28 runs in his solitary over. So they batted really well, Lyari Legends. Now it all depends on how their bowlers perform in the innings of North Nawabs. They've got some serious power hitters, Hafiz Pola and AB Paro, who have been really good with the bat in this tournament. But as we have seen in the past as well, even the biggest of the sides can suffer a defeat, just like the way Malangs did earlier tonight against Clifton Popular. Time for a change in the commentary box. It's going to be Rana Ishfaq alongside Farrukh Riyaz. Thank you very much, Zishan and Kainat. 99 what Lyari Legends have got, and it's a good score. Nizar lefty getting a very fine half century, hitting lots of boundaries as well. Lyari Legends about to take the field. And there you see the 2 openers, Hafiz Pola with his partner
going out to bat. Hafiz Bola is an experienced customer and also a good striker of the ball. Hafiz Bola, no doubt about that. And he played few good knocks as well. Welcome, Farooq. Thank you very much, Rana Ashwag. Yes, absolutely. Hafiz Bola is a very good player and is such an experienced campaigner. That's a bird view of DHS Sports Club, Moin Khan Academy. Perfect setting, and it's an 11th day of this competition, and so far everything has been managed perfectly by the organizer. Yes, credit has to be given to the KTPL organizing committee. Umpires have done their job. Townsmen are doing a good job. Production team is doing a fantastic job. And players also entertaining the spectators and also the viewers. And spectators are coming in good numbers as well at DHS Sports Club Moin Khan Academy. In the second match of every day, I think the spectators come in better numbers. No doubt about that. First match gets underway around about 6:15 or 6:30. While the second match gets underway around about 9:30. Hafiz Bola, the right-handed batsman. Rana Mohsin, the man informed, the right armer, who will start the proceedings. He's a wicket taker for his side. He is not express, but he is very accurate indeed, and sometimes he really hits a nice length and gets the outside edge as well. No doubt about that. He's a very sort of an intelligent cricketer. He knows his limitations pretty well. And most of the time he bowls in the good lines and in good areas. But on the other hand, Hafiz Bola and Zain would like to give their team a good start. They will try to cash in, particularly in first 2 overs, when only 2 fielders are allowed outside the 30-yard circle. Any sort of a lead is important because it's a 2 innings format. Wicketkeeper standing well back, and Rana Mohsin will be coming from the far end. Everything is in order. The first ball of this innings is coming up. Here comes Rana Mohsin. And batsman has played that away, but there is a man down there in the countryside. Single is taken. It's turned it away quite nicely by Hafiz Bola. It was middle step. It wasn't an easy length to pick. Just wrist work from Hafiz Bola to get off the mark. Zain also a good batsman, and there you see the legendary Javed Miandad with Haroon Rashid. And they're feeling a bit cold as well over there. Oh, batsman. Batsman swung his bat bit too early. Ball came fairly late. A hint of a movement from Rana Mohsin as well outside the off stump. It further moved the ball outside the off stump, but it remained within the tram line, so wide wasn't given. Zain has shown his intention straight away. He tried to heave, missed it altogether. Yeah, Mohsin held that one back a little bit in the surface. Oh, again, batsman is in all sorts of disarray. When he missed the ball, he shouted, "Oh, yaar, what have I done?" He is understandably frustrated. It was there to be hit. It was just a fraction short, and he wanted to heave it
So every dot delivery will certainly raise the pressure. Again, Javed Miandad, Harun Rashid were on your screen. Oh, what is happening there? A single has been taken at the end in the form of bye. He was quite happy, Zan. He missed it altogether. It was a lovely delivery. It was pretty much on the within stump, but just extra bounce. Saved Zan. He's certainly getting the ball to swing. And as a result of the fumble behind the stumps, the half bowler got the strike here. Very good piece of bowling here. It has been a good bowling so far by Rana. This will give him some runs. Running away to the fine leg boundary for 4. A welcome and much needed one. Not a good fortune for Rana Mohsin. It was a fine delivery once again. A streaky boundary picked up by half bowler. That is off the inside edge of the bat. It wasn't in control. Just tickle it towards fine leg. Certainly not in the position, and the outfield is quite lightning. The fielder had to give up. Last ball of this over is coming up if he doesn't bowl wide or no. This one he has chucked that away. Down towards the deep covers boundary for 4. Magnificent shot. Absolutely spanked away. He caught the weight and he freed his arms beautifully. He loved it. Bad delivery. Bit was offered. Not a ideal finish from Rana Mohsin. Lifted beautifully over the infield. 10 for none after 1. First over gave them 10 runs. Zain hasn't scored a run yet, while Hafiz Pola struck a couple of boundaries for his 9. Particularly the stroke he played on the last ball of the previous over. That was fantastic one. All the width was there, that one was there to be put away. So a lefty has been given the ball for the second over to be bowled from the commentary box end. Zain also a right-handed batsman like Pola is. He wanted a run there, which wasn't actually there. Once again, dot ball consumed by Zain. He is certainly feeling the pressure now, as his facial expression suggests. So there is no harm. Once again, I will say that just tap the ball, take the single, give the strike to your partner. There is no need to play a dot ball. Yes, they've got to be very careful when it comes to playing dot balls. This is in the air. Somebody is coming under the ball. 1, 2. Oh, again. It is now a usual thing. Lot of catches come and down. An easy catch. It was a high catch, but it was never a difficult one. This Nizar lefty, I guess, who was the culprit, who was watching the ball. Missed time shot. Finally made a contact, but it was a missed time shot. And he's extremely lucky. The catch hasn't been taken. He had all the time in the world. Communication was clear. And interestingly, Hafiz Pola didn't go for the second one. He kept the strike. Fine leg dived and brought up a good save. They turned back for the second throw. Did it hit the stumps? But I think Pola was too took, and umpires haven't referred it to the third umpire. It's a high risk run. Hafiz Pola knows his partner Zain is struggling. He ran back for second despite the element of risk, and luckily the ball didn't hit the stumps. I'm not too sure how far Hafiz Pola was, but in the end, safe single. Look at that throw from the keeper, and I think he had already made it. Great running.
Terrific piece of running. He was well home by the time ball hit the stumps. This is in the air as well, but safely. Runs are difficult to come by at the moment, although Hafiz Pola is very much capable to compensate. But so far it is so good for the bowling side. Yes, he was desperate to keep the strike because of the big shot. He wanted to play big shots. He attempted. It was a full over outside the off-stump. It was offered, but I think the ball was extremely full, and that is why he wasn't able to connect. Zain has to come good for the sake of his team. And he succeeded. He succeeded and hit that one over long off for a beautiful 6. Finally, a lovely connection. He got Zain outside the off stump, half volley, and beautifully played up and over. It not only cleared the outfield, infield, but also it went over the boundary. Lovely 6. It will give him a lot of confidence because he was struggling a little bit until he played that stroke. Oh, big swing and a miss. Oh, no ball, no ball. Come on. Come on, that's not on. Absolute bonus here for Zain, the man who just got a maximum, then he missed it. Now he will try again with full license. He will try to clear the infield, he will try to clear the boundary. And that is how the no ball was conceded. Well above the popping crease. Very good call from the umpire, and an easy one as well. That wasn't a tight at all. He cleared the popping crease by a good margin. He overstepped. And this one is going towards the mid-wicket fieldsman. And who has taken that catch though? But because that was a free hit. So run for the batsman. Run for Zain. He kept a strike. 2 gone, none for 23. He lifted, but certainly not enough connection. The other man down there comfortably taken. So no real pressure for the fielder. So he made no mistake whatsoever. And in the end, single was added. If it not for the no ball or free hit, I think catch would have been dropped. That's what we have seen so far. That gives a lesson to all the players that play with relaxed mind and don't feel any kind of pressure, and anticipate the catch with soft hands. Keep your eyes on the ball. So whenever fielders go with the hard hands, they usually drop the catch. 23 for no loss. 2 overs have been sent down. The sponsors on the giant screen. It's Dynamic Engineering and Automation, Sin Integrated Emergency and Health Service, Zamin, Boost, UBL Amin, the prime sponsor of the competition. Now Rana Mohsin will continue. Was very good in his first over. This one is pulled and pulled with authority, and it's gone into the stands. Magnificent 6 from the bat of Zain. Lovely shot. He got the confidence when he smashed the 6 over extra cover in the previous over. And what a start of the new over. Just a fraction short. He waited for the ball. And what a great pull shot. The shot of real authority. The good thing about that shot, he waited and gave enough bat on that. He looked in great command when he hit that one. And he picked that one from outside the off stump. He's standing very deep in his crease. Oh my God. Oh mine, what is happening with the bowler? Wide ball, 3 runs. Every run does have a value here. And all of a sudden he missed the radar. Rana, who has been disciplined as far as bowling is concerned, and after considering the maximum, it decided to come round the wicket. It was a back of the hand delivery, went horribly wrong. And it was the opportunity as well for Zain to play the ram shot for a maximum.
This is in the air. And taken. And taken, although what the batsman saying? The batsman saying that there's no ball to the umpire. But I reckon didn't call it a no ball for him. It was a wide Rana. That event wasn't a super free hit. Leading edge, no control whatsoever. A very good catch indeed. It was difficult to run back, keeping eyes on the ball. And brief inning is over from Hafiz Pola. 1 for 32 on the board. North Nawabs. They are very happy, and they should be, because they are being shown on the television. Yes, spectators from different ages are present in this to witness a live action, and also winter vacation is very close, so many fans will make their appearance. AB Paro, the next man in, has replaced Hafiz Pola. 1 for 18 for Mohsin Rana, who hasn't been so bad. He looked bit erratic when he bowled a wide ball, but apart from that, he has been very accurate. He has 1 for 18 in 1.2 overs. He's got away with that, bowling around the wicket, and the angle moved the ball away from the right-hander. If the bowler pitches the ball a little further up, and then it can create further difficult angle for the batsman to make any sort of contact, especially if the batsman is looking to smash towards cow corner or long on. Yeah, by pitching it bit up, and by taking some fielders at Kelly, slip and point, you may bring those fielders in play. But you not only got to pitch it bit up, but also you need to move the ball a little bit from the right-handed. Quite right. These dot balls, these balls for 1 run are absolutely crucial for both sides. He got a piece of advice, Rana Mohsin. Because Mohsin has been bowling well. Now pressure must be on Zain, because in this over they haven't scored too many runs. But he has gone for the big one, but it is inside the boundary. Fielder, and catch has been taken. Another wicket goes down. Rana Mohsin doing a terrific job. Fine catch by Nizar lefty, and Qari Hamidullah was so close. There was almost a collision between these two players, and both batsmen opened together, and they don't have any kind of communication on that occasion. That would have been a disaster. Would have been a collision as well. It went miles in the air, not the best of timing. Look at that, almost a collision, and Qari Hamidullah did really well in the last fraction of a second. Withdrew himself. Zain Pathan has to walk back, 14 to his name, 2 for 33 on the board. Yahya is the newcomer. Nizar talking to the Rana Mohsin. Although Qari doesn't like to sort of a back out, Qari Hamidullah, but thankfully for the fielding side, he did withdraw himself from that catch. Absolutely, in the last fraction of a second. The last ball of the over. Yahya is facing his first ball. And Yahya has hit that one in the air. Oh, another catch goes down. Too many catches are going down. Fielders have oily hands here. I got a feel for Rana. He almost picked up his wicket number 3, and Yahya is extremely lucky. He went for the big heave, got the height, and the catch it was a cry when the ball left the bat. He was a solitary fielder, and he made a mess of it. A certain chance
and catch was dropped, and Yahya got off the mark as well. He's done and dusted. 2 for 20 Rana, 35 for 2 on the board. $35 for 2 North Nawab. They are 64 runs behind, and time for the change in voices. Naseem Rajput and Kainat Imtiaz will pick up the commentary. थैंक यू वेरी मच फरूक रियाज एंड राना अशफाक थोड़ी सी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं इस वक्त कायनात। अगर हम देखें नॉर्थ नवाब की टीम 64 रन्स मजीद दरकार हैं और ये रन्स अब उन्हें तकरीबन 21 की औसत से 3 ओवर में बनाने होंगे। एबी पारो ने पिछले मैच में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी। यहिया अभी तक इस तरीके से नहीं खेल पाए, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और उन्हें यहाँ पे थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा अपना उस जगह पे पहुंचने के लिए जहां वो जाना चाह रहे हैं। इस बार एबी पारो का जबरदस्त कनेक्शन, गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। मच नीडेड बाउंड्री फॉर नॉर्थ नवाब एंड एबी पारो। बॉलिंग बिल्कुल उनके रेंज में दी थी इस वक्त, जहां वो मारना चाह रहे हैं मिड विकेट की तरफ। स्टंप्स में बॉल करना इस वक्त थोड़ा शायद रिस्की हो सकता है। आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करें तो इजी रहेगा नॉट लियारी लेजेंड्स के लिए। कारी हमीदुल्ला आज इतने ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन यही खूबसूरती है इस यूबीएल अमीन कराची टी बॉल प्रीमियर लीग की। सेकंड ऑप्शन आपके पास होगा अपना टैलेंट जाहिर करने के लिए। सुहेल गेंद कर रहे हैं एबी पारो को, लेग स्टंप से खासी बाहर गेंद। 2 मजीद रन यहाँ वाइड की सूरत में मिलेंगे नॉर्थ नवाब को, जो एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ था वो खुद ही रिलीज कर रहे हैं इस वक्त थोड़ी सी वेवर्ड बॉलिंग के साथ यहाँ लियारी लेजेंड्स के बॉलर। इस बॉल को काफ़ी तेज़ शॉट लग सकती थी अगर वो ट्राई करते, क्योंकि लेग साइड की मुझे लगता है कि डिलीवरी ज़्यादातर फ्री हिट होती हैं। एबी पारो ऑन साइड पे हिट लगाने गए थे और गुस्से का भी इजहार किया उन्होंने, क्योंकि प्रॉपर टाइम नहीं कर सके। 1 रन बिलाखिर ज़रूर हासिल किया यहाँ पे। कायनात ये तो मैचेस हम देख रहे हैं, अब यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग विमेंस का सिस्टम भी शुरू होने वाला है, तो उसको आप देख रही हैं, किस तरह देख रही हैं इस सारे इवेंट को? मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये एक इवेंट इतना सक्सेसफुल रहा है, अगर वुमेन के पीटीएल स्टार्ट होती है इंशाल्लाह अगले साल जो है प्लान में, तो बहुत अच्छे जो प्लेयर्स डोमेस्टिक के हैं, जो लोकल हैं, वो आ सकते हैं। ये आउट होने का खतरा और एक और नुकसान। एबी पारो आउट। सुहेल विकेट दिलाने में कामयाब हुए और एक जबरदस्त विकेट, क्योंकि एबी पारो खासी फॉर्म में। लियारी लेजेंड्स का स्ट्रॉन्ग कमबैक और ये उनके सपोर्टर्स फ्लैग लेके जश्न मनाते हुए। विकेट्स इसी तरीके से लेनी होंगी लियारी लेजेंड्स को, क्योंकि अच्छी बॉलिंग ही एक रिजल्ट है उस तरीके की रिजल्ट्स लाने के लिए, और एक अच्छी अचीवमेंट लियारी लेजेंड्स की। एबी पारो 6 रन बना के वापसी की जानिब 45 for 3। विकेट शुरू में लियारी लीजेंड्स की भी गिर गई थी, लेकिन एंड में अच्छी बैटिंग उनके बैटर्स, खासकर निज़ार लेफ्टी ने जो बैटिंग की थी, 50 आज स्कोर की उन्होंने, अपनी टीम के स्कोर को एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक लेकर गए। और अब एबी पारो की विकेट भी गिर गई है, तो शफी आगा टीम लीडर, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां नॉर्थ नवाब के कैप्टन के कांधों पर। शफी आगा का भरपूर स्ट्रोक, बहुत ही शानदार अंदाज से टाइम किया कायनात।
बिल्कुल, ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन होती है, चेक शॉट्स खेलना इतना आसान नहीं होता फास्ट बॉलर्स को, और उन्होंने बेहतरीन तरीके से इसे मिड ऑन लॉन्ग ऑन की तरफ डायरेक्ट किया है, और एन एक्सेप्शनल चेक शॉट जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी बैटर के लिए, ये इस तरीके के शॉट्स खेलना। ऑन साइड की जानिब लिफ्ट नहीं किया उन्होंने इस गेंद को, जो अच्छी चीज थी। मैरिट के ऊपर स्ट्रोक खेला सामने की जानिब। लेग स्टंप से फिर बाहर विवर्ड हुए, यहाँ 2 छक्के ऑलरेडी खा चुके हैं यहाँ पर, और ये दूसरी वाइड बॉल की है सोहेल ने। मुझे लगता है सोहेल थोड़ा बॉडी में रिब्स की तरफ बॉल करना चाह रहे हैं, इस वजह से लेग साइड से वाइड हो रही है इस वक्त। लेकिन अगेन ये जो रन्स हैं इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ नवाब्स के लिए वाइड अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त। एक और जबरदस्त स्ट्रोक देखना होगा। कैच हो गए, बिल्कुल बाउंड्री पर कैच हो गए, और अच्छा कैच। इस तरह शफी आगा कैप्टन नॉर्थ नवाब भी आउट हुए इस ओवर में। दूसरी कामयाबी सोहेल ने दिलाई। अच्छी बॉलिंग, एंड ऑफ द डे विकेट लेने में कामयाब हुए कायनात। बिल्कुल, ये शॉट जो है वो अच्छी तरीके से टाइम नहीं किया गया था, उनकी जो ग्रिप थी वो थोड़ी सी मूव हो गई थी, रोटेट हो गई थी, इस वजह से ये शॉट सही से एलिवेट नहीं हो सका, और आखिरी में लियारी लेजेंड्स को एक और विकेट हासिल हुई। शफी आगा 6 रन बनाकर आउट हुए। एक गेंद पे छक्का लगाया, दूसरी पे आउट हो गए। यही स्ट्राइक करना होता है इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में, और शफी ठीक कर रहे थे। वो थोड़ा सा फ्लैट स्ट्रोक था जो हाथों में चला गया, वरना थोड़ा सा अगर लॉफ्टेड खेल जाते तो ये भी 6 रन हासिल कर सकते थे। बॉल उनको उनके रडार में मिल गया था। बस वही थोड़ा सी ग्रिप आपकी लूज़ हो जाए इस तरीके के, जब आप हिटिंग कर रहे होते हैं तो आपका जो दोनों हाथ हैं वो टाइट होना ग्रिप पे बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी भी रोटेशन हो तो मिस टाइम हो सकता है, और यही हुआ। मिस टाइम शॉट और बाउंड्री पे कैच आउट हो गए शफी आगा। अच्छा मैच, जबरदस्त मुकाबला जारी है। लियारी लीजेंड्स वर्सेस नॉर्थ नवाब। शाहजहां की ये गेंद थोड़ी बाहर की जानिब गई थी, आउट होने का खतरा, और एक और नुकसान यहां पर नॉर्थ नवाब को, और पे दर पे विकेट गिरने की वजह से अब खासी बैकफुट पे आ गए नॉर्थ नवाब। बिल्कुल, बैक टू बैक विकेट्स गिरना किसी भी टीम के लिए अच्छी बात नहीं होती, और इसी तरीके से लियारी लेजेंड्स दोबारा टॉप पर आते हुए जहां लग रहा था कि थोड़ा इजी हो जाएगा टारगेट, लेकिन लियारी लेजेंड्स के बॉलर्स ने बहुत अच्छा कमबैक किया। थोड़ा सा रुक के बॉल किया फास्ट बॉलर ने, यही रीज़न था शायद बैटर उस तरीके से टाइम नहीं कर सके बॉल को। शाहजहां का ताल्लुक शहजादपुर से है जो बॉलिंग कर रहे, और ये पूरे पाकिस्तान में बड़ा नाम रखते हैं शाहजहां ये बॉल क्रिकेट में। अब अपने कैरियर के आखिरी लम्हात में लेकिन कई साल बड़े टॉप क्लास क्रिकेट खेली शाहजहां ने। शाहजहां बॉलिंग जारी रखेंगे। फुल टॉस गेंद थी, गैप बनाने की कोशिश, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, सिर्फ एक ही रन हासिल कर पाएंगे। कारी हमीदुल्लाह का थ्रो बहुत ही एक्यूरेट, सीधा विकेट कीपर के पास। ये अच्छी बात है। देखें, पहली दफ़ा मैंने किसी फील्डर को यहाँ पे लॉन्ग बैरियर बनाते हुए देखा है, और बॉल के पीछे पूरी बॉडी को लाना बहुत ज़रूरी है जब आप फील्डिंग कर रहे हैं। स्पेशली यंगस्टर्स जो इस वक्त क्रिकेट देख रहे हैं और सीखना चाहते हैं क्रिकेट से, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना यहीं से ही कि लॉन्ग बैरियर्स बाउंड्री पे।
वेरी वेल बोल्ड शाहजहां, अपने चेंज ऑफ पेस से डिसीव किया यहाँ बैटर को। जुहेब बिल्कुल भी नहीं समझ सके उनकी इस गेंद को। बड़ा एक्सपीरियंस है शाहजहां का, उस्ताद शाहजहां कहलाते हैं ये। और फिर ख़ास तौर पे जो अभी आप बात कर रही थी कि ज़रा आप अगर पीछे आ जाएंगे गेंद के बेहतर, एक तो टेप बॉल का ज़्यादा वेट नहीं है, फिर ड्यू फैक्टर बहुत है जो स्लिप कर सकता है गेंद। इस बार शाहजहां ने अपने चेंज ऑफ पेस से फिर डिसीव किया और एक और विकेट यहाँ। शाहजहां इन फुल फॉर्म, ये एक और विकेट दिला दी यहाँ शाहजहां ने। काफी ऊंचा शॉट लगा था और देखा गया कि लियारी लेजेंड्स ने अपनी कैचिंग बहुत इंप्रूव कर ली है। पिछली गेम्स में थोड़े कैचेस ड्रॉप हुए थे, लेकिन अब आउटस्टैंडिंग कैचिंग बाय लियारी लेजेंड्स, और ये फुल प्लेटेड शॉट दोबारा नहीं मार सके। शायद उनकी हाइट और बाउंस की वजह से जो बॉलर दे रहे हैं इस वक्त, इतना आसान नहीं हो रहा उन्हें मारना। अब चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे शाहनवाज, बगैर कोई रन बनाए आउट हुए यहाँ। जुहेब अब सैफुल्लाह बैटिंग के लिए आए। हनीफ आजाद बैटिंग के लिए आए, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आजाद के भतीजे हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ, और इस बार वाइड का सिग्नल दिया। बहुत ही क्लोज कॉल थी, अगर हम देखें तो कायनात ये बहुत ही क्लोज कॉल थी। काफ़ी सारी क्लोज कॉल्स पिछली गेम्स में होती रही हैं। अंपायर का डिसीजन आखिरी होता है, लेकिन ये कि अंपायर्स पे भी थोड़ी सी चेक एंड बैलेंस डेफिनेटली होना चाहिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो सके। फुल टॉस गेंद थी, लॉन्ग ऑन की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया। इसके बाद 1 ओवर का खेल अभी बाकी है। नॉर्थ नवाब के पास कितनी लीड कम कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब लियारी लेजेंड्स चूंकि वो विकेटें भी हासिल कर चुके हैं, अब लीड लेने से रोकना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। वेरी वेल बोल्ड शाहजहां, वेरी वेल बोल्ड शाहजहां। जबरदस्त बॉलिंग शाहजहां की जानिब से। इस ओवर में 2 आउट भी किए और 3 आउट किए। शानदार बॉलिंग, 1 for 3। वेरी वेल बोल्ड जो अपनी टीम को इस मैच में वापस लेकर आए। शाबाश 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 शाबाश। लास्ट ओवर होगा ये नॉर्थ नवाब की इनिंग का। ये गेंद करने आ रहे हैं या रन अप अपना जरा ठीक कर रहे हैं, क्योंकि बैटर तैयार हो गए थे। क्रिकेटिंग फैमिली से ताल्लुक हनीफ आजाद का। अब्दुल सलाम, न्यू बॉलर फ्रॉम लियारी लेजेंड्स। हनीफ के दादा तो बहुत ही बड़े कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान के साथियों में से थे, आज़ाद साहब, और नामवर एक्टर थे। वेरी वेल बोल्ड, शानदार बॉलिंग। देखना होगा, हनीफ आउट हो सकते हैं लेकिन आउट नहीं किया, क्योंकि एक्स्ट्रा का रन नहीं देना चाहते थे। अगर ये थ्रो विकेट पे नहीं लगती तो एक और रन बन जाता। अच्छी हिकमत अमली यहाँ सलाम की, एंड सलाम वेरी वेल बोल्ड इन होल इवेंट। काफ़ी यॉर्कर, फुल यॉर्कर डिलीवरी थी, और मुझे लगता है कि विकेट कीपर्स को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो अपनी जगह से विकेट को टारगेट कर सके पहली बार में, क्योंकि बहुत सारे रन आउट्स इस तरीके से मिस हो जाते हैं। टेप बॉल में 3 विकेट कीपर होते हैं, अगर आप देखें तो करीब करीब खड़े हुए दिखाई देते हैं, स्लिप में भी और लेग स्लिप में भी।
और ये देखें सलाम गेंद को जो ग्रिप करते हैं, मलिंगा की तरह करते हैं। वेरी वेल, सेकंड यॉर्कर लेंथ पर डिलीवरी, टांगों में बिल्कुल जड़ में ऐसा लगता है वकार यूनुस का इन स्विंग यॉर्कर आ रहा है, जिसने बड़े बड़े बैटर्स की टांगें तबाह कर दी। और ये ट्रॉफी जो सीजन 3 यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की चैंपियन टीम लेकर जाएगी। और ये इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है, जिस तरीके का कंपटीशन हम देख रहे हैं यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में, ये खासा मुश्किल है कि ये प्रेडिक्ट करें कि कौन सी दो टीमों में से कोई एक चैंपियन बन सकती है। इवन 4-5 टीमों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक हमने नॉर्थ नवाब की जानिब से देखा, फिर लियारी लीजेंड्स की जानिब से देखा, मलीर मलंग्स, गुलशन गौहर, क्लिफ्टन पॉपुलर, डीएचए दबंग, ये वो तगड़ी टीम्स हैं जो मुश्किलात पैदा करेंगी। बोल्ड कर दिया इस बार, सलाम की बहुत ही अच्छी बॉलिंग, हनीफ आजाद का पास कोई जवाब नहीं था, बोल्ड हुए। ये छठा नुकसान उठाना पड़ा है नॉर्थ नवाब की टीम को, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लियारी लीजेंड्स। देखें उनका जो एक्शन था उसने डिसीव किया है काफ़ी बैट्समैन को, और साइड आर्म एक्शंस बहुत डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि बॉल्स थोड़े से लो ट्रिजेक्ट्री में रहती है, और यही एडवांटेज हुआ। हनीफ आजाद वेंट फॉर 1, 60 for 7 नॉर्थ नवाब्स। इस तरह का एक्शन बॉलर का जब होता है तो थोड़ा सा डर भी लगता है ना खेलते हुए कि वो कौन सी गेंद आगे करेंगे, कौन सी बीमर मार देंगे, हाथ से भी स्लिप हो जाती है ऐसे बॉलर्स की अक्सर। नसीम भाई, मेरा एक्शन भी एग्जैक्टली इसी तरीके का है, और बहुत मज़ा आता है जब सामने वाले को डर लगता है इस चीज़ से। जिनको डर लगा था उन्होंने ही तो बताया है मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है, और यॉर्कर्स बहुत अच्छे मार सकते हैं जब आप साइड आर्म एक्शन से अपने, क्योंकि वो बहुत डिसीविंग होते हैं, लो होते हैं और स्विंग करते हैं आपके बहुत आखिरी में। शहराम बैटिंग के लिए आए, अच्छी गेंदें, जबरदस्त सलाम, वेरी वेल बोल्ड। और इस वक्त लियारी लीजेंड्स की टीम, कल ये दोनों टीमें अपने मैचेस जीत के गई थी कायनात, और आज देखते हैं कि इनमें से कौन मैच जीतता है, लेकिन दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। जितना ये मैच डॉक्टर कदीर डॉन KTPL, ये तो बहुत बिगड़े हुए हैं, ये तो क्या कर रहे हैं। हाँ डॉक्टर कदीर डॉन KTPL, ये रौनक है इस वक्त। आप जिस जगह देखें आप, कल इन्होंने मुझे भी ऐसा डराया था। ऑन साइड की जानिब खेला और 1 रन हासिल किया। अब तो सलाम थोड़े से स्किटी बॉलर हैं, क्योंकि साइड आर्म हैं तो स्किट करना बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि बॉल स्किट करेगा, इस वजह से डिफ़िकल्टी हो रही है बैट्समैन को इजीली शॉट खेलने के लिए। लास्ट बॉल है इनिंग की नॉर्थ नवाब की, अच्छी लीड दिखाई दे रही है इस वक्त लियारी लीजेंड्स के पास। आसिफ इस आखिरी बॉल पे क्या कोई बड़ा स्ट्रोक खेलने में कामयाब होते हैं या नहीं। 4 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाया उन्होंने, और एक और बहुत ही अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ पर ये बॉलिंग है। 1 रन बनाया, दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं, और दूसरा रन नॉन स्ट्राइकर पे खड़े बैटर की कोई इंटेंशन नहीं थी ये रन बनाने में। इस तरह 1 रन का इजाफा हुआ और पहली इनिंग मुकम्मल हुई नॉर्थ नवाब की। 62 for 7, 37 रन की लीड यहाँ लियारी लीजेंड्स की। ये आखिरी बॉल, एटलीस्ट 2 रन बनाने जाना तो चाहिए था। बिल्कुल आखिरी बॉल थी, और डेफिनेटली मैक्सिमम स्कोर करने के माइंडसेट होना चाहिए था इस वक्त बैटर का। लियारी लीजेंड्स का डग आउट खुशियों भरा। 37 रन की फर्स्ट इनिंग लीड बहुत ही क्रूशल हो सकती है इस मैच में। कोई बहुत ही अच्छा स्पेल दरकार होगा नॉर्थ नवाब की जानिब से अगर उनकी टीम ने कमबैक करता है इस इनिंग में। 37 रन की लीड खासी बड़ी लीड है, और ये इनिंग हाईलाइट हाफिज पोला पहली गेंद ऑन साइड की जानिब खेली, 4 रन हासिल किए, लेकिन उसके बाद हाफिज पोला ज़्यादा देर कयाम नहीं कर सके, और ये कैच भी ड्रॉप हुआ था, लेकिन उसके बाद कुछ अच्छे कैचेस भी लिया। ये मिड विकेट की जानिब जोरदार छक्का, और ये हाफिज पोला के आउट होने का मंजर। अच्छा कैच यहाँ पर लिया सलाम ने,
ये ऑन साइड की जानिब बड़ी हिट और एक अच्छा कैच। यह कॉलिंग का बड़ा फुकदान है, इसमें हम कायनात बात करेंगे। ये बॉल में दिखाई देता है। ये एक और कैच ड्रॉप किया है यहाँ पर, लेकिन कैचेस लिए भी और ड्रॉप भी किए। ये सब गेम का हिस्सा है, लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि कई कैचेस लिए भी यहाँ। और ये बहुत ही खूबसूरत शॉट शफी आगा ने खेला था। इस बार शफी आगा भी आउट हुए छक्का मारने की अगली गेंद पर, लॉन्ग ऑफ पर। इस बार लॉन्ग ऑन की जानिब बड़ी हिट मारने की कोशिश और एक और नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा था नॉर्थ नवाब को। ये एक और नुकसान यहाँ पर हुआ नॉर्थ नवाब को, जो यके बाद दीगरे उनकी विकेट्स गिरती चली गई। ये हनीफ आजाद के बोल्ड होने का मंजर। यूं ये इनिंग खत्म हुई नॉर्थ नवाब की। ये स्कोर कार्ड टॉप ऑर्डर अगर हम देखें 14 रन जैन के और हाफिज कोला 12 रन। उसके बाद से कोई दूसरा बैटर डबल फिगर में भी नहीं जा सका। अगर कोई गए तो 17 रन एक्स्ट्रास की सूरत में, जिसका फायदा हुआ यहां नॉर्थ नवाब को। बॉलिंग फिगर वेरी वेल बोल्ड, टू विकेट ईच। राना मोहसिन, सुहेल एंड शाहजहान, जबरदस्त बॉलिंग। शाहजहान वेरी वेल बोल्ड, 4 रन देकर 2 आउट किया। आखिरी ओवर बड़ा अच्छा रहा। ये लास्ट 2 ओवर्स जो थे कि जिसमें 5 रन बने सिर्फ, उसने लियारी लीजेंड्स को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला खड़ा किया है। और यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो लियारी लीजेंड्स अपनी सेकंड बारी का आगाज करेगी 37 रन की लीड के साथ।
Hello and welcome once again from DHA Sports Club Moin Khan Academy for this another game of UBL Amin Karachi Table Premier League Season 3 between North Nawabs and Lyari Legends. We just witnessed the end of an innings for North Nawabs where they were bundled out for just 62 in their allotted 6 overs, giving a healthy lead of Lyari Legends by 37 runs. There you see the two on-field umpires are making their way out there at the centre. It was a struggle for North Nawabs. They could only manage to score 62 runs in reply of 99 that was posted by Lyari Legends in their first innings. As a result, Lyari Legends have a very healthy lead of 37 runs. What do you reckon about that, Falak? Well, lead is a lead, Zishan, I can tell you, and 37 runs is a big lead. It's a big margin in a 6 overs match. There you see the players of North Nawabs making their way to the middle with a lot of responsibility on their shoulders. And as we see, both of the opening batters are just walking towards the center as well. Left and right hand combination always important and helpful for the batting side. Well, we have seen so many wickets falling down in the previous match as well as in this particular game, especially in that innings of North Nawab. There you see the equation is right there in front of you. Lyari Legends lead by 37 runs. We have seen so many wickets falling on the catches, but we have seen number of drop catches as well tonight. Well, obviously the percentage of drop catches are more than the catches that have been taken. But one thing all these table players will be looking forward to is to improve their fielding, because it not comes to ground fielding when you are playing table cricket. Usually it comes to catching under the sky. You're right. It's a very good point that you make, that taking catches, especially under the lights, is not that easy. But they've picked quite a few as well in between. So they need to practice more. And especially under the lights, I would suggest these players to do the practice. And especially coming to the ground before the start of the play, they got to do some practice, because we already are starting at 6:30 and we get the lights on with the start of the first match's play of the night. So they have a time to do the practice, and if they're not doing it here, they're not going to do anywhere, because this is the best facility they're having here in Karachi, across the country, Pakistan. Yes, indeed. There you see the two openers already out there in the middle for Lyari Legends. Qari Hamidullah once again opening the batting. And alongside his partner, the left-hander Nizar Lefty, was simply sensational in the first innings. He was carrying the load of the batting lineup in the first innings for Lyari Legend. Scored magnificent 66 of just 18. And he'll be looking to repeat the heroics in the second innings as well. On the other hand, North Nawabs were clearly not on top of their game in the first innings of the bat. Well, gentlemen, on your screen will be definitely trying to do the performances that he's been doing throughout the course of this competition so far. And he has struck some big guns, struck some gold. And this is what is definitely required by him, as they are 37 runs behind even before the start of this innings. Lead by 37. Qari Hamidullah stretching out. Well, I was really surprised by the shuffle in the batting order of North Nawabs in the previous innings. And Pathan came out to open the batting, whereas he has been batting at the middle order. And the likes of A.B. Paro and Hafiz Pola could not fire tonight, and that was the main reason why North Nawabs couldn't put up a good score. There wasn't any need to change the batting order. Let's play. First delivery has been tonked on the leg side by Qari Hamidullah, announcing his arrival in the grandest of fashion. Well, he's pretty severe. Anything little short, asking for punishment. And he has really swiveled and got the connection to his liking. Got the maximum result. A gentle loosener this from Asad Pathan coming around the wicket. A length has been offered, and he goes once again, hitting it all along the turf. Won't get a boundary, will just get a run. Well, intentions are pretty much clear by Hamidullah. He's going to just continue. He's not going to hold himself back. And this is what he's known for, and this is why he's there at the top of the order, to do some serious bit of damage if he can at the start of the innings. Just provide his side with a heroic start they're looking for to get themselves into a very good, healthy lead. They are already 37 runs ahead with the start of the play. And it's good to see that the big names like Qari Hamidullah, who didn't put up a better performance in the first few games, now stepping up for their team.
Nizar lefty has struck that on the offside. Once again, that region is usually stays unprotected, and as a result, Nizar Ali will get a boundary of the very first ball. Well, it's always gorgeous to see these left-handers going for these square drives. It was slightly over-pitched. It was a full-pitch delivery, in fact, and he's just squeezed it through backward of point for 4. That didn't come from the middle of the bat, it came from the base of the bat. That's why he was checking his bat as well, Nizar Ali. But he still got the desired result to his name. I've got off to a flying start. Once again, 11 of just 3 deliveries. Effectively, they are 48 runs ahead already. Down the leg side, it's going to be a wide, so they're going to get 2 more runs. As a bowling side, they won't be looking at the score in this particular innings for Lyari Legends. They'll be eyeing the number of runs that have been added because of the lead that they conceded in the first innings. They didn't need to use the bat on that occasion to get their lead to the 50. So they are effectively now 50 runs ahead. He goes over extra cover. That's a beautiful looking stroke from the other lefty. And that has gone all the way for 6 as well. Well, there has been a shot of authority by the left-hander. Timing behind it. Have a look at that. Inside out. Easy as you like. Elegance, poise, and some brutality as well, as he got the connection for the maximum. There you see. You can watch it all day and all night. Full toss, getting a thickish outside edge. It's not going to run down towards the boundary ropes, but they will pick up another couple. It has gone horribly wrong for Asad Pathan in this particular over. Yeah, it was a little high full toss, got away with that. Maybe searching for that magic delivery of his, that Yorker. He's foxed quite a few. I've been mentioning from time and again. Searching for that delivery. At the moment, not getting it right. He has been way off target in this over. Asad Pathan need to finish off well. Getting a thickish inside edge, won't get a run. It's going to be a dot ball to end the over. It's 21 for none. That's the VIP box where Mr. Harun Rashid, legendary cricketer Javed Miandad, alongside Tausif Ahmed are enjoying a hot cup of tea. Good to see those greats fully into it. They are part of this UBL Amin presents KTPL Season 3. Always nice to have a luxury of these type of greats, because when you're doing these activities under the shadow of these greats, it's always a confidence booster. Arshad Afridi has been given the ball. Picked up on the leg side. It's into the gap, 1 bounce and into the fence. He got up the mark in a similar fashion, got a maximum to his name, Hamidullah, this time getting a boundary down towards square leg. Missed his mark by some margin and just whipped away off the legs by Hamidullah. He was so still at the crease when he executed that stroke. That's the beauty of the bat. Yeah, he got into a perfect position to play a stroke like that. Just a little shivel across the off stump and picked it up beautifully down towards leg side. It's short. He has pulled that. It's in the air. There is a fielder out there. And that has been dropped. And not only that has been dropped, but that might have gone all the way for 6 again. The on-field umpire, Shahid Aslam, will refer it upstairs. To the naked eye, it looked like that the ball did land beyond the boundary ropes. It may have just gone all the way. There you see, it came out of the middle of the bat. He has to drag it from way outside the off stump, and the fielder was in business, just couldn't get hands to it. And it's landed inside the skirtings. I get the feeling it's a boundary. Yeah, 4 more inches and that would have been a maximum.
the Shahid Aslam referring it as a boundary, but they will take it nevertheless, because at least Qari Hamidullah did not lose his wicket because the catch was put down. Don't want to lose the initiative they got from the first innings. It's short. He has muscled that over mid-wicket. That's going to run away for 4 as well. Even Irshad is not finding his line or right in this over. Yeah, it was little short and he's picked his spot. Did Hamidullah. He's having a form of his life here and he's really making the bowlers go the journey. Anything in his arc, he's going to bash them. They got 21 runs in the first over, have already hit 3 boundaries in this one. Just get the feeling North Nawabs are not even putting up an effort. Even the fast bowlers who are trying to operate, there is not much pace behind those deliveries. Pitched up. Once again, he was looking to pick that on the leg side, got that inside half of the bat. And he was lucky that it was not a boundary for Irshad. Got it right, did the bowler on that occasion in the block hole. But only if you can get it right, you're going to get away. Otherwise, if you miss your mark by an inch, you don't have to miss it by a long way. These batters have no mercy. And they are so skillful, so proficient with their style of play, they can hit you out of the park more often than not. Well, the hero of the night so far for Lyari Legends is now on strike. It's short. It's a swiveling pull shot towards fine leg, and that's going to run away for 4 as well. He's not learning from his mistakes, Asad. He's continuously bowling it shorter in length, and he's paying the price for it. Well, he didn't get entirely out of the middle of the bat, but he went the right direction. Some part of the bat it needed, and this is what he got for an easy boundary. It was easy pickings for the left-hander. We haven't seen a perfect Yorker or even an attempted slower one so far from these 2 bowlers. A slower one. It's picked up in the air. Chance with the fielder at long on, and that has been taken. Out of the box, a fielder has managed to pick a blinder of a catch down towards long on. And Nizar lefty has been dismissed. Well, it just means that we don't like simple catches. That was a tumbling effort, diving forward, never easy. And number 18 reminds me of Shoaib Malik with the jersey number, has taken a beauty like Shoaib Malik. Nizar Ali has to go for 16, 38 for 1. North Nawabs have managed to break the opening stand. Nizar lefty was dismissed on the last ball of the previous over. It's 38 for 1 after 2. Dawood Suleiman is the new batter in, but he's going to be at the non-striker's end because the wicket fell in the last ball of the previous over. Irshad, after giving away 70 runs, managed to pick up a wicket. Well, one would say, Zishan, it's 2 overs 38, and look at how far that lead has been stretched. 75, and still 4 overs to come. I wonder if we are going to witness another high run chase. We have already witnessed 150, if I'm not wrong. And this is going to be the same sort of stuff, unless a collapse happens with the batting. There you see, Saram, the left-arm fast bowler, has been given the ball. Yeah, Saram just bowled 1 over in the previous innings that he was hit away for 28 runs. That was when Nizar Ali was on strike for Lyari Legends, but now he has been dismissed. He's going to be bowling to 2 right-handers. Hamidullah, meanwhile, is going to be on strike. Was angling across the right-hander. Hamidullah not happy with that decision from the on-field umpire. Well, he went across the line. He was going back and across to chase that line. That's why Saram got away with that line. Otherwise, it could have easily been declared as wide by the umpire.
Another swing and a miss. So far, so good from Sehram. It's 2 dot deliveries to start the over with. Well, this is Sehram we saw yesterday night. He was mixing it up, going across the right-hander, and predominantly was persistent with his slow deliveries, and he was banking on his slow deliveries, which were very deceptive. And he was amongst wickets as well, taking 3 wickets. But I don't know what happened to him in the last innings when he conceded 28 runs. Nizar Ali took him to the cleaners. Getting a thickish half outside edge, but it's just going to be 1 run to Hari Hamidullah. I think it also has to do with the stage where you are being introduced by the captain, because Sehram last night was introduced very early into the attack. That's why he was able to put those pressure on the batters and managed to pick up 3 wickets, whereas in the previous innings he was asked to bowl the 5th over when Nizar Ali was all set. Yeah, it's a very good point you make. And the other thing is, Nizar is a left-hander. So to bowl to a left-hander when you're a left-armer, it becomes easy pickings, because you are literally getting that ball into that left-hander's hitting zone. Shot, hitting it over extra cover. There is no fielder out there. It might just trickle past the boundary ropes, and yes, it does. A boundary to start the proceedings for Dawood. Well, not the connection he will be proud of, but still he gets a very good result for it. It was short and it was swatted away. There was no fielder at the sweeper cover, and he's got himself a boundary there, Dawood. That was a slower bouncer attempted. He got on top of the bounce and just slapped it over extra cover. Once again picked up. This time getting a proper connection, and over the stadium the ball has landed. A maximum to Dawood. Overcompensating was the captain, I would say, because he was suggesting him not to give him a width, but when you bowl in his zone, he will do this to you. He will make you travel out of the park, out of the ground. My word, that one hit the roof. It's a biggie. Woo! That's a big hit. That ball clearly must have landed in any part of North Karachi. Hammers it over extra cover. It's into the gap. There is a long off fielder in place, but he is not going to get there. A boundary to end the over with. Well, the ball was struggling to get to the fence, but it was enough timing behind that. Eventually, it goes to the skirtings, hit the skirtings. Have a look at that. Perfectly picked the gap. Did Dawood on that occasion, beats that diving fielder, literally dived over the ball, and it was struggling to get to the fence, eventually got it there. To boundary to finish the over. 53 for 1 after 3, and it's going to be a change in the commentary to take you through to the end of this innings. Rana Ashfaq and Farooq are pretty much ready. Thank you very much, Shan Khalid and Falak Sher. The show is on. 53 for 1 from Lyari legends. Hamidullah on 21, Dawood on 14, and both are very capable. They are getting real hammering. North Nawab bowlers. Saifullah is ready to deliver over number 4. And the comm box, once again, good evening, Rana Ashfaq. Good evening, Farooq. And look at the lead. It's a massive one. 19 3 overs. Suppose if they add another 40, 50, they're going to give them 140, 135, which will be an uphill task. Swing and a miss. Went for the big heave with change of pace. Hari Hamidullah was too early onto the shot. He tried to heave. Not much space behind the ball from Saifullah. Hamidullah is a good batsman, no doubt about that. So is the Dawood, and so far have done a very good job. Not only in the first innings, but particularly in the second innings. The way they're batting, it looks like they're going to get a big score here. Smashed away. Great sound of the bat. Look at that. That's gone country mile. Absolutely a magnificent shot. Right out of the meat of the bat. There you see. Sweet sound came
off the bat, and the moment it left the bat, it was quite evident that it would go all the way. It gives absolute satisfaction to the batsman when he finds the middle of the bat and smashes the six. Oh, once again, try to heave it. He tried to repeat that shot. No contact whatsoever. Kari is looking relentless now. He's having a go almost at everything. And he's succeeding as well at a great extent. Got to be careful as far as the length is concerned. Goes straight, goes long! And it's been taken just at the edge of the boundary. He can't believe it, Qari Hamidullah. And umpire is also not too sure. Everyone is in a confusion, including Farooq Riaz. He thought it would go all the way, but there you see it. He did middle that one, I reckon. Oh, what a good catch. But did he touch the rope? Not quite sure, but I think fielder did a fantastic job because he jumped in the air and then made the reverse cup of his hands and then brought off an absolute stunner. Hamidullah goes for 27. Legendary Javed Miandad is watching the match. So is Harun Rashid. It is always good to have these legends. Ashraf Pathan has come out to bat, the captain. There's a piece of brilliance from Shahram right at the edge of the boundary. It was a good strike, but he timed his jump to the perfection to remove Qari Hamidullah. Saifullah got a wicket. Swing and a miss outside the off stump. Once again, he was in no position to make any sort of contact. It starts with a dot ball. Good bowling from Saifullah. He got spanked for a massive six. But I think credit should be given to the fielder as well, who took a blinder when they dismissed Hamidullah. Otherwise, he was looking absolutely dangerous tonight. Spot on. He was just a touch unlucky. Waited and beautifully smashed. My word, big one again. Ashraf Pathan joins the party. Oh, he muscled that one over mid-wicket. That one pitched fairly back. Oh, there, he waited on the back foot and then backed himself with a big hit. He was camping on the back foot. Once again, length was a problem. Change of pace, but well read by Pathan. 6 to end the over. 2 for 65. Overall lead has already gone past 100. 102 is the overall lead. 12 balls still to be bowled. What are they looking at, Farooq, in your opinion? I think they will finish somewhere around 95, 90 at least. And global broadcast, more than 84 countries are watching this contest, Jio Super in Pakistan, and also various social media platforms. You can catch the live action of UBL Abeen KTPL Season 3. At times, interesting posts can be seen on social media as well about KTPL Season 3. Not the best of timing. It's a bum ball, just one. They need a quiet over here. Not Nawab to restrict them somewhere around 100, but already they are well in front. You can see 103 is a lead for Lyari Legends. Oh, Mr. Don is with Naseem Rajput. He's smiling away. Leading edge. That's gone way up. That's gone way up. Who wants it? It's a tough one. Dropped. It was on the cards. Whenever the ball goes high in the air, usually it
drops on the grass rather than the ends of the fields. That's what we are watching regularly. Especially when two men converge, the chances of dropping the catch gets higher. Leading edge, way up. Ashraf Pathan was also certain that would land on the grass. He has been deceived here on this occasion. They try to heave it once again. Ashraf Pathan has already smashed one gigantic maximum. Yeah, Azib bowled a very good disguised ball and we bamboozled the batsman. He was aiming to hit that one through the onside, but ball came a bit late. Good bowling from Asif. Margin of error so minimum against both the players. Well bowled, lovely Yorker, just outside the off stump. Although they have picked up a single as a result of a leg bye. This is where they should be bowling all the time. If they want to restrict the batsman, or if they want to avoid to be to get hit. Great bowling from Asif. Batsman playing with a high back lift, his chances are minimum to dig out the Yorker. It was well delivered. Swings it away to the onside, one bounce to the boundary. Not the best of connections, but pretty effective and great placement as well. At times it is very tough to understand what happens to a bowler. Just bowled a very good 2 or 3 balls, then he bowled that one. That one pitched fairly back and batsman pivoted on the back foot and then pulled it away onto the onside for 4. That was a hit-me ball. I think he could have bowled much better than this one, which he bowled. Low full toss. Has he struck well enough? Yes, more than enough. Goodness me, it's a long hit. It's getting even worse for Asif. First he bowled a short and rising ball which punished for 4 and then bowled a full toss. My word, that was a poor ball and it smashed over mid-wicket. Not a complete swing of the bat, just pure class from Ashraf Pathan. Pretty much from toe end of the bat, but he knew it straight away. 80 for 2 after 5, Lyari legends. I just fail to comprehend why do they bowl 2 or 3 full tosses after bowling 3 or 4 good deliveries, and why do they bowl half trackers or back of length balls after bowling good Yorkers? They play throughout the years, I think throughout the year, but they still miss their target quite too often. Well, they have to learn it. They have to learn it very quickly. It's a matter of bowling just 2 overs. If their length are at 6s and 7s, certainly there is no excuse. And also they need to improve their fitness as a fast bowler. If you are fit enough, you can deliver on the perfect spot and you can keep the batsman quiet. So final over is about to begin. Saram, who picked up a blinder and now will deliver over number 6. 117 is the overall lead. It is stretching all the time. Within the tram line, starts with a dot ball. He's surprised. Bad judgment from Dawood. And good start for the Sahram. He bowled a dot ball. Now pressure will be on Dawood to put him away. Let's see if he can succeed. Full toss, hard and flat. And it goes for 4 runs. Not the best of effort at long on. Oh dear, oh dear. That's what I was talking about. He just bowled a very good ball outside the off stump and then this happened. He bowled an easy full toss to the batsman and batsman took full toll of that and Don is dancing around. There you see. Oh! Atmosphere is absolutely lightning here at DHS Sports Club, Moin Khan Academy. Oh, he's getting it. He's a good dancer. Lovely moves from Dr. Don. His
enjoying himself. Not only is a Don, he's also a doctor and he's a Chotu as well. Ah! And he can do some tumkas as well. Missed out, friendly full toss outside the off stump. And he got away with that. He didn't like it, Dawood Pathan. It's a waste of a delivery. Again, Sehram is jerking his legs to get his spikes cleared. 123 is the lead. It goes offside. Is it long enough? Beautifully played over the boundary rope. That's the maximum. Bit was offered and well punished. This is as good of a shot as you will see ever. Oh, look at that. He played away from the body, but still got a good command on that one. That was a fantastic shot. Indeed. Pace was there and the width was offered. So he had the opportunity to free his arms. And finally, up goes the arms of umpire. Officially, it has been declared as 6 here. So after a dot, a very good strike indeed. Fantastic piece of batting from Dawood. He's reached up to 25. Low full toss, goes over long off. 6 more. Gigantic one. This one got what it deserved. Another full toss. Again, it has been tonked straight down the ground. And look at the power and authority which batsman had. Juicy full toss. Just a fraction short on this occasion. Hasn't got the timing right. He will try to come back for 2. And they have comfortably completed a couple of runs. And that brings the end of the third innings of the match. It's exactly 100, I guess. He has 100 for 2 after 6 overs. It means 137 runs a lead picked up by Lyari legends. Exactly what we were predicting, Farooq and myself. 95, 100, 137. And now what about target for 138? Massive one. It's a huge one. That will certainly challenge North Nawab. They were not clinical in the first innings and they know they have to bat out of their skin. So good partnership between Ashraf and Dawood. They must be very pleased with the proceedings. And they are being welcomed here by their teammates and officials. Great appreciation, Qari Hamidullah, who hugged his player, who also played well. Wonderful show once again from Lyari legends. They are certainly on the driver's seat. Great batsmanship from Qari Hamidullah, it's Dawood Pathan and Ashraf. And apart from few dot deliveries, they were not really in the game, North Nawabs. Some lusty blows we saw straight down the ground. A lovely shot to the offside for a maximum from Dawood as well. Perfect setting here in DHS Sports Club Moin Khan Academy. It's day 11. That's the highlights. Qari Hamidullah turned it away to the onside. Lovely batting, goes offside for 4. The lefty lifted over long off. They kept hitting boundaries. Picked it up from outside the off stump. Lovely shot. Missed by the fielder. And once again picked it up from outside the off stump for a flat 6. Pick-up shot to the far leg region. Nice and safe for 4. And then goes straight towards long on. Lovely catch. Tumbling effort. And deliberately lifted over cover. Bad delivery and picked it up nicely by Dawood. And hammered away by Hamidullah. It went really so far back. Lifted beautifully, but fine catch. One of the best catches of the competition. And Ashraf Pathan joined the party. That was the first 6 picked up by him.
and then turn it away for 4, 1 bounce 4. And then low full toss, beautifully struck, and it was a long enough hit to pick up half a dozen. And 6 through the offside, just landed over the rope, and full toss, and it was a good enough connection. So 6 to end the innings, and that's a scorecard. Healthy one, 27 of 13 for Hamidullah, 16 for Nizar, 33 for Dawood, and 18 of 6 for Ashraf Pathan. In the end, 100 for 2, exactly in 6 overs. That's the bowling card. 1 wicket for Shah, 1 for 17, 1 for 12 for Saifullah, whereas Asif and Sehram stayed wicketless. So both batsmen are absolutely ready right at the edge of the boundary to make their appearance for the one last time in this contest. 4th innings is about to begin, and they have to climb the Mount Everest. And in the comm box, I've been joined by Falak Sher. Good evening once again. Thank you so much, Farooq. There you see, Lyari Legends versus North Nawabs, whereas Lyari Legends have given them a target of 138. North Nawabs, their both openers are making their way to the center, and it's very important that especially Paula has got to go berserk. Normally he goes berserk. He's that kind of character, and he's got to go berserk tonight if they are to make a match of it. There will be a contest in our hands. There you see, Hafiz Paula, Parodin. If this guy gets going, I tell you what, we've got a match in our hands. For Shafi Agha will be partnering him. But still a tough challenge for both the batsmen, for entire North Nawab team. But first 2 overs are so important. And Rana Mohsin will start the proceedings. It's not an easy bowler to handle for batting perspective. They have to play an absolute blinder, North Nawab, that's for sure. Yeah, he's been very dangerous with the ball, has been Rana Mohsin. There he goes. And here goes Paula for a maximum to start things going for him. That's well struck, all right. Come on, we need this. Smash one of the bikes that is available for the gift. Dropping the ball short and turn it away with real authority. Nice shot, really. Ideal start for Hafiz Paula and North Nawab. This time from a different angle, but Paula has struck all that right for a boundary. 6 followed by a boundary by Paula. Dropping the ball short once again. Horizontal bat came into play from Hafiz Paula. Rana Mohsin operating from around the wicket and picked it up from outside the off stump. Not real power, but perfect placement. Well, when he's about to attempt those pull shots off the back foot, just gives me the glimpses of a little bit of a Caribbean touch in him. Typical Caribbean pull shots off the back foot. He's that type of player. They need him to fire and fire big tonight because they've got a gigantic task to do. Down the leg side, we'll have to re-bowl. He's slightly under pressure now. Rana Mohsin is the kind of bowler who can come back very strongly. He's an experienced campaigner. He's got the habit of breaking partnerships. But at the moment, the start belongs to Hafiz Paula. Will Rana Mohsin pull the things back? Oh, that is his area of strength. Have a look at the power behind that stroke. Wow, that is a big shot, and he had really thumped that. That is majestic, simply majestic. Outrageous from Hafiz Paula, outside the off stump, and pulled it away with real power and class. He is in serious mood here, and look at the facial expressions. He's desperate to get plenty of runs for his side. It was way outside the off stump, and not an easy shot to execute. Well, I tell you what, he will be desperate to smash his bat on the pitch, but he's been warned for that typical celebration of his. But you can clearly see the aggression and the anger on his face. He's not going to hold himself back. There is no question about that. Down the leg side, some sort of bat on it. Single taken. The last shot he played for 6, that was outside the off stump. He could have played over extra cover as well. But he was relying on himself or relying on his ability. He targeted
the wide long on region. But nevertheless, the result was in favor. And now Shafi will be on track for the first time. Yeah, it's a responsibility of Shafi Agha, the captain, to take over now from Paula and continue in the same fashion the way Paula has started. Outside edge, captain's removed. Have a look at that for an effort. And who else than Zohair Nazir? Oh my word, what an effort. What a fine catch. Great anticipation from Zohair Nazir. He had to dive forward. He did everything right. In the end, a clean take. No doubt whatsoever. Try to smash it towards the onside. Look at that. Nice and clean. Good anticipation. Clearly above the ground. That is well taken. Rana Mohsin struck in his first over. Well, that will definitely go one of the best catches, as one of the best catches of the tournament. Shafi Agha removed very early. He's gone for a duck. Those fellows are having a fun out there, definitely. They've been there from the words go in this competition for the last 10 nights. Entertainment in the ground, out the ground, everywhere. And whoever watching this broadcast, this telecast, wherever they are across the globe, the spectators must be enjoying every second of it. Indeed, they want boundaries and sixes. Sebi Paro has come out of the middle. They want a real contest between bat and ball. The start hasn't been bad in terms of runs, but they've just lost a wicket. Down the leg side, got to real ball that. Poor line, vivid delivery to a newcomer. He got away with that. I think that was an easy option to play the ram shot. He just had to put some bear on that, and that is how the last wicket fell, the first one. Very good catch indeed, different angle to show how clean was it. This time he waited for it, and he has given it a go. All the way over square leg for the maximum to finish that over from Rana. He wants to have some kind of drink that is smashed the refrigerator. Pull it away with real authority. Nicely timed, and he gave full face of the bat. What a way to begin his innings. 27 for 1 after 1. Cracking start from North Nawab, 27 for 1. Hafiz Pola picked up 16 off just 4 with a strike rate of 400, whereas Sebi Paro, he got off the mark with a lovely 6. So a lefty will share the new ball. Pretty much keeping up the pace with the start of the innings. North Nawabs, they got to keep on continue that onslaught which is started from the first over. And Pola will be the ideal man to do that. Nicely bowled. This is where he will be targeting Sohail. He's not that quick, not that pacey, but when he gets it right, he's very hard to pick away. Yes, he's targeting the base of the middle stump. And Hafiz Pola was wanted to heave it, and they didn't get enough bear on that. So he starts with the dot ball. But it's the kind of player who can take on Sohail lefty on any time. He has to be careful as far as the offering the length is concerned. He played beautifully in the first over. He's hit that all right, and there is a protection at deep. So it will be a couple. Sluggish effort from the fielder, and both the batsmen saw the fielder is taking it a little bit easy, and straight away they turn for run number 2. Can't afford to stop one bit. They got to keep on continue
in the same fashion they started. Oh, didn't get the desired connection. And there will be a Shah at the stumps. Paula is home. That was a chance of a run out as well, but the fielder, the bowler himself, stranded there. He didn't go to the stumps to collect the ball, and throw was somewhere in the middle. So these things they have to learn as well, because they can convert half a chance just like that. Well, it all happened in a blink of an eye, so at times things can go wrong. You can't blame the fielders on that occasion. Ball short, gets the punishment. One bounce into the boundary. Couple of yards short on this occasion. A.B. Paro, he dropped the ball short, so he lefty, and a fine pull shot. Wasn't in complete control, but he played it effectively. Just a couple of yards short here, but nevertheless a boundary to North Nawab. They are pretty much on a roll, and they are in the game, certainly. Don't stop, boys! Don't stop, please! We need some entertainment! It's another 6 here! Don't leave the television sets. This can go to the wire here. The full toss, juicy one outside the off jump. Bad delivery, and extremely well punished. Smashed it with brutality, with real authority here, and that one got disappeared in the trees, right of the middle. Oh, nicely bowled this time. Cramping him for space. Shah at the stumps. He's safely home. Single to finish that over. It's 41 for 1 after 2. .97 runs are required in 24 deliveries. It is extremely tough ask, but it's certainly possible in this format. Yeah, still the required run rate is 24.10. One would say it's gettable, but when you see somebody like Shah Jahan Mir into the attack, it's gonna be challenging. There is no question about that. And he was almost unplayable in the first innings. Picked up 3 wickets in 1 over. When he gets it right, he's one of those players alongside Zahir Kalia, who's got vast experience playing for more than 2 decades, this type ball. Have a look at that drill down the ground for only a single. Will bring Paula on strike and will be a good contest now. Driven well, but certainly it won't work for North Nawab. They need something over pitch, kind of half volleys to work with. They have to clear boundary at least 3 to 4 times in the over right from here. Will Hafiz Paula find the middle of the bat? Shahjahan is such an experienced campaigner. He's in good form as well. Oh my word, temptation there, and he gets his man. Experience getting better of Paula here. The experience of Shah Jahan. Not a best of deliveries outside the off stump. It was way outside the off stump. Should have been wide, but Hafiz Paula chased it because of the pressure of asking rate. Toe end of the bat, comfortable catch, no doubt whatsoever, and it's a huge wicket, precious one. Hafiz Paula is walking back, goes for 19, 2 for 42.
Right then, Polar's magic is over. 2 wickets are down, and Yahya Khan has got a bat in his hands with a lot of job to do. And will be facing the music because he's up against Shah Jahan, who is definitely bowling with his tail up. Every wicket will not only apply some pressure, but it will also push up the required rate big time. There you go, another one in the air. It's a chance. Oh my word, the fielders were miles away from the ball. Good fortune once again for Yahya. He was dropped in the first inning as well on the very first ball at deep square leg. He started with the mistime shot. Nobody was inside the circle and 3 men were converging. He's extremely lucky and he's off the mark as well. Well, we are into the 3rd over, so the field restrictions are removed. You can expect the fielders to be riding the boundaries, covering that part of the ground rather than inside the 30-yard circle. He bowls short, he's been drilled down the ground, and it's a 1-bounce boundary. Nice shot. It's pulled away straight down the ground. The long on fielder was just a touch wide, and he got fair amount of bat on that. Good contact. Boundary goes to North Nawab, but still a pretty good over. Not far away from Nizar lefty at wideish long on, but he could do nothing about that. It was timed exquisitely by A.B. Parra. He's timed that all right, but it's miles in the air. It's a skyer. And this time it's been accepted. And guess who? It's going to be Nizar lefty. Yes, he has completed the catch. Well done. Goodness me, it was a tough one. Extremely good catch by Nizar lefty. He covered plenty of ground. He ran from the edge of the boundary and 4 men were converging. And everybody knew it would not go for 6. It got plenty of height. Oh, goodness me. He almost dropped it. He made a mess of it. He overran. In the end, he kept his eye on the ball. And very good complete catch from Nizar lefty. Good take. A.B. Parra goes for 22. 3 for 47. You could see the expressions on his face when he took that catch, when he completed that catch. He was a relieved man. There was a huge sigh of relief for him. So that departure brings Zain to the wicket. Zain Pathan batting in his normal order, in the middle order. He was shifted to open the innings in the last innings. That didn't work. And will be up against Shah Jahan. He's hit that hard and he has hit that long. Clears wideish long on in the end to finish that over by Shah Jahan. 50 is raised. Sweetly struck. Right of the middle, beautifully timed, and just got enough distance. He's off the mark with the maximum. There's still a pretty good over from Shah Jahan. Mid-wicket boundary picked up by Zain, and that is how he got the maximum. Lovely shot. So 53 for 3 is halfway down, and they need 85 runs in the remaining 18 balls. So time for the change in voices. Rana Ashwaq and Zishan Khalid are moving into commentary position. बहुत शुक्रिया फर्रुख और फलक शेर. 53 रन्स 3 खिलाड़ी आउट, यानी 85 रन्स चाहिए और सिर्फ 3 ओवर बाकी हैं. अब्दुल सलाम बॉलिंग करने के लिए आए हैं. शाहजहां ने अच्छा ओवर किया, वेटरन है शाहजहां, मगर पिछला ओवर बड़ा अच्छा किया, विकेटें हासिल की. और ज़िशान आपको खुशामदीद कहते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब. जी हाँ, काफ़ी नपी तुली बॉलिंग का मुजाहरा किया है, सिर्फ इस इनिंग्स में नहीं बल्कि पिछली इनिंग्स में भी. अगर हम बात करें लियारी लेजेंड्स के बॉलर की जानिब से, और शाहजहां के आने से ऐसा लगता है कि एक नई रूप फूंक दी गई है बॉलिंग लाइनअप में लियारी लेजेंड्स की. बिल्कुल आपने सही कहा. न सिर्फ उनके पास तजर्बा है बल्कि वो ख़ुद बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं. और ये आपकी स्क्रीन पर एक लंबे कद के दराज कामत बॉलर हैं शाहजहां.
और साल का तजुर्बा है। जिस तरह कहा अभी फलक ने कि 2 डिकेड से ज़्यादा हो गए, यानी 20 साल से ज़्यादा का अरसा इन्होंने बिताया है, तो ज़ाहिर है तजर्बे को कोई नेमोल बदल नहीं होता। जी हाँ, तजुर्बा का ही इस्तेमाल किया है इस मैच में आज शाहजहां ने, क्योंकि हमने फास्ट बॉलर्स को देखा है कि वो कोशिश करते हैं कि तेज़ से तेज़ गेंद कराएं और बैट्समैन को आउट करें, लेकिन शाहजहां ने इतनी बर्क रफ्तारी से बॉल नहीं की है, लेकिन वेरिएशंस का अच्छा इस्तेमाल किया है और नतीजे भी उनके हक में रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। विकेट कीपर के साथ फाइन लेग और थर्ड मैन सर्कल के अंदर मौजूद हैं ये जोहेर नसीर, जिन्होंने कल एक बड़ा शानदार कैच भी लिया था रिबाउंड पे। और अब रन्स सिंगल डबल से अगर बनेंगे तो वो फ़ायदेमंद नहीं होंगे। ये होगा कि आपके नेट रन रेट में बेहतरी आ सकती है कि चलो आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंचने की कोशिश करें। जी हाँ, टारगेट काफ़ी बड़ा हो गया था नॉर्थ नवाब्स के लिए। 138 रन का हदफ आसान नहीं होता टेप बॉल क्रिकेट में, लेकिन उम्मीदें थी कि एबी पारो और हाफिज़ बोला, जो कि जिस तरह की अब तक बैटिंग की है, उनसे उम्मीदें थी कि अगर ना जीत सके तो कम से कम अच्छी इनिंग्स खेल के करीब तो ले जाएं, लेकिन आज दोनों का ही बल्ला ना चल सका। और अब नॉर्थ नवाब एक ऐसी पोजीशन में है कि अगर यहाँ से बर्क रफ्तारी से रन नहीं हासिल किए तो एक बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि अभी भी 83 रन चाहिए 16 गेंदों पर, और इस 6 ओवर्स की क्रिकेट में ओह इस मरतबा बाकायदा टिम्बर साउंड आप सुन सकते हैं, क्योंकि बोल्ड कर दिया इस्लाम ने बैट्समैन को, और एक और विकेट यहां पर गिर गई है नॉर्थ की। जी हाँ, शफल कर रहे थे अपनी क्रीज में, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर चले गए थे सलाम ने, और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद की अंदरूनी किनारा लेके ऑफ स्टंप को जाके बॉल लगी, और इसी की तरह लियारी लेजेंड्स ने एक और कामयाबी समेटी। या खान भी कोई खातिर ख्वाह स्कोर ना कर सके, सिर्फ एक ही रन बना के पवेलियन चलते बने 55 के मजमूई स्कोर पे 4 विकेट के नुकसान पे। कुछ बड़ी अच्छी बैटिंग कारकर्दगियाँ हमारे सामने आ रही हैं। इमरान और फहद मियाँ चन्नू के दरमियान एक रेस है, दोनों 400 से ज़ायद रन बना चुके हैं, और कुछ बॉलर्स की बड़ी अच्छी कारकर्दगियाँ, और आज भी बड़ा ज़बरदस्त स्पेल यहाँ देखने को मिला है बॉलिंग का शाहजहां की जानिब से, और साथ साथ इस्लाम भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और नए बैट्समैन जुहेब बैटिंग करने के लिए आए हैं जो सलाम का सामना करेंगे। विकेट हासिल करने के बाद उनका मोराल वैसे ही बुलंद है, फिर इतने रन्स हैं उनकी टीम के पास कि बॉलर बड़ी खुशी के साथ 1-2 छक्के खाना भी जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन छक्के लग बिल्कुल नहीं रहे, ये गेंद स्क्वीज हो गई है फाइन लेग की जानिब ऑफ द इनसाइड एज प्रोबेबली। जी हाँ, जड़ में करना चाह रहे थे यहाँ पे सलाम, और काफ़ी हद तक की भी थी बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और सिर्फ एक ही रन हासिल किया जैन ने। आप मजमूई स्कोर की बात कर रहे थे इस टूर्नामेंट में, यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ प्रोवाइड किया है, क्योंकि अब तक सिर्फ हम सोशल मीडिया की हद तक सिर्फ चंद ही नाम जानते थे कि तैमूर मिर्ज़ा, खुर्रम चकवाल, जो कि काफ़ी नाम रखते हैं टेप बॉल क्रिकेट में, लेकिन जिस तरह फहद मियाँ चुन्नू और बाकी दीगर बैट्समैन इमरान हो गए जिन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, तो सिर्फ चंद एक तबका नहीं बल्कि पूरे मुल्क भी क्या काफ़ी दुनिया के 84 ममालिक उनको देख रहे हैं और अब उनके फैंस बन चुके हैं। बड़ी अच्छी बात आपने पॉइंट आउट की है। ठीक है, तैमूर और खुर्रम चकवाल का नाम बिलाशुबा बहुत बड़ा है, मगर ऐसा नहीं है कि क्रिकेट जो है वो इन दोनों ही के इर्द गिर्द घूम रही है। बहुत टैलेंट पड़ा हुआ है, बहुत सारा टैलेंट इस KTPL में आप देख रहे हैं, और बहुत सारा टैलेंट अभी अंदरूने सिंध, पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, एवरीवेयर अभी है, और मैं समझता हूँ कि मज़ीद मौके मिलने पर वो भी उभर कर सामने आएगा। और कुछ नाम आपने मेंशन किए, वो परफॉर्म कर रहे हैं, असद शाह परफॉर्म कर रहे हैं, साथ साथ बहादुर लेफ्टी परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग बड़ी अच्छी इरशाद की देखने को मिली है, माजिद गोली ने बहुत अच्छी बॉलिंग है, सो देयर आर लॉट ऑफ परफॉर्मर्स। बल्कि मैं समझता हूँ कि इस इवेंट का अगर जिक्र करूँ तो खुर्रम और तैमूर का नाम शायद टॉप 5 या 8 में भी नहीं होगा अब तक के जो परफॉर्मर हैं KTPL के। अच्छा शॉट है ये, लेकिन पाँव से गेंद को रोकने में कामयाब हुए कारी हमीदुल्लाह। आज इन्होंने भी अच्छी बैटिंग की है, और बड़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं कारी हमीदुल्लाह, और बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी भी, और इस दौरान ये जो हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं और मुकाबले को एंजॉय कर रही हैं। 4 ओवर्स के बाद 59 पे 4।
और फिर जब आपने 2 इनिंग्स की क्रिकेट खेलनी है तो कहीं ना कहीं आपको एट टाइम्स ज़रूरत पड़ती है कुछ सीनियर्स की भी, जो आपको अच्छा मशवरा दे सकें मैच में, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज डाउन हो उसको उभार सकें। द ग्रेट तौसीफ अहमद, सादिक मोहम्मद एंड हारून रशीद, हमारे साथी कायनात भी वहाँ मौजूद हैं वीआईपी बॉक्स में और मुकाबले को एंजॉय कर रही हैं। तौसीफ अहमद का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, बहुत उम्दा ऑफ स्पिनर रहे हैं ये अपने इरा के, और विवियन रिचर्ड्स को इनके खिलाफ बहुत प्रॉब्लम रहती थी तेज़ रन करने में, वरना वो ज़ाहिर किसी को बख्शते नहीं थे। शाहजहाँ 2 विकेटें हासिल की, 12 रन देकर बड़ा अहम ओवर किया और बड़ा डेंट डाला बैटिंग में। जहाँ तक ताल्लुक है नॉर्थ नवाब का, अपना दूसरा और आखिरी ओवर लेकर तैयार फार एंड की जानिब से। मैं ये कह सकता हूँ कि 1995 में मैंने इनको कवर किया था टंडोवाला यार में, वे बैक 28 इयर्स, और तब बिल्कुल स्लिम थे, बिल्कुल जिसे कहना चाहिए। और इस गेंद को हिट कर दिया मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, छक्का। टू लिटिल टू लेट, लेकिन बहरहाल इससे उनके एतमाद में इजाफा होगा। जी हाँ, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद थी, रूम मिला, लेंथ मिली, काफ़ी बाहर से बॉल को मिड विकेट के ऊपर ढकेलने में कामयाब हुए हैं जैन पठान और एक छक्का लगाया। लेकिन अब तक शायद काफ़ी देर हो चुकी है क्योंकि अभी भी 73 रन मजीद दरकार हैं यहाँ पे नॉर्थ नवाब्स को, और सिर्फ 11 ही गेंदों का खेल बाकी रह गया है। अच्छा शॉट ऑफ साइड में, और गेंद गोली किसी रफ्तार से बाउंड्री से बाहर, 4 रन। जी हाँ, ऑफ स्टंप के एक बार फिर काफ़ी बाहर गेंद और बिल्कुल पिच के नीचे पहुंचे और एक्स्ट्रा कवर की जानिब से गोली की तरह बॉल निकली और बाउंड्री लाइन को जाके हिट की। हम यही बात कर रहे थे कि जैन पठान ने पहली इनिंग्स का आगाज किया था, इस दफ़ा वो मिडिल ऑर्डर में आए, तो इस तरह भी काफ़ी हौसले को धचका मिलता होगा बैट्समैन के। एक और ऊंचा शॉट, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश में हैं, लेकिन सिर्फ कोशिश में हो सकते हैं क्योंकि गेंद बाहर गई है। एक और छक्का। जी हाँ, एक हल्की गेंद कराना चाह रहे थे लेकिन लेंथ और विथ दे बैठे यहाँ पे जैन पठान को, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से यहाँ पे छक्का लगाया है। कुछ देर के लिए लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ ऐसा सोच रहे थे कि शायद कैच थाम बैठे, लेकिन देखते ही देखते बॉल उनके सर के ऊपर से जाके साइड स्क्रीन को जा टकरा चुकी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, उनको लगा कि गेंद उनकी तरफ आ सकती है मगर ऐसा हुआ नहीं। और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है, इस गेंद के बाद जिक्र करेंगे क्योंकि शाहजहां बिल्कुल रेडी हैं चौथी बॉल लेकर इस ओवर की। अब तक 2 छक्के और 1 चौका इस ओवर में लगा है। अच्छा ओवर है बैटिंग साइड के नुक्ते निगाह से और जैन के। राउंड द विकेट की गई गेंद को एक बार फिर वैक किया, जैन खतरनाक मूड में है। एक और छक्का। ये वो बात है जो आप कर रहे थे, क्यों मतलब कि आप अननेसेसरी बैटिंग ऑर्डर तब्दील करते हैं। ये हम देख सकते हैं, बहुत खूबसूरती के साथ हिट किया, पूरी अथॉरिटी पूरी कमांड थी उसमें। और कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो जाहिर है कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है उसमें जिनका जो सारी उम्र ओपनिंग करते गुजरी है मगर यहाँ उनका ओपनिंग नंबर नहीं बन पा रहा। ये बात भी हकीकत है अपनी जगह। ओह ओह, बहुत जोरदार, बहुत शानदार। जैन जो लिटिल ब्यूटी, बहुत खूबसूरत और शानदार बैटिंग। हालांकि सामने शाहजहां बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन अपनी पावर हिटिंग के जरिए किसी को भी खाते में नहीं लिया है यहाँ शाहजहां जैन पठान ने। चौथा छक्का लगाया है इस ओवर का और सबसे बुलंद उबाला छक्का था आखिरी जो उन्होंने लगाया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर। अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आते तो शायद कहानी मुख्तलिफ होती यहाँ पे। और ये कॉस्टली हो सकती है। अच्छा गेंद को पार्शली रोकने में कामयाब हुए लेकिन बैट्समैनों ने काफ़ी रन दौड़ लिए, ऊपर से ये वाइड होगी तो ये काफ़ी रन्स खाते में आएंगे। साथ में बॉल दोबारा करनी पड़ेगी। अब शाहजहां का ये ओवर देखिए, 6-4 फिर 3 छक्के फिर वाइड। माय वर्ड, अब कुल मिलाकर ये हो गए हैं कोई 32 रन और अब ये गेंद बाकी है। ये क्रिकेट है। 12 रन दे के 2 विकेट पहले ओवर में। आप कहते थे आज के हीरो कल के जीरो, कल के जीरो आज के हीरो। ये तो आज के हीरो आज ही के जीरो हो रहे हैं। ड्रिवन बैक, लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद। 1 रन खुदा खुदा करके शाहजहां के लिए ओवर मुकम्मल हुआ है और 5 ओवर्स के बाद 92 फॉर 4।
अच्छा, उसमें मैं सोशल मीडिया पे देखता भी हूँ कि कुछ खिलाड़ी इस तरह के पोस्ट भी करते हैं कि जी हमारा नंबर तो ओपनिंग है मगर हमें मौका नहीं मिल रहा। मगर मैं उनसे कहूँगा कि वेट एंड वॉच, जहाँ पे भी मौका मिले उस नंबर पे परफॉर्म करें और फिर मुतासिर करें अपने ऑनर को भी, अपने कैप्टन को भी, अपनी टीम मैनेजमेंट को भी कि वो आपको मौका दें। जाहिर है कि अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी टीम में 6 ओपनर पिक हो गए हों, 4 ओपनर पिक हो गए हों, तो वो 6 तो ओपनर ओपनिंग नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इन यंगस्टर्स को एक डिसिप्लिन भी सीखना चाहिए। बाकी ये बात आपकी बिल्कुल वजह है कि एट टाइम्स आपको वो आपका डिज़ायर नंबर नहीं मिल पाता, या जहाँ आप बैटिंग करते रहे होते हैं उससे फ़र्क तो पड़ता है। जैसे एक आदमी ने 10 साल ओपनिंग की हो, वो छठे नंबर पे जाहिर है कि उसका मोरल थोड़ा वो डिमोरलाइज होता है। मगर फिर भी इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि ड्राफ्टिंग के ज़रिए जब खिलाड़ी आते हैं तो इस तरह की सिचुएशन पैदा हो सकती है। लेकिन बहरहाल बददिल ना हो, बहुत मौके हैं थ्रू आउट दी पाकिस्तान, बहुत ट्रे बॉल क्रिकेट हो रही है, तो खेलते रहें, परफॉर्म करते रहें। और अगर आप में जज्बा है मेहनत का तो फिर मैं समझता हूँ कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ, और प्लेयर्स को ये भी सोचना चाहिए कि टेप बॉल फॉर्मेट है ही इतना मुख्तसर, सिर्फ 6 ही ओवर्स की इनिंग्स है, और आपकी कोशिश होती ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हिट्स लगाएं, चाहे आप लोअर ऑर्डर में आएँ या टॉप ऑर्डर पे आएँ। कीमती 2 रन्स मिलेंगे, अभी भी 44 रन्स चाहिए 6 गेंदों पे, जो कि अगर 6 छक्के भी लगे मुमकिन नहीं है। बस यही चीज़ हो सकती है कि 6 छक्के तो लगे ही, साथ में 2-3 छक्के 9 बॉलों पे भी लगे। यहाँ 5वें ओवर का खेल इख्तिताम पजीर हो चुका है और छठे ओवर का आगाज़ है और 94 रन बना चुके हैं। कहीं ना कहीं डगआउट में ये सोच ज़रूर चल रही होगी कि अगर हम 37 रन का खसारा ना कंसीड करते पहली इनिंग्स में तो कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती। बिल्कुल, और यहाँ के 2 इनिंग्स के खेल का भी एक लुत्फ आ रहा है। दो की कॉल है। अब एक खिलाड़ी सेक्रीफाइस करेगा, जो कि ट्रे बॉल में हम अक्सर देखते हैं, वो खड़ा रहता है, जब दूसरा बैट्समैन उधर पहुंच जाए, उस तरफ का रन आउट सेव हो जाए, फिर ये दौड़ते हैं। ये बहुत है ट्रे बॉल में, और ये हुआ। जी हाँ, इरादा ठीक था जैन पठान का, क्योंकि वो बड़ी हिट लगा रहे थे, उनको स्ट्राइक पे आना ज़रूरी भी था। दूसरे बैटर को ये रियलाइज़ करना चाहिए था कि वो जल्द ही अपनी क्रीज छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे भरपूर मौका दिया बॉलर को बॉलिंग एंड में रन आउट करने का, और इसी तरह यहाँ पे एक और विकेट का नुकसान उठाया। ज़ुहैबुर रहमान सिर्फ 3 रन बना के पवेलियन वापस लौटे। 95 पे 5 नॉर्थ नवाब्स। आसिफ अब बैटिंग करने के लिए आए हैं। अंपायर अपनी वॉकी टॉकी पे कुछ गुफ्तगू कर रहे थे टेलीविजन अंपायर के साथ विद समबडी एल्स। जी हाँ, शाहिद असलम ऑनफील्ड अंपायर हैं, वो सिर्फ ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि जो बॉलर सलाम थे उन्होंने विकेट्स रिमूव की या हाथ से रिमूव करी बेल्स और फिर वो किया। हम देख चुके हैं सलाम ये पहले भी कर चुके हैं, और इसी वजह से शाहिद असलम जो काफ़ी करीबी निगाह रखे थे तो उन्होंने रिस्क नहीं लिया और थर्ड अंपायर को रेफ़र किया। जी हाँ, अंपायर पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि खिलाड़ी काफ़ी चालाकियाँ और होशियारियाँ करते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ लग रहा है सस्पेक्ट, या फिर बिल्कुल उसी वक्त में। जी हाँ, अगर आप रिप्ले देखें तो दाएं हाथ से ऐसा लग रहा है कि पहले उन्होंने बेल्स रिमूव किए, उसके बाद बॉल जाके टच की है। जी हाँ, यही वजह है कि अंपायर ने रेफ़र किया था, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं कामयाब हो गए अपनी कोशिश में बॉलर, और हंस भी रहे हैं। उन्हें खुद भी अंदाज़ा है कि उन्होंने सौड़ा बच्चा चालाकी तो की है, मगर इन द निक ऑफ द टाइम बॉल भी उन्होंने साथ में लगा दी, जिसकी वजह से ये खिलाड़ी आउट ही करार रहेंगे। लेकिन बात यह है कि यहाँ कैमरास लगे हुए हैं, सब कुछ है, जो थोड़े बहुत सस्पेक्टेड एक्शंस हैं उन पे भी अंपायरों ने कुछ स्क्रूटनी की है, जो कि अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि डिसिप्लिन और रूल्स अगर नहीं होगा किसी भी चीज़ का, देन फिर वही बात है कि मसले मसाइल होंगे। लेकिन यहाँ पर बैट्समैन जो है वो आउट होकर वापस आ गए और नए बैट्समैन आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। यहाँ आसिफ पठान नए आने वाले बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे होंगे। जैन पठान जो कि अगली गेंद का सामना करेंगे सलाम की तरफ से।
जैन पठान काफी कुव्वत के साथ हिट्स लगा रहे हैं और एक बार फिर बाउंड्री को क्लियर किया। एक और छक्का। भले ही इनकी टीम मैच हारने की पोजीशन में है, लेकिन जैन की जितनी तारीफ करें वो कम है। 100 रन मुकम्मल। जी हाँ, एक बार फिर ओवर पिच गेंद जिसको उठा के खेले मिड विकेट की जाने। फील्डर वहाँ मौजूद थे, लेकिन भरपूर कुव्वत भरा स्ट्रोक था यहाँ जैन पठान का और एक और छक्का लगाया है। सिर्फ चौकों नहीं बल्कि छक्कों में ही अब इनिसार कर रहे हैं जैन पठान। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 4 गेंदें अभी बाकी हैं और हाफ सेंचुरी में 6 रन चाहिए, तो इनके पास मौका है कि अपनी निस्फ सेंचुरी यहाँ मुकम्मल करें और एक माइलस्टोन हासिल करें। इस गेंद को हिट आउट किया ऑफ साइड में, एक टप्पा लगा, 4 रन ऑफ स्टंप से बाहर, विड्थ मिली और उस पर एक तरह से लपक पड़े, टूट पड़े। जी हाँ, उनको अंदाजा था कि पिछली गेंद ओवर पिच थी तो इस दफा थोड़ी शॉर्ट ऑफ अ लेंथ गेंद होगी। पिछले कदम पे इंतजार कर रहे थे, स्लोअर गेंद थी, इंतजार किया और लॉन्ग ऑफ के दाएं हाथ भरपूर कुव्वत भरा स्ट्रोक खेला। छक्का तो नहीं लगा सके, लेकिन एक चौका लगाने में जरूर कामयाब हुए। 12 गेंदों पे 48 रन की एक यादगार और तूफानी और बरकरफ्तार इनिंग्स है। और जिस तरह आपने कहा था, राइटली पॉइंट आउट किया था, अगर ये ओपनिंग पे आते 12 की जगह इन्होंने 25 गेंदें खेली होती, 24 पीस खेली होती, सिचुएशन मुख्तलिफ भी हो सकती थी, क्योंकि 3 गेंदों पे 33 ही चाहिए। सपोज 3 छक्के लगे तो 15 रन 14 रन से मैच हारेंगे, तो अगर ये कुछ ज़्यादा गेंदें खेल जाते तो कुछ भी हो सकता था। बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद। ये गेंद चाहे आप कितने ही अच्छे, कितने ही बड़े बैट्समैन क्यों ना हो, आपके पास क्लू बहुत कम रहता है। जी हाँ, क्रीज में काफ़ी अंदर मौजूद थे, उसके बावजूद इस यॉर्कर को नहीं टाइम कर सके जैन पठान। तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ सलाम की भी। चौका और छक्का खाने के बाद एक परफेक्ट रीजन में बॉल को गिराया और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पे शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर की जाने से, वरना बॉल चाहती तो ज़रा सी दाएं या ज़रा सी बाएं होती तो बाउंड्री लाइन भी क्रॉस कर सकती थी। जी बिल्कुल, एक दफ़ा जब गेंद निकलती है सर्कल के फील्डर से तो फिर बड़ी तेज़ी के साथ ट्रैवल करती है, ख़ास तौर पे बैक डाउन द विकेट या बैक डाउन द ग्राउंड। इस गेंद को स्मैश किया है, गेंद फील्डर को बीट करती हुई बाउंड्री से बाहर। निहायत शानदार हाफ सेंचुरी जैन की मुकम्मल हुई। एक तेज तर्रार इनिंग्स, 14 गेंदों पे 52 पे नॉट आउट, 6 छक्के और 3 चौके। जी हाँ, यादगार इनिंग्स है यहाँ पे जैन पठान के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लूजिंग कॉज की तरफ है। एक दफ़ा फिर रूम मिली इसको, लॉन्ग ऑन की बाएं जानिब खेलने में कामयाब हुए, एक और बाउंड्री हासिल की। क्या ही बात होती अगर जैन पठान ओपन करने आते और इसी तरह की फॉर्म दिखाते। जी हाँ, वन शुड स्पेयर अ थॉट फॉर हिम। बड़ी उम्दा बैटिंग की है इन्होंने। इस गेंद को ऊंचा खेले, मिसक्यूड है, लेकिन खाली जगह में गेंद ने लैंड किया, 1 रन बना। दूसरे के लिए मुड़े और अब रन आउट हो जाएंगे। बहरहाल 54 रन बनाकर आउट हुए और 109 रन पे अपनी इनिंग्स फिनिश की है नॉर्थ नवाब्स ने, और इस तरह 27 रन से ये मुकाबला जीतने में कामयाब हुए लियारी लेजेंड्स। एक और फतह लियारी लेजेंड्स की। लियारी लेजेंड्स जिन्होंने शुरुआत अच्छी नहीं की थी, मगर उसके बाद बड़ा अच्छा और स्ट्रॉन्ग कमबैक किया उन्होंने इस इवेंट में। जी हाँ, बिल्कुल, पिछले मैच में डीएच दबंग जैसी एक मजबूत टीम को शिकस्त से दो-चार किया था और आज भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली लियारी लेजेंड्स की। ज़हीर नसीर जो कि नुमाइंदगी कर रहे हैं लियारी लेजेंड्स से, काफ़ी खुश होंगे, काफ़ी मुतमईन होंगे कि टूर्नामेंट में बिल्कुल सही टाइम पे प्लेयर्स की फॉर्म वापस आ रही है, पीक कर रहे हैं, बड़ी टीमों को अच्छी टक्कर दे रहे हैं और नताइज भी इनके हक में जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये उनके नन्हे फैंस भी उनके साथ मौजूद हैं जो काफ़ी खुश हैं, हैंड शेक कर रहे हैं ज़हीर नसीर अपने सपोर्टर्स के साथ, अपने खिलाड़ियों के साथ, और ढोल वाले साथी भी काफ़ी खुश हैं और काफ़ी खुशी और मुसरत के साथ ढोल इस वक्त बजा रहे हैं। नेल्सन स्कोर किया नॉर्थ नवाब्स ने अपनी इनिंग्स में 111 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और नुमाया रहे 54 रन के साथ जैन, जिन्होंने एक बहुत उम्दा इनिंग्स खेली। और ये छोटू डॉन भी ग्राउंड में मौजूद है अपनी बाइक के साथ और ये भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। तो पूरी तरह से इंटरटेनमेंट है यहाँ DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में, और KTPL सीज़न 3 अपने तमाम तर रंगों और रौनकों के साथ जारी और सारी है। और जियो सुपर से आप इसे लाइव देख रहे हैं, और जो सिस्टर्स चैनल्स हैं हमारे वो 84+ हैं जो दुनिया भर में आपको ये लाइव एक्शन शो कर रहे हैं KTPL का। हाईलाइट्स ऑफ द इनिंग्स।
यहाँ हाफिज पोला इनिंग का आगाज़ करने आए थे और आते के साथ ही बर्क रफ्तारी से 27 रन चढ़ने में कामयाब हुए थे राना। उसके पहले ओवर में जोहेर नसीर का एक शानदार कैच था जिसकी बदौलत पहली विकेट हासिल की। AB पारो को प्रमोट किया गया। उन्होंने भी आके कुछ झलक दिखाई कि वो शायद अपनी टीम को टोटल के करीब ले जाएं, लेकिन काफ़ी नपी तुली बॉलिंग यहाँ पे AB पारो ने की विकेट गंवाई और कैचिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली हमें यहाँ लियारी लेजेंड्स की जाने से। निज़ार अली ने पहली इनिंग्स में भी काफ़ी शानदार कैचेस लिए थे। जैन पठान 5वें नंबर पे बैटिंग करने आए थे और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद अगर कुछ एक्स्ट्रा रन्स की मदद उनको मिल जाए, कुछ वाइड में 5 रन आ जाए तो शायद वो अपनी टीम की नैया पार लगाएं, लेकिन तब तक शायद काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन एक यादगार इनिंग यहाँ पे जैन पठान की। शाहजहां जैसे तजुर्बेकार बॉलर को भी उन्होंने एक ही ओवर में 28 रन जड़ दिए थे। नॉर्थ नवाब्स की अगर हम बात करें तो कल की ही बात है कि उन्होंने एक कामयाबी समेटी थी कराची नाइट्स के खिलाफ और आज रेत की दीवार साबित हुए लियारी लेजेंड्स के जानिब से। और वो पहली इनिंग जहाँ पे 37 रन की लीड मिली थी लियारी लेजेंड्स को, वो टर्निंग पॉइंट साबित हुई क्योंकि 99 रन बनाए थे लियारी लेजेंड्स ने पहली इनिंग में। अगर वो चाहते करीब आ सकते थे और अगर आते तो मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। ये देखें हाफिज पोला 19 रन बना के पवेलियन लौटे। AB पारो ने 22 रन बनाए। जैन पठान ने 54 रन की यादगार इनिंग खेली 15 गेंदों पे। आखिरी गेंद पे रन आउट हो सके और तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। 26 रन्स के मार्जिन से यहाँ पे शिकस्त का सामना किया है नॉर्थ नवाब्स ने। अगर बॉलिंग की बात करें तो राना ने 1 विकेट हासिल की 26 रन देके। शाहजहां जो कि पहले ओवर में काफ़ी नपी तुली बॉलिंग की थी 2 विकेट्स लिए थे, लेकिन दूसरे ओवर में बहुत ज़्यादा रन दे बैठे। सलाम ने अच्छी बॉलिंग की 24 रन देके सिर्फ 1 विकेट हासिल की अपने 2 ओवर्स में। ये दोनों इनिंग्स का लेखा जोखा आप देख सकते हैं। लेजेंड्स ने 99 किए और फिर दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 100 किए। इन्होंने 62 रन किए थे नॉर्थ नवाब्स ने पहली इनिंग्स में और दूसरी में 111 किए। इस तरह हार गई ये मुकाबला 26 रन से। अब हम एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी देखेंगे।
यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग सीजन 3 के 21st मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और उन तमाम 84 ममालिक के जहां हमारी ये ट्रांसमिशन जारी है, इसके साथ साथ जो लोग भी यहाँ डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में मौजूद हैं, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होता जा रहा है यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का सीजन 3, क्योंकि आज के जो दो टीमों ने फतह हासिल की, अब वो दोनों सेमीफाइनल की बड़ी कंटेंडर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आज के इस मैच में लियारी लेजेंड्स ने नॉर्थ नवाब को 26 रन से शिकस्त देकर अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा सेमीफाइनल की। वेरी वेल प्लेड लियारी लेजेंड्स। मैं इसलिए कह रहा हूं कि टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग हो गया कि 10 पॉइंट मलीर मलंग के दिखाई दे रहे हैं, गुलशन के 8 पॉइंट और अब 4 टीमें हो गई हैं जिनके 6-6 पॉइंट्स हैं, जिनमें डीएचए दबंग, नॉर्थ नवाब, लियारी लेजेंड्स और क्लिफ्टन पॉपुलर। तो अब इन 4 में से इन 6 को पूरा चांस मौजूद है कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है। हमारे साथ प्रेजेंटेशन पार्टी में मौजूद है आज के ऑनरेबल चीफ गेस्ट, दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, फॉर्मर कैप्टन 1992 वर्ल्ड कप के हीरो, और उसके साथ साथ यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के प्रेसिडेंट मिस्टर जावेद मियादाद। थैंक यू वेरी मच जावेद मियादाद साहब। उनके साथ लेजेंडरी ग्रेट जावेद मियादाद साहब की साहबजादी हैं मारिया मियादाद। थैंक यू वेरी मच। और बहुत ख़ुद भी ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही हैं मारिया मार्केटिंग के शोबे में। उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और उसके साथ साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग मिस्टर सादिक मोहम्मद। उनके बराबर में डायरेक्टर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, द पैटर्न बॉडी ऑफ दिस कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग मिस्टर अर्श नसीर। उनके बराबर में हमारी मैनेजमेंट कमेटी के रुकन मिस्टर वकार हुसैन, और उनके साथ प्राउड ऑनर ऑफ लियारी लेजेंड्स शिराज उमर। बहुत सारी तालियां, आज शिराज की टीम ज़बरदस्त फतह हासिल करने में कामयाब हुई। और उनके साथ मिस्टर शायान अहमद थानवी, डायरेक्टर फिनिक्स टेक्नोलॉजी। और उनके साथ आज मैच लूज कर गए लेकिन उनकी टीम ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, साइमा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की टीम नॉर्थ नवाब, जिनके ऑनर महद जीशान, मिस्टर महद जीशान, थैंक यू वेरी मच एंड हार्ड लक। आज के मैच की अगर मैं बात कर लेता हूं तो कई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन उससे पहले मैं आज की लूजिंग टीम के कैप्टन नॉर्थ नवाब के शफी आगा को मदऊ करूंगा। शफी आप आएंगे और हमसे बात करेंगे। शफी आगा। शफी, 3 मैच तो आपकी टीम जीती हुई है। आज लियारी लेजेंड्स वैसे ऐसा लग रहा है बहुत रिदम में आ रहे हैं। जी बिल्कुल, माशाल्लाह से वो बहुत ज़बरदस्त खेले। तो हम पहले इनिंग में थोड़ा बैटिंग में हमने कमबैक नहीं किया था, तो इस वजह से हमें लीड हो गई थी। उसके बाद दूसरी इनिंग में भी वो लोग बहुत अच्छा खेले, 137 का टारगेट दिया तो वो हम नहीं चेस कर सके। और ख़ासकर जो पहली इनिंग के आखिरी 2 ओवर थे कि जिसमें सलाम ने और शाहजहां ने बॉलिंग करके जो सिर्फ 5 रन दिए थे, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दैट मैच। जी बिल्कुल, वही टर्निंग पॉइंट था। वो जो 13 बॉलों में 5 रन बने थे तो वो हमें लीड इसी वजह से हुई है। हमारे जो बाद के लड़के थे उनसे हुआ नहीं। वो लियारी लीजेंड्स वाले बहुत अच्छा खेले तो वो लोग ये मैच जीते। मैं मुबारकबाद देता हूँ उनको। चले शफी आगा, विश यू अ वेरी गुड लक। अभी बहुत बाकी है यूबीएल अमीन कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग। और अब आज की विनिंग टीम के कैप्टन अशरफ पठान। कम ऑन अशरफ पठान। बहुत मुबारक आपको। और वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान टीम बने हुए एकदम नीचे जाने के बाद ऊपर आते चले जा रहे हैं अशरफ पठान। बिल्कुल, शुरू में जो 2 मैच हमने लूज़ किए हैं उसमें हमें साफ दिख रहा था कि हम जीत सकते थे, लेकिन हमसे गलतियां हुई। उसके बाद थोड़ा सा कम्बिनेशन बना टीम का, और जब पहली हमें विन मिली तो उसके बाद से बड़ा अच्छा माहौल बना टीम को, और ये तीसरा मैच है कि हम जीत रहे हैं। अशरफ, क्या आप ख़ास चीज़ समझते हैं जो आपकी टीम ने 2 मैच हारने के बाद जिस तरीके से कमबैक किया है, क्या एक यूनिट बन गई है, ग्राउंड में जैल हुई हुई है, फील्डिंग स्टैंडर्ड आपका कैच छूटते हैं तो पकड़ भी रहे हैं, जो अच्छी चीज़ है?
हाँ, शुरू में इस तरह था कि हर जगह से एक एक लड़का जैसे ड्राफ्ट में आपको मिलता है, तो एक साथ जब सारे खेलते हैं तो उनको अपने मतलब पता नहीं होता एक दूसरे का, तो टाइम के साथ एक दूसरे को समझने का टाइम मिलता है। और वही हुआ है कि अभी कॉम्बिनेशन बना है हमारा, जेल हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो उसी का रिजल्ट आ रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपका एक या दो हीरो नहीं है, बल्कि हर मैच में एक नया हीरो सामने आता है, कभी राना मोहसिन, कभी आप, कभी कोई और। तो इसका मकसद है कि अब 2 या 4 खिलाड़ियों पे टीम डिपेंड नहीं कर रही है, सब जिम्मेदारी ले रहे हैं। बिल्कुल, हमने एक नंबर सेट किया हुआ है, हर बैट्समैन को पता है कि कहाँ मैंने बैटिंग करनी है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको खुद पता है कि इस जगह मैंने करनी है, और उसी का हमें फ़ायदा हो रहा है। हम बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं, एक बैटिंग रखी है, सबका माइंड बना हुआ है कि यार इस जगह मैंने करना है, और उसी प्लानिंग से हम लेके चल रहे हैं। और बॉलर भी एक दूसरे को मतलब बैकअप कर रहे हैं कि अगर एक को रन लग रहे हैं तो दूसरा कवर कर रहा है, उसका हमें फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच अशरफ पठान, बहुत ज़बरदस्त। बहुत सारी तालियां कैप्टन ऑफ लियारी लेजेंड अशरफ पठान के लिए कि जिनकी टीम आज ज़बरदस्त फतह हासिल करने के बाद अब कंटेंशन में बरकरार है। अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात कर लेता हूं तो एक मरतबा फिर ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस इस मैच में दिखाई दी। शाहजहां ने 4 रन देकर 2 विकेटें लिए और वो टर्निंग पॉइंट था, जैसे मैंने पहले बात की कि इस मैच का, जहां शाहजहां उस्ताद शाहजहां ने आके बॉलिंग की थी। दाऊद ज़बरदस्त 33 ऑन 11 बॉल विद 3 सिक्सेस एंड 3 फोर्स। शाहजहां ने फिर सेकेंड इनिंग में भी 2 आउट किए और जैन पठान ने की भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही नॉर्थ नवाब के। लेकिन वो खिलाड़ी के जो आज ज़बरदस्त खेला, मैंने जैसे कहा कि लियारी लेजेंड्स का रोज़ एक नया हीरो सामने आ रहा है। फर्स्ट इनिंग 66 ऑन 18 बॉल्स विद 8 सिक्सेस एंड 2 फोर्स, एंड सेकेंड इनिंग में भी 16 ऑन 6 बॉल्स with 2 fours, 1 6, overall 82 runs on 24 balls. Nizar Lefty, man of the match. आइए निज़ार। निज़ार ने मुझे इतनी दफ़ा रिक्वेस्ट की है मुझसे बात मत करना, मैंने कहा निज़ार बात तो होगी। निज़ार इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, आपकी टीम मैच में आ रही है, टूर्नामेंट में आ रही है। सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है, तो हम इंशाल्लाह टूर्नामेंट में इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगे और अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस करेंगे, बॉलिंग सारी सब कुछ। निज़ार, आज जो ख़ास परफॉर्मेंस रही थी क्रूशल मैच में, क्योंकि इस इवेंट में अपनी टीम को रखने के लिए परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी थी, तो इस पर आप बहुत खुश होंगे। जी जी, हमारा ये मैच था, अगर हम हारते थे ना तो हम इवेंट से आउट हो जाते थे, तो ज़रूरी थी परफॉर्मेंस। और इस परफॉर्मेंस से आपको कितना एतमाद आया? अब आगे बड़े क्रूशल मैचेस आ रहे हैं। इंशाल्लाह आगे सारों मैचों में करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, विश यू अ वेरी गुड लक। बहुत सारी तालियां निज़ार लेफ्टी के लिए आप आएंगे और यहाँ ग्रेट जावेद मियादाद साहब आपको ट्रॉफी देंगे, जो अक्सर जावेद मियादाद साहब दुनिया के हर ग्राउंड में जाके लिया करते थे, मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी। जनाब सादिक मोहम्मद साहब और वकार हुसैन साहब आप आगे आएंगे और विनिंग चेक देंगे हमारी मैनेजमेंट कमेटी के अराकीन। निज़ार लेफ्टी आप आइएगा। वेरी गुड। और एक और इनाम है, थैंक यू वेरी मच सादिक भाई। निज़ार आप रुकेंगे यहाँ पर, एक नया इनाम भी है, बूस्ट अप योर लाइफ स्टाइल। और अर्श नसीर साहब डायरेक्टर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस आप आगे आएंगे। शायान आप भी आइएगा और ये इनाम देंगे जी। ये भी हमारे नए स्पॉन्सर हैं, बूस्ट अप योर लाइफ स्टाइल, और ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। वेल प्लेड, बहुत ही ज़बरदस्त निज़ार लेफ्टी। और कैच ऑफ द मैच, और ये गिफ्ट हैम्पर ओसाका लाइट्स की जानिब से होता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मारिया मियादाद से कि आप आगे आएंगी और ये अवार्ड देंगी। और ये अवार्ड जा रहा है किसी और को नहीं, चेयरमैन बदर एक्सपो KTPL मिस्टर ज़ुहैर नसीर। जबरदस्त कैच, वेल प्लेड। ये जावेद भाई फ्यूचर स्टार का हौसला बढ़ाते हुए और इसके साथ जो हमारा
आखिरी इनाम होता है और वो इनाम तो हो ही नहीं सकता, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिराज प्लीज आप आगे आइएगा, महद आप आगे आइएगा, दोनों टीम ऑनर्स। और उससे पहले कि मैं उन बच्चों को बुलाऊं, डॉक्टर कदीर डॉन KTPL, वेल डन। और ये इनाम जा रहा है तलहा और हारून आजाद, आ जाएं जी दोनों जल्दी से आइए और ये इनाम वसूल करेंगे डॉक्टर कदीर डॉन KTPL। हाथ लगाएं डॉक्टर साहब, हाथ लगाएं। यस ये थैंक यू वेरी मच। रिवर्स रिवर्स देख के भाई, जरा गाड़ी कल्टी हो जाएगी उनकी। डॉक्टर साहब थैंक यू, डॉन थैंक यू, एंड थैंक यू वेरी मच ग्रेट जावेद मियादाद साहब, मारिया मियादाद थैंक यू वेरी मच, अर्श नशीर साहब आपका शुक्रिया, सादिक मोहम्मद साहब, वकार हुसैन साहब, शायान, उसके साथ साथ शिराज एंड महद, थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। तो फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इतना ही, और आज फिर आपसे शाम को 6 बजे डबल हेडर के साथ मुलाकात हो रही है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, आज शाम को 6 बजे फिर मिल रहे हैं। टिल देन अल्लाह निगहबान।